के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल वासे। एक द्वार घेरे रामा, एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल वासे। तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जाहु जाहु भैया रे, जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। Your sun's rays are runways for the Afrikaans poetry on my tongue, rhythm and drum play. The chants and the dance ways as I sway. I will thank you someday. सीता के विमल जसु, राम जसु, कृष्ण जसु। सीता के विमल जसु, सीता के विमल जसु, राम जसु, कृष्ण जसु। मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। मोरे बाप दादा की कहानी रे बटोहिया। Come all the way in the humblest of ways. When you come as a slave to the land of the brave, come with your wondrous ways. And then when we lay eyes on your ways and the ones that you pave, may I say indeed we give you the thanks and the praise. पावन सुगंध मंद अमरा गगना वासे पावना सुगंध मंद। पावन सुगंध मंद अमर गगन वासे। कामिनी विरह राग गावे रे बटोहिया। कामिनी विरह राग गावे रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। हो रे बटोहिया, हो रे बटोहिया।
भारत के देशवासी भारत के देशवासी सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल वासे एक द्वार घेरे रामा एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल वासे तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ जाहु जाहु भैया रे जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोरे बटोहिया Your sun's rays are runways for the Afrikaans poetry on my tongue, rhythm and drum play. The chants and the dance ways as I sway. I will thank you someday. सीता के विमल जसु राम जसु कृष्ण जसु सीता के विमल जसु सीता के विमल जसु राम जसु कृष्ण जसु मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया मोरे बाप दादा की कहानी रे बटोहिया Come all the way in the humblest of ways. When you come as a slave to the land of the brave, come with your wondrous ways. And then when we lay eyes on your ways and the ones that you pay I say India, indeed we give you the thanks and the praise. पावन सुगंध मंद अमरा गगनवासे पावना सुगंध मंद पावन सुगंध मंद अमर गगन वासे कामिनी विराह राग गावे रे बटोहिया कामिनी विराला गावे रे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया हो रे बटोहिया हो रे बटोहिया हो रे
देशवासी सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवाल वासे एक द्वार घेरे रामा एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवासे तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ जाहु जाहु भैया रे जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया सुंदर सुभूमि भैया भारत only want to promote harmony and secure long-term welfare of not only India but the entire humanity is to Cannot hear a thing. We've lost. Amit, are you there? We've lost communication. We can't hear you. Yeah, nothing is heard. Can you hear us? Yeah, no. Mr. Nambiar, we can hear you now. Yeah, Can you take over? Yeah, I think the panelists, I think the office there, we can't them and they probably can't hear us. Can you hear us? These are
Vijay Nambiar till they Yes, come. yes, you can hear. Sorry. Yeah. I can hear you, Swamiji. Yeah, Vijay Nambiar, I'm asking till they connect back. You start, you continue the meeting. Have I? How can I do that? No, you're unmuted. I don't know how to. Well, I'm supposed to be the next speaker, but I don't know. Others can hear you? Yeah. Only outside. I don't know whether they can hear us in the main ARSP hall. I think they cannot hear, but other people can hear you. That's what Oh, I think. I mean, okay. we can hear you very clearly. Yes. Yes, Yeah, we are able to hear you, We sir. can hear everyone else except the main team. that's beautiful. Yeah. We can hear you. Okay. Oh, okay. We are not. I don't think that the office can't hear us. We can hear you, sir, Ambassador now I think- Nambiar, sir. You are very Can you much hear? audible, sir. Can you hear? Shall I didn't hear. Is it my turn to speak? Yes, sir. Please, Oh, sir. okay. Then let me straight away start. Ladies and gentlemen, I think it is a great honor for me to participate today in this session of the Global Deliberative Conclave on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam and the Indian Diaspora. This is an integral part of the activities undertaken by the ARSP and the Vivekananda Kendra under the rubric of the C20, of which India is the chair for this year. I extend my tributes to Baleshwarji for his multifarious contributions to this cause. As chair of the C20, Her Holiness Mata Amritanandamayi Devi, or Amma, embodies the principle and spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. Besides her work in supporting the poor and vulnerable with food, shelter, healthcare, education, and livelihoods, both inside the country and internationally, over the years, Amma has also addressed issues such as the protection of the environment, the inculcation of universal values of compassion, inclusiveness, and harmony, and championed them at international forums, including at the United Nations. Now, we all know that the spirit of one earth, one family, one future has long been an integral part of Indian society, shaped by our traditions and value systems, rooted in our religious and spiritual practices. It is the bridge that connects the individual consciousness with the consciousness of the larger universe. While it typifies the values we imbibe from our society, it is an expression of our common humanity, even when it is directed at bringing change within society. This year, under the C20 aegis, 16 working groups have considered a range of issues of priority concern to international civil society and come up with policy recommendations to be shared with other nations. They have also looked at udaharans, or exemplary success stories or best practices for replication across the world. As a civilization, India's record of external engagement has been generally peaceful. While we have been the object of external predatory actions, we have rarely ourselves been engaged in wars outside the subcontinent, except under the colonial flag. This is mainly because our collective greed or grievance was never so great as to provide an excuse for such egregious violence. As our External Affairs Minister has recently said, we in India are proud of our traditions and confident of our future. But we are also deeply committed to internationalism. Our larger international commitments are visible in our activities at the United Nations. We believe that multilateralism matters, really matters, and it is under stress today as much from nationalism as from mercantilism. The challenges are global, but we still respond largely nationally. The centrality of the United Nations to international relations must be recognized, preserved, and protected. Adherence to international law is also critical. If regimes and institutions are to be credible, they must be contemporary.
Equally important, new issues will arise, but will require new rules and practices. During the COVID pandemic, the world helped businesses and people in the rich countries, but left the most vulnerable to fend for themselves. Only 0.13% of the $12 trillion released as COVID relief globally was allocated to low-income countries. The emergency IMF special drawing rights gave rupees 2,000 per European child and only rupees 60 per African child. While this kind of discrimination was appalling, the good news is that there are also some powerful solutions that the world is thinking and acting upon. The examples of Bolsa Familia in Brazil, midday meals in India, and cash transfers in Ghana and Uganda show that social protection initiatives can support and strengthen families. At the Voice of the Global South Summit early this year, Prime Minister Modi had declared, "We, the Global South, have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity live in our countries. India has shared its development experience with the Global South. Our development partnership cover all geographies and diverse sectors. We supplied medicines and vaccines to over 100 countries during the pandemic. India has always stood for the greater role of developing countries in determining our common future. India's development in vaccine, in digital public goods, financial inclusion, digital governance and last mile connectivity, even satellite technology, are examples that it is willing to share with the world. The Indian presidency of the G20 has brought the digital public infrastructure, DPI agenda, into the G20 discussions. Members acknowledge the transformative role of DPI in rapidly advancing financial inclusion. At this week's meeting of the finance ministers and central bank governors, India's pioneering efforts in leveraging DPI to accelerate financial inclusion and help were lauded. And while noting that harnessing DPIs can help countries leapfrog their development trajectories, the members unanimously endorsed the policy recommendations for advancing financial inclusion through DPI developed under India's presidency. These policy recommendations will be instrumental in guiding the G20 and non-G20 countries to leverage DPI for their development processes. India has been appointed as one of the co-chairs of the GPFI. In its capacity, India will lead the implementation of the new FIAP for the next 3 years, starting from 2024. Obviously, the major role in terms of projecting India's overall image will come from the Indian diaspora. Today, India's diaspora, with its 18 million number spread across 136 countries, is considered the largest in the world, bringing highest amounts of remittances, almost 87 billion in 2021 in the world. Indians contribute 13% of global remittances, and the remittance sent by Indian back to India amounted to approximately 3.2% of India's GDP. Similarly, their contribution to the countries of their residence is also noteworthy. No other Prime Minister of India has recognized the role of the Indian diaspora as a strategic asset for the all-round development of the country, as has the present Prime Minister. For Prime Minister Modi, diaspora is a strategic asset, and India's intellectual powers beyond borders is called a brain gain, not a brain drain. During his visits across the globe, he has actively met, motivated, and canvassed the Indian community to reconnect with their Indian roots and play a critical role in the development of the country. This is seen in his interactions across the world, whether it's in New York, Houston, Sydney, or more recently in France. And these are active examples of his strong belief of the role the diaspora can play in India's historical civilizational mission as an exemplary power on the world stage. On their part, the Indian diaspora has come a long way to play a significant role in keeping India at the center of global affairs. As a recent analysis emphasized, at a time when global supply chains are showing signs of stress and could impact our independence and strategic autonomy, our diaspora is well poised to contribute towards diversifying global supply chains.
the directions of self-reliance is towards creating alternate supply chains. Second, the outflow of Indian diaspora has positively transformed the perception of the world towards India. The dominance of Indians in, say, the Silicon Valley has strengthened the image of India as a technology powerhouse and a source of quality human resources. Furthermore, our diaspora can contribute to the Indian development story by investing in greenfield and brownfield projects under the Make India rubric. Given the growing role of the Indian diaspora, the government itself has taken many concrete steps to strengthen their role and significantly improve the ease in doing business and give them greater opportunities for outreach strategies in various areas. Let me end by underlining that today the G20 and partner countries must develop a common aspiration to build an economic as well as an environment-centric economic infrastructure, as well as a resilient financial system and an education system that builds greater social responsibility, especially towards the most vulnerable sections of the international community. What we need is to develop a compassionate value system and a practical lifestyle that is in tune with the environment. These are, I feel, the building blocks of a truly sustainable Vasudhaiva Kutumbakam. More than ever today, it is our youth that must rise to this challenge. To them, I point the C20 tagline that says, "You are the light." Thank you. Thank you very much, Excellency Ambassador Nambiar, sir, for your detailed deliberation. Thank you. Now I would request Honorable Shri V. Muradharanji, who is Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Ministry of External Affairs, for his kind and gracious remarks. Thank you. Amit, same issue, we can't hear. Not able to listen. Amit, you can probably ask the next speaker to continue. When you solve this, we can bring back the recorded version. President of the Antarrashtriya Sahyog Parishad, Shri Shyam Parande, Secretary General of the Antarrashtriya Sahyog Parishad, distinguished speakers and guests, ladies and gentlemen, namaskaram to all of you. It gives me immense pleasure to join you today for this landmark 24-hour global online program on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. At the outset, let me begin by appreciating the Antarrashtriya Sahyog Parishad, the Vivekananda Kendra Institute of Culture and Chinmaya Mission, for the timely initiative as part of India's ongoing G20 presidency. India's leadership of the G20 is a historic opportunity for us to showcase to the world Indian philosophy, ancient wisdom, and civilizational ethos that teach us to consider the whole world as one family. Fittingly, we have rooted our presidency in the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. C20 is one of the key G20 engagement groups that provides a platform for civil society organizations
around the world to voice the people's aspirations to the world leaders in G20. I got the opportunity to attend the C20 Education and Digital Transformation Summit in Thiruvananthapuram and interact with various civil society organizations that are leading the way in promotion of accessible education models for all and mindful skill development based on India's digital revolution. Honorable Prime Minister envisions our G20 presidency to be executed in a Jan Bhagidari style. There is mass movement where every Indian woman or man, young or old, student or skilled professional, coming from different walks of life, can truly participate and contribute. Indeed, it is through the active participation and on-ground activities of the C20 that we can generate such a momentum. Friends, India, with the largest, the most vibrant, and the most dynamic diaspora, seeks to amplify the voices of the millions who have settled in different parts of the world but continue to link themselves with Mother India. The Indian diaspora has acted as a force multiplier for India's growing soft power. More than 200 Indian origin people occupy leadership positions in as many as 15 countries. This powerful group demonstrates the rise of the Indian diaspora as leaders in the global political and government space. Indian origin CEOs are currently leading some of the world's most successful companies in a variety of sectors. From technology to healthcare, these leaders have achieved remarkable success and are now considered among the most influential CEOs in the world. They are India's cultural ambassadors whose success has generated a lot of goodwill for the nation. Their achievements in the countries of their residence has garnered great respect and displayed the capabilities and inherent values of India and its people. While maintaining their close physical and emotional links with the motherland, our diaspora has facilitated the flow of technology and best practices in a variety of ways and helped improve global understanding of India and her aspirations. I take this opportunity to assure you that the government of India is deeply committed towards nurturing its relations with the Indian diaspora. We are engaging the diaspora across the world through initiatives like the Pravasi Bharatiya Divas No India program, Pravasi Tirtha Darshan Yojana, and scholarship program for diaspora children provide an opportunity for the youth and elderly alike to know, understand, interact with, and gather insights into Indian culture and society. Our commitment is reflected by Honorable Prime Minister's regular interactions with the Indian diaspora whenever he travels abroad. The enthusiastic welcome and overwhelming warmth and love showered upon him by the diaspora during his recent state visit to the United States of America. Last week's visit to France is a testament to what PM Modi ji says that wherever Indians go, we make a mini India. During my visits abroad, I also make it a point to interact with the Indian community and witness firsthand their sense of pride and love for the country. Friends, Fiji in the east to California in the west, I invite the various diaspora organizations and individuals to spread India's message of Vasudhaiva Kutumbakam among the people of nations where they have settled down. In conclusion, I would like to express my ardent wish that the C20 emerges as a force that unites the people's hearts and makes India's G20 presidency truly a people's G20. I wish you all the very best for today's program and for next week's Civil 20 Summit 2023 in Jaipur. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister, for your deliberation, sir. I would now like to request and invite His Excellency Dr. Mutrapal Chaudhary ji, who is former Prime Minister of Fiji and the most distinguished leader of
Fiji Labour Party. Over to you, Excellency Dr. Mahendra Pal Chaudhary ji. Thank you. Thank you, the Honorable Shri V. Muralidharan, Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Ambassador Virendra Gupta, President IRSP, Ambassador Vijay Nambiar, His Holiness Swami Mitranandji, Mr. Santesh Kumar Gangawar, Sri Shyam Parande, Secretary General IRSP, distinguished panelists, ladies and gentlemen. I bring you greetings from Fiji and wish you well. First, let me thank IRSP Bharat and the Vivekananda Kendra, Chinmaya Mission CSIR, for organizing the global deliberative conclave on the Sun Never Sets on the Indian Diaspora under the universal theme of Vasudhaiva Kutumbakam. I also congratulate the Government of India on its presidency of the G20. The universal message of Vasudhaiva Kutumbakam that comes to us from the Upanishads may be thousands of years old, but it has significant relevance for us today in every sense of the word. One marvels at the depth and profound wisdom of a philosophy that thousands of years ago recognized the interdependence of everything and everyone in the world. The world is one family. Literally, it means all living beings on earth are a family. This concept has been hailed as the loftiest Vedantic thought, and it is a universal message that India must sell to the world at large. Today's world is torn by civil strife, wars, and conflicts between nations, and is struggling to cope with devastating and worsening natural disasters attributed to the phenomenon of climate change. The wars we have brought upon ourselves in our quest for domination over others, and our disregard for the sustainability of our environment in the name of economic development has put the world on notice that we may be treading a path of self-destruction. Rising sea levels, global warming, record-breaking temperatures, to name a few. Belatedly, and much to our cost, we are coming to terms with the fundamental truth that the world is one big family, and that in all our actions, we must live in harmony with nature and ensure the preservation of our planet for our future generations. Surely this is rooted in the thought so aptly expressed through Vasudhaiva Kutumbakam, that damage or abuse of one aspect of the environment has a profound effect on all its ecosystems. This has never before come home to us as strongly as it does in today's world. If we all are a family, then our relations with the people we share this world with will have to be founded on love, compassion, and mutual respect for each other. In short, peaceful coexistence between the peoples of the world. For most of us living in multicultural, multi-ethnic societies, such a concept underscores what India has embodied over all these years, that is, unity in diversity. This means living in harmony with each other, showing understanding and respect for the various cultures and traditions around us. It may not mean assimilation, but it does signify peaceful coexistence. Looking at our case in Fiji, can you hear me? Yes, you're audible. Yes. You're audible, sir. All right. Looking at our case in Fiji, Indians were brought here 144 years ago as indentured laborers to work largely in sugarcane plantations.
Most of us are now fifth generation Fiji-born Indians. Our forefathers brought with them their religious practices and cultural traditions, quite distinct from those of the indigenous community here and our colonial masters. Coexistence has not always been easy. We have had to struggle for equal rights and acceptance as citizens in our adopted land. There have been strifes caused by undercurrents of suspicion, distrust, religious differences, and political aspirations. We have experienced 2 army-backed coup d'etats executed against what was wrongly perceived as Indian-dominated governments. But slowly, we have realized the futility of such ill-conceived conflicts between our major communities and have developed a better understanding and regard for each other. These coups led to a major exodus of our people from Fiji, as thousands left in search of a secure and promising future for themselves and their children. So, we in Fiji have a substantial diaspora of our own in countries like Australia, New Zealand, the United Kingdom, United States, and Canada. But I'm pleased to say that our people, no matter which part of the world they have settled in, have well preserved their cultural traditions and religious practices. One aspect that may need a more concerted effort is that of language. Our mother languages, Hindi in particular, have been under threat in English-speaking countries. This is an area where a lot more focus is needed. After all, preserving one's language is crucial to the protection of one's cultural identity. And here, one must recognize the impact of the Indian film industry in fostering Indian culture and traditions within the diaspora. It has an important role to play and must ever be conscious of the responsibility it carries in this regard. The Indian diaspora, settled in over 100 countries and numbering some 35 million, is a significant force spreading over our culture, traditions, and philosophy across the globe. It must remain connected to India to draw inspiration and strength as India progresses towards becoming a superpower. The government of India could, through specially tailored programs, assist in strengthening its relations with the diaspora for the mutual benefit of both. I would like to conclude by paying tribute to the founder and longtime Secretary General of IRSP, the late Shri Baleshwar Agrawal, for a lifetime's work with the diaspora. He showed genuine concern for the problems of Indians settled abroad, particularly in times of difficulty, and did all he could to persuade the government of India to assist. The current officials of IRSP also deserve credit for carrying on in his tradition. With these words, I wish the conclave the success it deserves and thank all the participants for their contribution. Jai Hind. Much His Excellency for your detailed remarks and guiding us through the journey of the diet. Thank you very much, Excellency. Now I have the privilege to invite His Holiness Swami, the spiritual teacher of the India Chinmaya Yuva Kendra, and of course contributions in the T20 and 20 is over to you, His Holiness Swami Maharaj. Please. Namaskar. My salutations to everyone. It was a joy listening to Sri Mahendra Chaudhary ji. Thank you so much, sir. Your talk was so inspiring. The Indian diaspora across has made India always proud. And one of the most non-controversial settlements are the Indians everywhere they go. When I travel to a few countries like Philippines or UK, I have particularly gone there and met the Indian ambassador. And my questions would be slightly weird.
General questions would be like, how many Indians come here every year to study? So they say this much numbers come and all that. And more or less, they say this is the largest Indian community coming, is the largest across. If you see, they are the most maximum. How many of them graduate? He said Indians graduate the maximum. Postgraduate, of course, Indians are the maximum. PhD, and as you go up, it's the Indian numbers are more. Then I used to ask one question, and that is like, how many Indians are in jail, in prison? And the ambassadors used to say very minimum. This is Bharat. This is the culture. The culture from which you go, the Indian diaspora has not created a problem to any country. They go settle there and help that nation to progress. The feeling that we are all one family, Vasudhaiva Kutumbakam, is so deep in our DNA. Wherever we go, we only help the other nation to progress, and we do not involve in things which would make the other country uncomfortable. We merge with them, we contribute to their progress, and we retain our culture. This non-controversial behavior, this well-behaved and contributing the progress of that nation comes from the deep Indian ethos. We are one family, Vasudhaiva Kutumbakam. As Mahendra Chaudhary said, this line is from the Maha Upanishad, which goes back to a few thousand years ago. It's a very ancient Indian thought to see the whole world as nothing but one expression of divine. One expression of divine. The created and the creator both are seen divine. When this thought is there, and it's not a statement of moral praise, it's a statement of fact. The cause and the effect are one and the same. When we have this idea and when we look at the world, our approach to the world itself would be to worship, to revere, and to look at each other as a family. In the Gita, Krishna says the same idea of Vasudhaiva Kutumbakam interpreted differently. In the Gita, Krishna says in chapter 12, if you do 3 steps, you will evolve to divine. First one, he says, Sanniyam Indriya Gramam. Live life in self-control. We should not go grab what belongs to others. We should not exploit. We should keep our senses under control and take what is actually needed. Going and grabbing things, looting things, exploiting things, extending unnecessarily, not right. That operated from greed. Sanniyam Indriya Gramam. Live life in sense control. Do not exploit anybody. Don't be greedy. Live with what comes to you and take what is your right. Do not take the lion's share. Take what you contribute. Sarvatra Samabuddhaya. Second point in the same words, he says, Sarvatra, wherever you go, Samabuddhaya, have an equal vision. Let us look at the world impartially. And let us look at people as humans, not through color and race, not through, various discriminations. Sarvatra Samabuddhaya, man, woman, animal, plant, Samabuddhaya, equal vision. Again, Vasudhaiva Kutumbakam. And then he says the most beautiful line, Te prapnuvanti mameva, they reach the divine state of mind, Sarva Bhuta Hite Rataha. Now, this is the most beautiful line where Krishna says, Sarva Bhuta Hite Rataha. One who rejoices in the well-being of others. Sarva Bhuta Hite Rataha. When we go and take joy in the joy of others, in the well-being of others, we are also happy. This is that family feeling. Sanniyam Indriya Gramam, Sarvatra Samabuddhayaha, Te Prapnuvanti Mameva, Sarva Bhuta Hite Rataha, chapter 12 of the Gita. Be in self-control, senses, manage them well. Don't become greedy. Just take what belongs to you. Wherever we go, Sarvatra Samabuddhaya, at all places, same equipoised vision. No discrimination. We are one family.
and take joy in the well-being of others. Sarva bhuta hite rataha. If we do these three, the promise the Gita makes is te prapnuvanti mameva. Such individual will rise up to the divine state. Now, this has been our philosophy, this has been our way of life, and this is what we have done. And this spirit, I'm so happy the Indian diaspora has taken it across, and it's such a lovely line to always see. Now we have spread across so much, the sun never sets in us. And we are seekers of knowledge, Bharat, light, seekers of light. Let that light spread across, and the world needs it more than anyone, more than any other time. The world needs it now. Let the entire Indian diaspora take this message of Bharat, seekers of knowledge, and make the world a better place. And that philosophy, we are the custodians. We are the first to claim the whole universe is one family. We are the custodians, and it is our duty to spread across to other family members. I congratulate ARSP for this brilliant initiative of 24 hours round the clock. Vasudeva Kutumbakam. Thank you very much. True. Very much, His Holiness Swamiji Maharaj. We as 20 are honored to have you as our the spiritual dimension to today's deliberation. Thank you very much. So moving ahead, we have presentations of Shri Nawarji, who is a member of Parliament. I would call Shri Santosh Kumar Gangarji for his address and remarks, please. Sir, you are on mute. Honorable Sir, you are on mute. Please unmute. Thank you. Honorable Gangwar Sahab, please, आप kindly address करें sir. थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। आज की इस कॉन्फ्रेंस के प्रारूप को देखकर मुझको बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम सब 24 घंटे दुनिया भर के प्रवासियों के कार्यों पर चर्चा कर पाएंगे। हमें प्रसन्नता है कि ARSP ने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज दुनिया जिस सकारात्मक सोच के साथ भारत को देख रहा है, उसमें प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया में शक्ति का मतलब संसाधन होना, लेकिन हम प्रवासी भारतीय दुनिया को सकारात्मक संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और आज पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों की कार्यों की काफी सराहना की जा रही है। जहां नीतिगत आधार पर भारत की सरकार की ओर अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, वहीं प्रवासी भारतीय जहां भी हैं, वहां के देशों में अपने कार्यों के माध्यम से विकास की राह आसान कर रहे हैं। वे सामाजिक कार्य हो, व्यापारिक कार्य हो, सूचना तकनीक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका में कार्य कर रहे हैं। हमारी चिंता इतनी मात्र भर है कि भारत का विकास हो और हम प्रवासी भारतीयों ने दुनिया के विकास के विभिन्न मॉडलों में कार्य किया है ताकि दुनिया का भर का विकास हो सके। ये देखकर मुझको प्रसन्नता हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम में दुनिया के 150 से अधिक प्रवासी भारतीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आवश्यकता यह है कि हम इस प्रवासी भारतीय जीवन मूल्यों के साथ संगठित होकर कार्य करते रहें। विभिन्न सामाजिक संगठनों को आज यहाँ देखकर मैं महसूस कर रहा हूँ
कि हम सब यहाँ भी जहाँ भी हैं वहाँ भारतीय सांस्कृतिक आधार जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे कला के माध्यम से हो या भोजन के माध्यम से हो, लेकिन हम भारतीय मूल्यों को दुनिया के अंदर आपने इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है, हम सब प्रवासी भारतीयों के विचारों को जानने और समझ पाएंगे। 24 घंटे चलने वाला एक कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है प्रवासी समाज के कार्यों को समझने में सहायक होगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि 24 घंटे में उन सारे विषयों पर जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, हम केवल भारतीय समाज की नहीं पूरे विश्व की चिंता करेंगे और उसके हिसाब से बात करेंगे। और हमें अच्छे तरीके से ध्यान है कि हमारा भारतीय दुनिया के जिस हिस्से में भी है वो अपनी पहचान भी बना रहा है और वहां पर उस देश में सहयोग भी कर रहा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए अपने आप को बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रवासी भारतीय दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं अपने काम के माध्यम से दुनिया में पहचान बनाएंगे और भारत देश की पहचान भी दुनिया में बनाने का काम करेंगे। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए कि 24 घंटे में वे महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे जिसका भविष्य में हमको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय गंगवार साहब। मेरा विश्वास है कि आपकी अपेक्षाओं पर ये 24 घंटे का कार्यक्रम सफल होगा, खरा उतरेगा। आपके आने से हम भी गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। Now I have the privilege to invite Dr. Asif Saeed Saab, who is Secretary CPV and OIA with Ministry of External Affairs, for his deliberations and remarks. Over to you, Ambassador Saeed sir. Good morning, namaste. At the outset, it's my great pleasure to join the live round-the-clock Global Deliberative Conclave, which is being organized by the Antarashtriya Sahyog Parishad in association with the Vivekananda Kendra of the Chinmaya Mission, and under the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, which also gels with our wider theme of the G20, One Earth, One Family, and One Future. Now, and also as a diplomat who has served in many countries, and with some countries with huge diaspora like US and Saudi Arabia, and also a few countries smaller with a smaller diaspora like Seychelles, where the Indians are the first settlers. I would be very happy to share with you that we have been engaging very closely as the Ministry of External Affairs with the diaspora, as our minister also mentioned and many other speakers also mentioned, because for us, we regard diaspora as an important foreign policy connector, bridge, and a viable resource for our country. More so as the country has moved into the Amrit Kal, and there are various plans which we have set for ourselves, or the targets which we have set for ourselves during this period. So to begin with, I would like to acknowledge that we have been having very, very fruitful collaboration with the Antarashtriya Sahyog Parishad, especially with Ambassador Virendra Gupta, the president, and as well as Mr. Shyam Parande, the Secretary General, and all other members. Just to share with some of you is that we have been mapping the Indian diaspora in various countries, and every year in the month of January we kind of update these figures. And last time, the last update which was done was before the Pravasi Bharati Divas, where you would recollect that the figure was around 32 million overseas diaspora, which included about 13.4 million non-resident Indians and 18.7 million of the persons of Indian origin. So this year also we have done this exercise, and with all our missions together. So I'm very happy to share with you that the numbers seem to have increased. The diaspora figures now, as we have compiled, stands at 33.5 million, which include 18.2 million or 18.5 million PIOs, persons of Indian origin, and 15.3 million of
non-resident Indians. Very interesting fact is that the PIOs are spread around 181 countries, and which also includes the largest number, which is the USA, 3.45 million, and followed by Malaysia, 2.75, and Myanmar, 2 million. But at the same time, very interesting statistics is that we have over 24 countries where the diaspora is in single digit. So that also goes on to say how well spread the diaspora is, and it actually endorses your own theme that the sun never sets on the diaspora. So in fact, in a few countries, we have mapped only 1% of Indian origin there. You know, in Tuvalu, we have, for example, among the NRIs are mapped in 206 countries, and the largest is the UAE, 3.5 million. But we also have a small, country, Tuvalu, where only 2 Indians are there. So you can really see how well connected the Indians are and how well spread they are. In many places, they are running into the 6th generation, 7th generation. You know, we just heard the honorable former Prime Minister of Fiji, where there is a demand for even 8th generation. So this is what my division is continuously getting requests. What I would like to emphasize here is that the government of India is keen to find new ways of engaging with the diaspora. One of the things which we have been discussing, and our honorable Prime Minister has also given his guidance on this, is that why don't we also connect the diaspora in terms of professions directly, in terms of let's say how many academicians, how many professors are teaching in the top universities. Could we map those those professors? We already, we are already engaging with professional groups like doctors, chartered accountants, and others. So it's very important to engage like that. He said, can we just identify top 40 universities in the world, and within those top 40 universities in the world, engage very meaningfully with the academia and as well as the students. So also, and you're aware that every 2 years we do the Pravasi Bharati Divas, but in the interim period, we would also like to engage with the Pravasi Bharati awardees. So we are in the process of updating their current data, and then perhaps you would expect that next year, or these kinds of policies will come into force, where we would be having many more engagements with the diaspora. And you are also aware, and many of you may be also reading, that we have been actively engaged in identifying newer mobility pathways and newer job destinations for our nationals in different parts of the world. And these mobility pathways are in the form of MMPAs, which is the Migration and Mobility Partnership Agreements, which are primarily with the European countries such as Denmark, France, UK, Portugal, and Australia and Germany, and many more are coming through. We are also kind of in negotiations with Benelux countries. So I think these would also provide a seamless way where people from India can look at opportunities abroad. That is also one way of looking that our diaspora in times to go would also broaden and expand in different fields. And also we believe that they would also be playing a very important role, as I said, going forward, when India would be looking, to be one of the top 3 economies in the world and the top 3 geopolitical powers in the world, as we look at it as India at 2047. And our global engagement on migration and diaspora issues is extremely strong. All of you are aware that we are part and parcel of every international grouping which discusses the diaspora, be it the Colombo process, which started in 2003, or the Abu Dhabi dialogue, which started in 2008, the Global Forum on Migration and Development. We have the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, and we have the EU Common Agenda on Migration and Mobility, and so on and so forth. And then we closely collaborate with various organizations internationally, like ILO, IOM, the ICMPD, which is the International Center for Migration Policy Development. We are very open to working more closely with the Antarashtriya Sahyog Parishad.
and to come up with various innovative programs where we could connect with diaspora and involve them in national mainstreaming. As I said, we are moving into very crucial 25 years from now, a developmental phase, a transformative phase of our country. And I again assure you of our fullest cooperation as the secretary heading the diaspora division, and wish you with this, I would like to wish you a very fruitful discussions in the next 24 hours, and I'd like to also hear very productive suggestions which may come up from diaspora, what they expect from us, from the government entities, and how going forward we can work together with NGOs like yours. So thank you very much for inviting me and providing me with this unique opportunity. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, Ambassador Dr. Syed sir, for your kind gesture and the welcoming remarks. Welcoming in the sense that yes, the more and more on the diaspora and the ministries, outlook to engage more. Are very thankful to you, sir. Now it gives me immense pleasure and privilege to invite Honorable Shri Alan Gannuji, who is Minister of Land, Transport and Light Rail, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, Republic of Mauritius. Thank you very much, Honorable Minister, sir. Over to you, Shri Alan Gannu, sir. Sir, Sorry. Honorable Minister, Shri Alan Gannu, sir. You are on mute, sir. You have to unmute yourself, sir. Honorable Minister, you have to unmute yourself, sir. He's already unmuted. And you have to turn on your camera if kindly, sir, please turn on your camera and unmute yourself, please. Honorable Minister Shri Alan Gannu, sir, you may have to unmute yourself and start your video, please. I request our members to be please. I thank our members for their patience. Maybe some technical glitches. Another 1 minute, and we hope to have Honorable Minister with us. There is some technical glitch and it may take another 2-3 minutes to resolve it. In the meantime, I request my team to please play the most sought after song Batuhiya. It was written by Babu Raghubir Narayanji in 1911. It is one of the first songs which has got 11 singers from 7 different countries. And if I may add, the song became so famous that it was considered as the national song of Girmitias. The people. Oh, yes. May I request for the song, please?
Amit, same issue. We can't hear. Your sun's rays are runway for the Afrikaans poetry on my tongue, rhythm and drum play. The charts and the dance ways as I sway. I will thank you someday. See so sweet. See again, my neighbors.
I am the only one still alive among those who participated in the Mauritius Constitutional Conference at Lancaster House in 1965, where talks on the ultimate status of Mauritius were held. Mr. President, members of the court, after achieving independence and as soon as its socio-economic conditions permitted, Mauritius has consistently voiced its opposition to the detachment of the Chagos archipelago. On 22nd May 2019, when the United Nations General Assembly adopted a resolution that the UK withdraw from the Chagos archipelago, a bent 88-year-old man stood a little straighter and smiled. The man was Anirudh Jugnauth, the tall leader and statesman of Mauritius. The Chagosians have fought for more than 4 decades for the right to return to the place of birth, but without success. The veteran barrister's arguments had been instrumental in getting the verdict. Belonging to a community of Indians brought to Mauritius by the British to work on sugarcane fields for little more than food, he understood colonial oppression. He had won against the oppressors again for his country. Born on 29th March 1930 into a struggling planter family, Anirudh spent his childhood walking barefooted to school and yet pursued a law degree from England. Soon after his return to Mauritius, he became a successful lawyer. A leader who rose from the roots, began his political career as a chairman in the village council of his native Palma. He was the longest-serving 6-term Prime Minister of Mauritius. Later, he also served 2 terms in the ceremonial role of President. Anirudh struggled to evict the British from the Chagos archipelago in 1999 was not the first time he had stood against British colonialism. In 1965, Jugnauth participated in a historic conference in London that paved the way for the adoption of a constitution in Mauritius and independence some 3 years later. During his term as Prime Minister, Jugnauth received several Indian heads of state, which strengthened the India-Mauritius relationship. Brought as indentured laborers, Indians made a spectacular economic success of their adopted land. A true patriot, Jugnauth exemplified this contribution to Mauritius. He was known as the father of the Mauritian economic miracle. In his leadership, Mauritius transformed from a sleepy agricultural country with large-scale unemployment into Africa's richest economy, with a robust tourism industry and a financial hub that stood as a gateway to Asia and Africa. He was honored with Pravasi Bharatiya Samman Award for his continued support for strengthening India's relationship with Mauritius. In 2020, Sir Anirudh Jugnauth has been named for Padma Vibhushan in the field of public affairs. A tall leader and statesman, the architect of modern Mauritius. A life to celebrate.
Thank you. ARSP is a very we convey and pay our fluent tribute to this iconic son of Indian diaspora, Sir Aniruddha Jagannath. Now I request and invite Honorable Minister Shri Alan Gannu sir, who is Minister of Land, Transport and Rail, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, Republic of Mauritius. Over to you, Honorable Excellency Shri Anil Gannu sir. Sir, you have to unmute yourself and please start your video as well. Honorable Minister, sir. You have to unmute yourself, sir, and please turn on your video. Honorable sir, please unmute yourself. अच्छा आई नहीं है, I'm sorry. Should we go to the next speaker? सभी को नमस्ते। नमस्ते। खबर आया कि पैनलिस्ट फिजी से होना चाहिए। आपको हम सुनाई दे रहे हैं? जी नहीं सर, अभी इनॉग्रेशन का सेशन खत्म होने के बाद में फिजी के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वील बी इनवाइटिंग देम। अभी इनॉग्रेशन सेशन में नहीं सर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। He's going through his speech. क्यों आया? स्टॉप करो। चाहिए था। खुद चेक करो। We are having technical issues sorting it out. ये अच्छा तरीका है। तब तक दे दो उनका, तब तक हैं? हाँ बच्चे होने लगते हैं, लोग परेशान हो। नहीं तो अभी क्या है ना कि हाँ आपको बुला ले। हाँ पुरानी स्कूल है। There is some technical glitches and I hope it would be resolved today. Now I request Shri Shyam Parande ji, Secretary General Antarashtriya Sahyog Parishad, for his deliberations and speech, please.
Namaste to all the diaspora members connected and who will be connecting in next 23 hours. I am problem in connecting with Honorable Minister of External Affairs for Mauritius, Sri Alan Ganuji. He will soon be joining. Please have spoken to before us the background that will be uh, uh, the pathway for diaspora to be more effectively spreading the message of our culture. This conference on sun never sets on Indian diaspora is being experienced by us because we are all participating in this 4 hour conclave. I thank all the, especially His Holiness Swami Mutaranji was so beautifully explaining the spiritual background, Adhyatma, underlining Vasudhaiva Kutumbakam. Sarvabhuta Hite Rataha, his message is a resounding one from the Srimad Bhagavad Gita that will enthuse every member of the diaspora to be serving wherever they are. I thank Ambassador Vijay Nambiarji, the Sherpa of C20, Civil Society 20. Of course, Honorable Minister of State for External Affairs, Sri V. Muralidharanji especially, His Excellency, ex-Prime Minister of Fiji, Dr. Mahendrapal Chaudhary ji, and our own member, Antarashtriya Sahyog Parishad, and one of the longest serving parliamentarians, Sri Santoshji Gangwar, whom we listened for participating in this conclave and the inaugural session. I also need to mention the participation of Dr. Asaf Saeed ji and thank him for being or presenting the government of India's policies and interaction with Indian diaspora and his association and support for Antarashtriya Sahyog Parishad so well. So I thank all the panelists. And of course, I also need to mention our partners in this 24 hours conclave, Chinmaya Mission, Swami Vivekananda Kendra,
Lightrill, Minister of We are inviting. Foreign Affairs, Mauritius. Now we request Honorable Foreign Minister to please address the gathering. Sir. Sir. Thank you, Chair. Your Excellency, Ambassador Virendra Gupta, President of the Antar-Rashtriya Sahayog Parishad, Sri Shyam Parande, Secretary General of the Parishad, distinguished participants, Excellencies. I am indeed thankful to the Parishad for the kind invitation extended to me to participate in this 24-hour online collective program to mark India's presidency of the G20 being held under the central theme of One Earth, One Family, One Future, or Vasudhaiva Kutumbakam, which finds its essence in the timeless Vedas. While Indian thoughts and wisdom date back to time immemorial, taking us back to the source of everything that we cherish, the popular saying, "The sun never sets on the Indian diaspora," sounds like a sweet revenge of history, as the descendants of those who suffered from the yoke of colonialism have today emerged as vibrant citizens and global leaders in the former lands of Europe, in the former lands of the empire, which boasted of its infinite vastness and power. This demographic reality illustrates the universality and dynamism of the Indian diaspora sprawling over the 5 continents and the islands of the world. Your Excellencies, in the time allotted to me, I will firstly talk on a few aspects of the Indian immigration in Mauritius. Secondly, on the establishment of diplomatic relations between Mauritius and India in 1948. And lastly, share my thoughts on India's presidency of the G20. At the very outset, I would like to underscore that Mauritius was an uninhabited island until it was discovered by Portuguese travelers in the year 1500. The Dutch were the first to settle in the island in September 1598 and gave the country its name, Mauritius. They left in 1710 and were succeeded by the French in 1715, who named the island Ile-de-France, meaning Island of France. The first Indians, mostly apprentices, sailors and semi-skilled men, reached the shores of Mauritius a few years later in the footsteps of the French aboard their ships hailing from the southern coast of India. Less than 100 years later, the British defeated the French in a sea battle and took possession of the island and renamed the country Mauritius. While the Indian presence was continuous throughout the French period, although in small numbers, things would change during the British colonization with the abolition of slavery in England in August 1834 and in Mauritius 4 years later, from the 1st of August 1838. Indeed, in anticipation of the upcoming abolition in Mauritius in 1834, the British government chose the island of Mauritius as the first site for what it called the Great Experiment Code, which was designed to use free code labor from India to replace the liberated slaves. The Great Experiment would serve as model for all British colonies between 1834 and 1920. And more than 500,000 indentured laborers arrived from India to work in the sugar industry of Mauritius in replacement of the free slaves. This overall scheme is well known, but we still have to shed light on the pervasive aspects of the Great Experiment, where the fate of the Indian immigrants was not better than those of the former slaves.
it is important to place on record the hardship that they face. And the Indians in Mauritius petitioned the Crown to preserve their human dignity. One of the most important historic facts of the period is a petition drafted by Adolphe de Plevitz, an estate owner of Dutch and German ancestry, and signed by 9,400 laborers in 71 who are determined to be free by securing their individual rights. We have some astounding figures. Between January 1861 and December 1871, around 206,000 Indian immigrants were arrested, some repeatedly, for vagrancy, illegal absences, and desertion, with most spending 1 to 3 months in prison. They were sentenced to hard labor, and others spending almost a year or more behind bars as repeat offenders and for petty crimes. During this period, tens of thousands were continuously imprisoned in the island. During the same period, the planters, employers, and estate managers filed an estimated 80,000 complaints against their indentured workers for various so-called offences such as desertion, illegal absences, insolence, refusal to work, feigning illness, and other acts of resistance. For their part, between 1861 and 1871, the indentured workers counterattacked by filing about 42,000 complaints against their employers for non-payment of wages, mistreatment, and for not fulfilling their conditions of the contract, like the provision of food, clothing, and proper shelter. As we can see, Excellencies, the history of the Indians in Mauritius, and certainly in other colonies, is one of hardship, suffering, and woe, and today forms part of the DNA of Mauritians of Indian origins. Diplomatic relations between Mauritius and India were established in 1948, soon after India's independence, while Mauritius was still a British colony. Indeed, in August 2021, the government approved the decision to commemorate the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries throughout a one-year period from September 2022 to August 2023. An interministerial committee was tasked to coordinate and monitor projects of this commemoration, and it was proposed that events would start in August 2022 and end August this year. In this context, in September, on the 13th of September last year, a forum on launching of the Comprehensive Economic and Commercial Partnership Agreement, the SECPA, between Mauritius and India was organized, and some 300 stakeholders attended the event. Also scheduled during that event was the launch of a logo commemorating the 75th anniversary of the establishment of the bilateral relations between Mauritius and India. This celebration of our 75th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between our two countries is yet another milestone for both our countries and peoples. Today, as we are commemorating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries, it could not be a more opportune time to highlight the educational and cultural significance that should be attributed to the usage and dissemination of Indian language. The cultural and linguistic have contributed to strong and cordial relations between our two countries. In the same vein, the participation of Mauritius in the 17th Pravasi Bharatiya held in January of this year is yet another testimony of brotherly ties. Mauritius had the second at the event than 500, more than 50% of the total delegates. To sum it up, Your Excellencies, no two countries of the world have the same privileged relations that exist between the Republic of India and the Republic of Mauritius.
Thirdly, India invited Mauritius, in view of the special relations between our two countries, to participate as a guest country in the G20 and the Indian G20 presidency from December 2022 to November 2023. The G20 is indeed a strategic multilateral platform connecting the world's major developed and emerging countries. As such, it holds a strategic role in shaping future global economic growth and prosperity. Together, the G20 members, as we know, represent more than 80% of the world GDP, 75% of international trade, and 60% of the world population. The G20 and India's presidency entails the participation of senior officials in around 200 meetings, as well as sectoral ministerial meetings, including finance, tourism, education, and foreign affairs. The meetings will culminate in the G20's Leaders Summit at the level of the heads of state and government, which will be held on the 9th and the 10th September this year in New Delhi. I participated in the G20 Foreign Ministers meeting, which was held from the 1st to the 2nd of March this year in New Delhi. The G20 Foreign Ministers meeting, which was well attended and saw the conclusion of a chair's summary and outcome document in spite of the difficult circumstances. The outcome document has laid the basis for more coherent actions within G20 to address the current challenges facing the world, such as the strengthening of multilateralism, food and energy security, development cooperation, counter-terrorism, and emerging threats and disaster relief. As a follow-up, I also attended the 8th edition of the Raisina Dialogue, held from the 1st to the 2nd of March of this year. I also had fruitful bilateral meetings with the Minister of External Affairs, Honorable Jay Shankar, and Honorable Gadkari, Minister of Road Transport and Highways of India. I expressed the view that multilateralism is the only way to address global challenges in a meaningful manner and make a difference to those countries that are most vulnerable, including small island developing states, the SIDS. I also elaborated and highlighted the relevance of elaborating a United Nations multi-dimensional vulnerability index for the SIDS, for the small island developing states. Mauritius fully supports the G20, India G20 presidency, which has ensured that the voice of the global south, including Africa, does not remain unheard. We are particularly pleased by the agreement of several G20 members of the African Union to become a member of G20, which we have supported. We believe that there is a need for collective action by the G20 to assist the most vulnerable countries to stay on course towards Agenda 2030. And access to financing is key to mitigate their vulnerabilities. Your Excellency, to conclude, let me assure you of the support of Mauritius in favor of India's presidency under the theme Vasudhaiva Kutumbakam. This is why we must not forget our history, our roots. In the past, under colonial rule, efforts were made to suppress all that was not European. Other cultures were looked down upon. It is with great difficulty that all the diverse family of Indian communities have struggled to keep alive their cultures and their languages. I thank you for your attention. Thank you very much, Excellency. We are enlightened by your address. We are really grateful that in spite of many problems and technical glitches, you were able to address us. We are really fortunate to listen to you and the history of Indo-Mauritius relationship, and particularly your role of your country in G20, where your country is a special invited country. And I hope the substantial and the most crucial contribution from the Indian diaspora is from Mauritius, which you represent. Thank you, Excellency. Thanks again. Thank you.
We are also thankful to Shri Mukeshi for coordinating to be able to address us. Now we take this event forward to Mauritius, where our eminent dignitaries are waiting for us. Adaniya Shri Fiji, Adaniya Shri Ganesh Chandji, who is an eminent scholar of Gilmit history and the founder, Chancellor of Fiji National University. We request Shri Ganesh Chandji, and I see that list of the eminent creative writers and scholars from Fiji, Shri Kamlesh, Shweta ji, and Bhagirath ji. So now I humbly request Shri Ganesh Chandji to please take over, and one by one you can introduce the speakers from Fiji, and again I request all the speakers to please see that we should finish our speeches in time, so that Australia, New Zealand, and other countries should not be should be continuing in this succession. I welcome Shri Ganesh Chandji. थैंक यू अनिल जी। नमस्कार सभी को, खासकर IRSP के ऑफिशियल्स को, श्री श्याम परांडे और जो लोग वहाँ पर इकट्ठित हैं। It's an honor for Fiji to start the process of the country participation in this eventful session of 24 hours. I know that we are running a bit late. We have got 8 speakers lined up to contribute to this session. Without delay, I would request Pandit Kamlesh Arya ji to start the process. Just a word of introduction. Pandit Arya is an Arya Samaji Pandit, an Arya Ratna. He is a teacher, trade unionist, parliamentarian, diplomat, educator, volunteer, and social worker. He currently is the Chancellor of the University of Fiji. May I request Kamlesh Arya ji, Pandit ji, to start the process. We have undertaken to keep all the addresses to within 5 minutes. Thank you. Kamlesh ji. धन्यवाद कमलेश भाई। जगत भारती को कमलेश आर्या का फिजी सादर नमस्ते। उम्मीद है कि मैं आप सभी को सुनाई दे रहा हूँ। हम फिजी से अपने Kamlesh ji, just a request from the organizers की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जिन डिवाइसेस पर सिर्फ पैनलिस्ट लिखा है वो कृपया अपना नेम वहां पर चेंज कर लें, जिससे कि बुलाने वालों को सुविधा हो कि किसको बुला रहे हैं। तो प्लीज इंस्टेड ऑफ पैनलिस्ट यू शुड हैव योर नेम। आई अगेन वेलकम श्री कमलेश जी टू कंटिन्यू। धन्यवाद अनिल जी, आपको देखकर बहुत हर्ष हुआ। हम पुराने साथी हैं, फिजी में रहे आप हमारे साथ। हम आज वसुदैव कुटुंबकम के मंच से जगत भारती के जितने लोग हैं उनको अपना नमस्ते समर्पित करते हैं। आपको मालूम है कि फिजी में गिरमिट काल सबसे अंत में शुरू हुआ और यहीं से फिर बंद हुआ। तो जब से गिरमिट फिजी में शुरू हुई तब से लेकर स्वतंत्रता तक हमारे कई पीढ़ी संघर्ष में लगे रहे और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हम अभी भी संघर्ष में हैं। फिर भी हमारा संघर्ष जो है वो उन्नति की तरफ की है। हमारे बाप दादे पूर्वज जो भारतवर्ष से आए थे उन्होंने संघर्ष करके फिजी को हरा भरा बनाया। अभी हम फिजी में लगभग 5वीं पीढ़ी पर हैं और हमारे 5वीं पीढ़ी के लोग बस इसी बात में लगे हुए हैं कि हम फिजी को एक सुंदर और
देश बनाएं, यहाँ पर अपना योगदान दें। और आपके इस मुद्दे पर कि हम सभी को अपना एक समान जैसा माने, देव कुटुंब का, मैंने कि हम सब एक परिवार के हैं, जितने भी प्राणी संसार में सब हमारे बंधु हैं। तो कहना ये उचित समझता हूं कि जब हम बंधु हैं तो हमारे सभी तरफ से, सभी लोगों की तरफ से एक भाईचारा होना चाहिए, जहां पर हम हर मुद्दे पर मिलकर काम करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, अनिल जी हमारे साथ थे यहाँ फिजी में, तो हम लोग हिंदी की प्रचार में बहुत योगदान दिए। अभी भी ये कार्य चल रहा है। और बंधुगण, आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि फिजी का जो भारतीय डायस्पोरा है, इसके अंदर जो आर्य समाज संस्था है, उन्होंने यहाँ पर एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी जो है वो भारतीय डायस्पोरा से संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। उन्होंने इनका निर्माण किया हुआ है। और हम वसुदेव कुटुंबकम का जो विचारधारा है, अपने यूनिवर्सिटी से भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में सभी वर्ग के बच्चे। तो हम G20 का, इसमें आज अपना भाग्य समझता हूं कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और धन्यवाद दे रहा हूं गणेश भाई को, जिन्होंने मुझे मनोनीत किया यहाँ पर कि मैं आपके साथ वार्ता कर सकूं। अभी हमने मॉरिशस से कुछ आदरणीय मंत्रियों का भाषण सुना। वसुदेव कुटुंबकम के इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लगने वाली है आने वाले हफ्ते से। तो फिजी से मैं और श्रीमती उर्मिला आर्य जी जा रहे हैं वहां पर इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए कि हम फिजी से भी आपके साथ में हैं, और वहां पर साथ मिलकर उन कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। तो उम्मीद मेरी ये है फिजी से कि जो संघर्ष हमारे सामने आए, जो भी हमारे सामने आए, हमें उस नकारात्मक विषयों से सकारात्मक विचारों को खोजना चाहिए। हमारे बाप दादे यहाँ संघर्ष किए, नकारात्मक समय से गुजरे, उनके जो बच्चे हैं अब वो उस दुख से निकलकर एक सकारात्मक भूमिका फिजी में निभा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां जहां पर भी हमारे भारतीय प्रवासी हैं जो डायस्पोरा के हैं, वो अपने देश में ऐसा ही योगदान देते रहेंगे, देते रहे हैं, रहेंगे, ताकि हम सब मिलकर वसुदेव कुटुंबकम का जो मंच हमने लगाया हुआ है, इस पर सब के सब खरे उतरें। इन शब्दों के साथ, समय बहुत जाया नहीं करना चाहता हूं, इन शब्दों के साथ आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो हम बीड़ा उठाए हुए हैं इस पर हम सफलीभूत हों। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद पंडित कमलेश आर्य जी. May I now request Ms. Mahzabeen Farzana Khan to speak, but before that let me introduce Mahzabeen. Mahzabeen is a school principal in Fiji, serving in a school which is essentially attended by indigenous Fijian students. A very small percentage of students are of Indian origin. She was born in Vanuatu. Her links are with Bengal and Kerala. She is of Muslim background. And also very interesting, Mahzabeen is a keen rugby enthusiast. Very few ladies in Fiji or globally play rugby or coach rugby as a sport. And Mahzabeen is one of them. She was appointed as the principal of Nasikawa Vision College
at a very young age of 35. That is a record for Fiji. Of course, she has many attributes. She's a community development worker. She works on women's empowerment and most importantly on peace and harmony in the community that she works in. May I call upon Mazavin Farzana Khan to address us? Thank you. Namaskar, Assalamu alaikum, and Bula from the Fiji Islands. It's indeed a profound pleasure to be part of this conclave this evening. And I must also thank Dr. Ganesh Chan for a wonderful introduction and the invitation to be here this evening. The Indian diaspora, that is very important to India because it is an integral part of the way the world of life should be as far as Indians are concerned. And as far as the theme goes with it, the sun never sets on the Indian diaspora. It's very important, and we are all culturally linked to it. And when I look at the experiences as an Indian in the non-Indian community in the non-Indian country, it gives me a lot of pride that I'm the descendant of my forefathers who have toiled very hard in Fiji and provided for the communities that we are now serving. As a woman and with the Indian background, it's not easy to achieve the things that I have achieved so far in my life. However, I attribute my achievements to the people who have helped me out and basically allowing me to serve the community with peace and harmony and fostering tolerance among the non-Indians. There have been a lot of problems. We have insecurities. And as far as our different cultural backgrounds are concerned, we need to have cultural diversity and mutual understanding and a sense of humility to understand the differences that we have and also to enhance unity and also at a global level so that we are able to conquer the world, conquer the tribulations and trials that we all face. And the Indian diaspora is also seen as defining the overseas community. And when we look at the achievements of all the people involved, we give credit to each other because we understand each other and we are able to move forward because we see each other as one. And in Fiji, I must also thank the great leaders who have been there to ensure that the Indian community is safe, that the Indian diaspora is also achieving what they have to achieve. Among the people, I believe that we are working very hard to provide for the nation, to provide for our own country's achievement. And it's a proud moment for us to see that the Indian diaspora has achieved a name in all fraternity as far as the professional jobs are concerned. Despite the uncertainties that we have in Fiji, and we know that there are people who are looking forward to migration to greener pastures. However, it's just a humble request and an urge to all the professionals if we could help our communities and our people to achieve the best that we can in Fiji so that we can live together in harmony and contribute to the immense productivity and the immense expansion of the Indian diaspora in Fiji. Looking at values, and at this moment I'm proud to also contribute that the values that we achieved, the values that were instilled by our forefathers and our parents, we are able to also instill that in our children in Fiji, despite the race, despite the religion. And that is what makes us unique as far as teaching profession is concerned in Fiji and being part of the Indian diaspora. It's a great pleasure
to hear everything that has been shared with us this evening, and a great learning experience. And I wish everyone well in this conclave. Thank you. Thank you, Mazavin. Our next speaker is Mr. Bhagirathi Bhan. Bhagirathi currently teaches Hindi at the University of the South Pacific. He has immense passion for Indian culture, language, literature, and arts. He has organized Ram Lila for many years in his hometown, which is Navua, a short distance away from the capital. At the moment, he is doing a PhD in applied linguistics with a specific focus on mental health of Fiji Hindi speakers. That's a unique topic. May I invite Mr. Bhan to make his contribution? आप सभी को जय श्री सीताराम और नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग। हमारी तरफ हमारा इधर गुड इवनिंग है और मैं आशा करता हूँ आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप इन्फॉर्म करें। तो मैं और समय न लेते हुए अपना जो वक्तव्य, अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य जो है वो शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो इस जी समिट का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इसका जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हम लोगों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए जितने भी आयोजकगण हैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है। फीजी की ओर से जो आयोजकगण हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। और जैसे अभी आर्या जी ने कहा, मेज़बिन जी ने कहा कि जो फीजी में भारतीयों लोगों का वजूद है, ये गिरमिट काल से हुआ है जब भारत से लोग फिजी आए हैं और ये हमारा जो इतिहास है, ये हमारे पहचान का एक अभिन्न अंग है। और इसके साथ आगे बढ़ते-बढ़ते जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, कि हम सब एक विशाल परिवार के अंग हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके इंक्लूसिव रहें सभी के साथ में। तो आप जानते हैं कि गिरमिट की जो यातनाएँ हैं, उसके कारण आज भी हमारा जो वर्तमान पीढ़ी है, वो कई तरह के जो मानसिक तनाव है या मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं लोग, और कभी-कभी इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है या उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ में ये सब हो रहा है। तो मेरा जो शोध है इस ओर केंद्रित है कि मैं हमारे लोगों की जो मानसिक स्थिति पे थोड़ा-सा काम कर पाऊँ, क्योंकि फिजी के हमारे जो इंडो फिजियन पॉपुलेशन में आप देखें तो सुसाइड रेट जो है, आत्महत्या का जो स्तर है काफ़ी ज़्यादा है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप से ही इस बात के लिए घृणा करते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है या हमारा जो रूट है, जो मूल है हमारा, वो बहुत मजबूत नहीं है। हमारी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि हमको हमेशा डर रहता है कि ये हमारा देश नहीं, हमारा ज़मीन नहीं, हमारा घर नहीं, हमारी नौकरी नहीं, या ऐसे-ऐसे कई बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो इस कारण इस क्षेत्र में काम बहुत ज़रूरी है। और चलते हैं, बात करते हैं कि जिस पक्ष को आज मैं अपनी ओर से इस मंच पे लाना चाहता था, वो यह है कि हम एक साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। भारत न केवल विश्व गुरु है, लेकिन भारत माता, एक माँ का जो भावना होता है कि माँ का जो प्रेम है, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, ऊँचा होता है। और जैसे हमारे इनॉग्रेशन के कुछ वक्ताओं ने भी बोला कि भारत के जो लोग हैं, वो कभी भी, कहीं भी, किसी प्रकार के किसी को भी किसी प्रकार का अहित नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, हमेशा देते रहते हैं, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से मदद करना, और किसी भी जगह जाके किसी भी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना देना और खून पसीने से उसको सींचना, ये जो एक गुण हमारे पूर्वजों में था या हम लोगों में है, भारतीयों में है, तो इसको बहुत सराहना जाना चाहिए, इसका बहुत सम्मान करना चाहिए। और इसका जो श्रेय है कि भले हम भारत की मिट्टी से बहुत दूर है, लेकिन आज भी उस मिट्टी की खुशबू हमारे खून में है। सो इंडिया इज स्टिल इन आवर ब्लड एंड इट कैन नेवर गो अवे फ्रॉम अस। तो भारत माता का जो हृदय है, वो इतना प्रेममय है कि आज पूरे दुनिया को मार्ग दिखा रही है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि माँ अमृतानंदमयी जी इस कार्यक्रम की एम्बेसडर है, तो उनके चरणों में भी मेरा शत-शत नमन है। और मैं
कला में बहुत रुचि रखता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि रामलीला, अभी मैं जिस जिले से आता हूँ, नावुआ एक छोटा सा ग्राम है फिजी में, और हमारे पूर्वजों ने गिरमिटियस, उन लोगों ने रामलीला सबसे पहले फिजी में उसी गांव में शुरू किया था, और ये धीरे धीरे अब ये परंपरा जो है ये काफी लुप्त होने लगा है। तो इसको बचाने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है, और हम लोग कोशिश करते रहते हैं युवाओं को, बच्चों को इसके क्षेत्र में ज्ञान देने के लिए, या उनको जागरूकता उनमें बनाए रखने के लिए, उनको इसमें भागीदारी देने के लिए। तो ये सब काम चलता रहता है। तो कला से मैंने ये सीखा है कि अ, और मैं खुद मैं एक विद्यार्थी हूँ भरतनाट्यम का। मुझे भरतनाट्यम बहुत पसंद है, और मैं सीख रहा हूँ। तो हम लोग जब भरतनाट्यम सीखते हैं तो उसमें जो एक श्लोक आता है बहुत सुंदर सा, तो मुझे लगा कि मैं उस श्लोक को आज आप सबके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें ये जो हमारा थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना उसमें एकदम फूट फूट के डला हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो श्लोक कुछ ऐसा है। तो जस्ट एडिंग इट टू दिस कॉन्वर्सेशन, शायद आप इसको जानते होंगे, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का जो है, जिसमें जो हमारे एक पंचम वेद है, और भारत का कंट्रीब्यूशन है दुनिया का योग के साथ में। जैसे योग भारत ने पूरे विश्व को दिया है, और वैसे ही जो नृत्य है, कला है, गीत संगीत, ये सब भी भारत ने दिया है। तो उसका जो ये श्लोक है मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर इसका जो अर्थ है वही पे मेरा डिस्कशन है, और फिर मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। तो शुरू करते हैं। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादितं नमः सात्विकं शिवम। तो इसमें जो इंक्लूसिविटी की भावना है कि सबको अ, एक सूत्र में कर देना, सबको एक बना देना, कि कोई डिफरेंसेस रहे नहीं। तो इसमें जो बताया गया कि आंगिकम की जो डेंसा है, जो नटराज फॉर्म है जो परब्रह्म का, तो उसका जो शरीर है किस चीज से बना है? पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड उस परम तत्व का शरीर है। आहार्य, उसका जो ज्वेलरीज है, जो अटाया है, जो कॉस्ट्यूम है, वो उसका ये जो चंद्र, तारा, सूर्य, ये सभी उसके ज्वेलरीज है। और दुनिया की कोई भी भाषा हो, कोई भी साहित्य हो, किसी भी भाषा का कोई भी साहित्य हो, जो भी हम कुछ आज बोल रहे हैं, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे मुख से जो भी एक एक शब्द निकल रहा है, या दुनिया में कोई भी बात कर रहा है, किसी भी जबान में बात कर रहा है, किसी भी धर्म पंथ मजहब को मानता हो, इवेंचुअली वांगिकम सर्ववांगमयम की वाचकम सर्ववांगमयम की जो स्पीच है, वो उसी परब्रह्म का जो वाणी है। तो हम सभी लोग वही एक भाषा बोलते हैं, और जैसे हम बोलते हैं कि लैंग्वेज हमको कभी तोड़ता नहीं है, हमें जोड़ता है। हम भाषा से हमेशा जुड़ते रहते हैं। भाषा हमको हमारे अस्तित्व से जोड़ के रखती है। लेकिन जो कला की भाषा है, संगीत की भाषा है, नृत्य की भाषा है, उसको भी हम लोग इसमें अगर संग्रहित करें, तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो भारत का जो देन है कला, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि हम लोग एक सूत्र में जुड़े हैं, न केवल योग से या दृष्टि से, दर्शन से, ज्ञान से, विज्ञान से, कला से भी जुड़े, और नृत्य संगीत से भी जुड़े, और हिंदी भाषा डेफिनेटली, और जो भारत की अन्य प्रांतीय भाषाएं हैं। हमारी फिजी में हम लोग, जो हमारे पूर्वजों की देन हमारी जो फिजी हिंदी है, अगर आपको बुरा न लगे तो थोड़ा से हम वो रकम बात करी, शायद आपके समझ में पता नहीं कितना आवे कितना नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पीजी में ये रकम बात करता है। और शायद हमें लगे कि सूरीनाम में भी थोड़ा ये रकम बात हुए है, और शायद मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में भी। तो जहाँ जहाँ हम के पूर्वज लोग गई से उनके जो फ्लेवा है, आप हम के जो भाषा हम बात करता है भी, जैसे भी हम आप हमें सुनता है, ये रकम यू नो हम के लेगेसी है। तो हम अपन भाषा पे बहुत गर्व करता है और सम्मान करता है। साथ में फिजी को भी हमको अपनाया है। फिजी हम के मातृभूमि है, भारत हमारी पितृभूमि है, और हमारी देव भूमि है। तो हम लोग जो राम कृष्ण दुर्गा शिव जी की यहाँ पे उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो इन सब की जो देव भूमि भारत है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्तव्य में, इस मंच पे हमको जगह देने के लिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और ये जो G20 का इवेंट है, आप सबको बहुत बहुत इसकी जो मंगल कामना है, बहुत अच्छी तरह से बीते, और पूरा विश्व भारत से प्रेरित है, भारत का प्रेम सभी पे फैले, और हम लोग सब एक सूत्र में बनके, एक परिवार बनके वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पे चले। बहुत बहुत धन्यवाद।
Dhanyawad. Thank you, Bhagirathi Banji. Our next speaker is Ms. Sweta Dutt Chaudhary, who is also a Hindi teacher at the DAV Girls College in Fiji. She resides in the oldest settlement where Indians lived in Fiji upon their arrival here as indentured workers, and that is Nosori. She has been a teacher for the past 18 years. She also teaches part-time at the University of the South Pacific, teaches Hindi. She is also a poet. Her book of poetry called Mati was published in 2019. May I now request Ms. Chaudhary to make her contribution. जी श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कुछ कविता की पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। श्वेता वहां पर है जी। Shweta was connected, but while we wait for her, let us go on to our other speakers. Mr. Shandil, Janesh Shandil, are you there? Janesh? Janesh Shandil is 36 years old, and today is his birthday. So I hope his family hasn't pulled him out to that event. But while we wait, Mr. Adish Naidu. Adish, are you there? No. We will then ask Pradeep Lal, Master Pradeep Lal, to make his contribution. Pradeep stays in Vanuatu, which is the other major island. He's a lecturer at the Fiji National University. He has been an educator all his life. He stays on his farm, and he has been interacting like Mahzabin with the local community all his life. He has a PowerPoint document, which I don't know how to show on the screen, but Pradeep, can you start your contributions? सादर नमस्ते सभी को I may not be able to use my PowerPoint, but I will just speak. It gives me immense pleasure to speak on such an important occasion that promotes Indian diaspora, that is grounded on the ancient Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, that promotes global peace, harmony, and prosperity, and spreads the ideals of one earth, one family, one future. My sincere thanks to Antarashtriya Sahayog Parishad for organizing this event. I am an Indo-Fijian born in Fiji Islands, and my grandfather was a Girmitia who came to Fiji during the Girmit era. I'm the third generation of the Girmitia in Fiji. The history of Girmitias, of course, is very fascinating, though quite frightening and terrifying, especially when we look at the ordeals and the struggles. What I am today is part of that history, the culture and tradition, the इतिहास भारती का, फिजी का और जो संस्कृति और सभ्यता है, ये मुझे बनाया है जो मैं अभी हूँ. जैसे कहा गया, I live in my rural village in on the island of Vanuatu. There's a small village named Korotari, and I live with my parents. We do have constant interactions with the non-Indians, the Itokays. The Itokays meaning the owners of the land. And we have had ups and downs, but we try as much as possible to find ways to overcome our differences and continue to live peacefully. And my philosophies, the ideals of honesty, fairness, hard work, love and respect for each other has emanated from my religious principles.
through the principles of Vedas that was promoted strongly by Maharishi Swami Dayanand, and that has shaped my ideals. Of course, in the early ages, we were punished, so that we could live that path and not go astray. Our daily is the interactions with the non-Indians is on a daily basis, in the village and in the schools and everywhere in the community. And we live in a multicultural society, and therefore the interactions with each other is very, very important. We celebrate festivals like Deepavali, Holi, and we invite our neighbors, the Itoke population. We share stories, we share food, sweets, etc. I think that builds a very good bond that we have. At the same time, we ensure that we do not lose our culture and traditions in that process. And that is, I believe, is very important to us. And in order for the Indo-Fijian population to live peacefully and live in harmony, we need to promote the ideals of love, kindness, care, empathy, etc. And also to promote education among the Itokes. And I personally have reached out to the Itoke population on many occasions because I believe that we need to assist them if there is a need. And so during disasters, I have it becomes my moral duty, responsibility to assist them by way of organizing food, building materials, clothing, etc. Even to the extent of setting up a kindergarten in one village and a community library in another. So my ideals of promoting education for all came from the teachings of my religion, and having seen the struggles of my parents and my family, I believe that it is important that we make people more educated. The belief that once people are educated, they will eventually be peaceful and they will prosper in life. And so I'm still living in my village and looking after my old parents. I could have migrated to some affluent country, like the rest of the educated people who are going away from Fiji. I chose to stay behind, and this gave me the opportunity to look after my parents, at the same time help my people, which includes the Itokes, in whatever way I could. I pay homage and deep respect to the Indian heritage, which I strongly am part of and belong to, and the wisdom of the Indian heritage that I have gained, and that has made me what I am today, and I shall continue. As they say, the sun never sets on the Indian diaspora. And I wish that this Indian diaspora continues to flourish, and that there are many more such sessions, to continue to keep this alive. Thank you. Dhanyavad. Thank you, Master Pradeep ji. Very interesting points you have raised. May I once again call upon our other speakers, Jainesh. Have you been able to connect? Jainesh? No. Shweta? Okay. May I request Adish Naidu? Adish? No, we haven't been able to. There has been a difficulty of connection. Our people who are on the panel, they stay in various parts of the country. Shaira Permal, Mrs. Permal, are you online? Now, Shaira had to travel to her work site in a very remote part of Fiji, where earlier her message was that she's been having difficulty with internet connectivity.
So, ladies and gentlemen, we have spent about 35 minutes on Fiji. We still have got some time, Anilji and members of the ARSP. Let me say a few words as well. on this. गणेश जी आपका स्वागत है और मेरे साथ भी फुजी से जुड़े हुए श्री संतोष जी, आदरणीय नारायण जी, श्री राकेश जी हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा कमेंट करेंगे। आप पहले आपका स्वागत है और जिस समय ये बोल रहे हो तो उस समय आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग इस समय जुड़ नहीं पाए एक बार फोन से आप उनसे पूछ लीजिएगा या आप में से कोई आपका सहयोग कर सकता हो तो उन लोगों से एक बार पूछ लें। जी, आपका स्वागत है, आप प्लीज कहें। Thank you, and good to know that our friends are present there. Rakesh ji, Shri Arora ji, Santosh ji, ityadi. I also want to pay homage to Shri Baleshwar Agarwal ji. Baleshwar had an immense impact on Fiji. From 1980s, mid-1980s, when we had the first military coup. From that time to his demise, he was in touch with us. He visited with a very strong delegation of people from ARSP to Fiji when we were going through a lot of difficulties where leaders, at that time, there were two groups of leaders. They were at each other's throats. The Indian community was fighting amongst itself, as well as there were major problems of military control and domination in the country. So Shri Agarwal ji came to Fiji on our invitation. He was an enormous powerhouse in bringing the Indian leaders together. And the consequence of that was that Fiji had a remarkably good constitution in 1997. So I recognize that contribution of Shri Agarwal ji and ARSP. And I thank those who are continuing with the legacy that he has left behind at the ARSP. Having said that, I do need to request your patience in questioning some of the things that we may unwittingly believe in. I'm an academic and one of my roles is to shake some trees. Vasudhaiva Kutumbakam is a noble concept. The world is one. All living beings are related. We are one. We are creatures of the Lord, the God. But within us, as all our grunts have said, and as we all experience, there are evil and good people. There are very good people and there are evil people with evil deeds. And they all worship the good Lord, Ram, Krishna ji, Hanuman ji, ityadi. हमारे में चोर बसे हैं, डाकू बसे हैं, वो भी भारतीय जो धर्म है उनमें विश्वास करते हैं और उनको मान देते हैं। जो हमारा जीवन का आधार है, इसको हमें भली भांति सोचना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब नहीं है कि हम साइलेंट रहें जब अत्याचार होती हो। जैसे श्री स्वामी जी ने कहा कि हम दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं करते, वी डोंट इंटरफियर। मैं कहना चाहता हूं कि वो विचार हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो डायस्पोरा है, विभिन्न तरह की डायस्पोरा है। जैसे इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल में सभी तरह के लोग मिलते हैं, हमारी डायस्पोरा में भी सभी तरह के लोग मिलेंगे, बदमाश से लेकर अच्छे। कुछ बदमाश जैसे फिजी में हुआ है, भारतीय मूल के लोग 3 कू हुई है, तीनों कू में शामिल थे।
पैसे से कू करवाएं, वादाओं से कई तरह से हेल्प किए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हिंदुस्तान का क्या रोल होता है? अभी हमने सुना वेरी इंटरेस्टिंग डाटा गिवन टू अस कि there are about 34 million diaspora of which 18 million are PIOs. Now हमारी जो हिस्ट्री है गिरमिटिया, उसमें शायद 12 से 15 मिलियन तो होगी, और हमारी जो जड़ है हिंदुस्तान से है। हम हर एक का जड़ हिंदुस्तान से है, जुड़े हैं हम। पर ये हम नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान के सरकारों से है, क्योंकि हिंदुस्तान के सरकार हम गिरमिटियों को बहुत पहले ही त्याग दिए थी। शायद the last intervention they had was in South Africa, fighting against apartheid, but that was not only for the Girmitias in Natal and Devon, etc. It was more and very much welcomed piece of intervention in South Africa for human rights. But after that, there has been a lot of atrocities on Girmitias in the 18 countries, Fiji, सुरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाड, मॉरिशस के छोड़ के शायद। भारत किस तरह से, किस रवैये से हमको देखते हैं, क्या इंटरवेंशन किए हैं, इसे हमें समझना चाहिए और इस पर कुछ विचार गोष्ठी भी होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि there are many diasporas. There is a NRI diaspora, there is a Girmitia diaspora, and within these there are good and evil people. So हम ये जो the world is one, we are all connected, we are all the lost children, वो धारा से सभी को tolerate नहीं करना चाहिए हमें. We should begin to discriminate and intervene, call out the crooks, call out our own people who have been creating problems in our countries, and encourage the good values that we have. Without that, our role as intellectuals, as people who are rooted in Indian culture and tradition, will remain weak. I know there is not much time for me to elaborate on the various grunts, particularly Mahabharata and Gita, but I think that view that because we are all one, we should begin to tolerate the atrocities, that must be debunked once and for all. So I know this may not sound too palatable to some of us, but that is my view, and I thought I will share it with the very esteemed group of people who are panelists and who are listening to the discussion throughout the world. Thank you very much. I do look forward to Rakesh ji and Santosh ji's contribution. जी जी, बहुत शुक्रिया गणेश जी। एक बार तालियों के साथ हम गणेश जी के इसका अभिनंदन करते हैं। और इस बीच में अगर कोई आपके संपर्क में आए तो हम लोगों को आप मैसेज दे सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे अगर दूसरा देश भी कोई बोल रहा होगा और अपना कोई स्पीकर होगा तो विल ट्राई टू एडजस्ट देम। आपने जो कहा वो काफी ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि the intervention is not just a military intervention. There are other type of interventions also, like you have mentioned Kaleshwarji's contribution when he went to Fiji, when there was military coup. He tried all his best with his delegation to convince that there should be harmony between the communities. और अभी भी purpose of this particular program is to promote harmony and to build bridges between Indian diaspora. तो मैं समझता हूँ कि जी शायद अनम्यूट हो गया किसी का। अब मैं चेतन जी देखिए किनका, हाँ जी, अब मैं
ब्रीफ कमेंट के लिए 2-2 मिनट के कमेंट्स के लिए श्री संतोष जी और श्री राकेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्कार गणेश जी, बहुत दिनों के बाद आपके लेकिन इससे पहले वास्तव में समय का दबाव रहता है। श्री संतोष जी अभी अभी सेवानिवृत्त होकर आए हैं पुलिस से। पुलिस में आप वो सांस्कृतिक दूत के रूप में सांस्कृतिक जो हमारा सेंटर है उसके आप निदेशक, और उससे पूर्व आप तमिलनाडु में थे। हमारे साथी हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में। श्री संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले तो मैं गणेश जी को ही धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो हमारे लिए। इसमें मैं भी ऑस्ट्रेलिया से पैनलिस्ट हूँ। अभी मेरा नंबर मॉरिशस वहां पे हो रहा है ये प्रवासी भवन न्यू दिल्ली में आएगा। कर दीजिए ना, नहीं बोलना है सिर्फ मुझे। बहुत अच्छा लगा उसको संरक्षण के लिए जितना काम कर रहे हैं वहाँ, और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में जितना हम काम कर रहे हैं वह निश्चित रूप से सराहनीय है। आज वायरस उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपको नहीं, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फिजी के बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और इतने अच्छे अच्छे स्पीकर आप लेकर आए जो सब हर जगह अच्छे लेकिन हमेशा अच्छे की तरफ ही ध्यान नहीं होता है। जो है कार्यक्रम सांस्कृतिक रूप से विश्व का क्रम में ही रखा गया है। मैं इसी के साथ फिजी से जितने लोग आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राकेश जी जो प्रवासी संसार पत्रिका के संपादक भी हैं और फिजी में कई बार जा चुके हैं। श्री राकेश जी फॉर ब्रीफ कमेंट। जी जी धन्यवाद अनिल जी। मैं गणेश जी को यहाँ देखकर बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है। लग रहा है जो अभी फिजी में हम लोग कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं, मैं और श्याम परांडे जी, लग रहा है उसी का एक कंटिन्यूएशन आगे आ गया। तो गणेश जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और वसुधैव कुटुंबकम में जो एक इस तकनीक ने इस पूरी धारा को हमें एक साथ ला दिया है और ये पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और पूरा डायस्पोरा की जो आंकड़े आज सामने आए हैं वह भी बहुत सुखद हैं। और सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो और जिस प्रकार के भी संबंध पूरे विश्व में हमारे भारतीय डायस्पोरा के स्थापित हो रहे हैं, आर्थिक संबंध स्थापित हो रहे हैं, मुझे लगता है ये एक सुख भविष्य के भारतीय डायस्पोरा के और भारत के लिए बहुत आवश्यक, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और बहुत सुखद भविष्य भारतीय डायस्पोरा का भारत के साथ में। क्योंकि संक्षेप में बोलना है तो एक हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े गीतकार हुए हैं कुंवर बेचैन, उनकी पंक्तियां जो है मैं कहकर मात्र अपनी बात समाप्त करूंगा कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो चल रहे हैं एक पांव से भी लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। धन्यवाद। वाह 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 वाह। तो फिजी का साथ तो बड़ा विशेष है और इसका समापन के लिए मैं इस सत्र के श्री नारायण जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे संक्षेप में टिप्पणी करें। धन्यवाद अनिल जी। आज गणेश चंद जी की अध्यक्षता में पीजी पर जो ये कार्यक्रम हुआ और जैसे जैसे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से कि उन्होंने एक परंपरागत ढंग से नहीं बल्कि उनकी फिजी की और दुनिया संसार की जो भावना है उससे हमारे लोगों को और इस पटल से जुड़े हुए लोगों को परिचित कराने का प्रयास किया है। देखिए, फिजी का भारत में सबसे बड़ा सम्मान इसलिए है कि गिरमिटिया प्रथा को अंत करने में फिजी का नेतृत्व बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। जबकि तोताराम शरणार्थी वहां से आए और उससे प्रेरित होकर मदन मोहन मालवीय, गोखले, महात्मा गांधी ने जो और भारत के गांव गांव में जो अभियान छिड़ा जिसको नहीं मालूम था
वो सोचा उसने, और गिरमिटिया प्रथा के अंत होने में जो महत्वपूर्ण भूमिका फिजी की है उसको हम सब लोग बराबर याद करते हैं। हम यह भी याद करते हैं कि गिरमिटिया देशों में सबसे पहले कवि सम्मेलन फिजी में हुआ था, जबकि फिजी आजाद भी नहीं था, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस संख्या वो उस समय प्रकाशित हुआ था और उसकी भूमिका लिखी थी और उसकी सराहना की गई। जहां तक आपने सवाल उठाए हैं और वह सवाल हम सबके मन में है, हम सब भी आपकी चिंता से चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि आज के संसार में हम कैसे अपने गिरमिटिया बंधुओं के साथ, उनके साथ कहीं कोई समस्या आती है तो हम उसका निदान कर सकते हैं और कोशिश करते हैं। गणेश चंद जी, एक बेटा अगर माँ का दूध पीता है तो उसके स्तन में दूध नहीं रहे फिर भी वह चूसना चाहता है और माँ चाहती है कि उसे दूध पिलाओ। भारत माता इसी तरह की स्थिति में रहकर भी सभी गिरमिटिया बंधुओं को जो कुछ भी दे सकती है करती है। भारत की जनता आपके साथ है, सरकारें आती है जाती है, एम्बेसडर आते हैं जाते हैं, और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसी भी स्थिति हो हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि देश रहो परदेश रहो आहु देश रहो तुम हमारे रहोगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नारायण जी। और अब ये असल में एक कार्यक्रम 24 घंटे का नहीं है बल्कि 24 कार्यक्रम है, एक एक घंटे के। हमने फिजी से इंटरेक्शन किया और इसको हम समापन करेंगे आदरणीय श्याम के वक्तव्य के साथ। अभी 2 महीना पहले हम गए थे और आज इस कार्यक्रम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग। वहाँ जो सम्मेलन हुआ, वहाँ की कॉन्फ्रेंस हुई और उसके पश्चात वहाँ की सरकार ने जो नीति का उद्घाटन किया, बताया, तो सबको का बड़ा अच्छा स्मरण है। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बोलते बोलते मैंने ये कहा था भारतीय डायस्पोरा में कि 24 घंटा कार्यक्रम चलता, ऐसा एक फैला हुआ डायस्पोरा है और वो आज हम अनेक कर रहे हैं, अपने आचरण में लाया हूं। विलक्षण ऐसा है और बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली थ्रिल्ड दिस इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल। धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद गणेश जी। इस सत्र का समापन होता है और इस में हम याद डॉक्टर महेंद्र चौधरी को भी कर रहे हैं, उस उद्घाटन कार्यक्रम में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिजी के, वो भी उपस्थित थे। हम उनको भी याद करते हैं और जो ऐसे स्पीकर रह गए हैं, अगर संभव होगा तो आप उनसे चर्चा करके वो हमसे संपर्क कर लें। कोशिश करेंगे कि अगले सत्रों में भी उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया जा सके। तो इसी के साथ हम लोग अगले सत्र की तरफ चल रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रजनी सरीन जी भी हैं, हम उनका भी बहुत धन्यवाद देते हैं और वो हमारे से जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ी रहेंगी। अगला जो सत्र होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के सत्र के लिए हम विशेष रूप से आभारी हैं श्री संजीव भाकरी जी के, जो IT प्रोफेशनल हैं और वर्षों से लगभग तीन चार दशकों से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। आप हिंदू काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। श्री अनिल अस्थाना जी जो कि बहुत वहाँ के प्रबुद्ध प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्तित्व है, और श्री रेखा राजवंशी जी के माध्यम से सुभाष जी और अन्य कवि हमसे जुड़े हैं। मैं अभी संचालन के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सत्र के संचालन के लिए श्री संजीव भाकरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे स्वयं उसका प्रारंभ करें और श्री अनिल अस्थाना जी का भी परिचय दें और बाकी लोगों के भी बारे में जानकारी। श्री भाकरी जी, एक बार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अनिल जी, श्याम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम सोचा और उसको कार्यान्वित करके किया, जो कि एक अपने आप में एक बहुत जरूरी है। इस तरह भारतीय डायस्पोरा का जो
रेलेवेंस है वो और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भारत एक विश्व पटल पर एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र की तरह उभर के आ रहा है, तो उसमें डायस्पोरा का बहुत हाथ है। और अभी फिजी का कार्यक्रम सुन के बहुत हर्ष हुआ और हम जानते थे और बहुत कुछ जानने को मिला। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, जो अब जिस कंट्री से हम आते हैं, ऑस्ट्रेलिया का डायस्पोरा बहुत तेजी से पिछले 10-15 वर्षों में बढ़ा है और इस समय हम 3 से 4% के बीच में संख्या में हैं। पिछले जनगणना के दौरान 1 मिलियन के आसपास हम होंगे और जबकि 25 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। और भारतीय डायस्पोरा बहुत तेजी से, बहुत यंग है कंपैरेटिवली। पिछले 15-20 वर्षों में ही अधिकतर लोग आए हैं और आईटी, अकाउंटिंग और मेडिसिन, हेल्थ केयर में जिस तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों में हम और भी देखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं और ये ऐसे कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। और जो भी आज हम स्पीकर ला पाए हैं और उनके आप सुन के आपको एक व्यू मिलेगा कि भारतीय डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। समय ना लेते हुए मैं अनिल जी, डॉक्टर अनिल अस्थाना जी के बारे में परिचय दे सकता हूँ। Dr. Anil Asthana, born and raised in UK, is a third generation Indian. He initially, I think, migrated his family from India to Kenya to UK and then Australia. He is a gastroenterologist, a liver specialist, and healthcare entrepreneur trained from King's College London. He has received awards from Victorian government. Victorian government means Australian Victorian government, for his research work and published widely internationally. Has represented Australia in Pravasi Bharatiya Divas and has multiple healthcare companies and is passionate about connecting the contemporary Indian diaspora to their roots. And he is very active in Indian community and settled in Melbourne in Australia. So मैं आमंत्रित करूंगा अनिल अस्थाना जी को कि इस कार्यक्रम, ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम का संचालन करें और स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करें। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, नमस्कार श्याम जी, नमस्कार अनिल जी और सारे सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Really a big honor for Australia to have this kind of a presence in this program. तो without further delay मैं शुरू करता हूँ अपने पहले स्पीकर के साथ। अपने पहले स्पीकर हैं प्रोफेसर उमेश शर्मा जी। Umesh ji is a professor in the Faculty of Education at Monash University in Melbourne, where he is the Associate Dean. His research spans over 25 countries globally, and he has authored over 200 academic articles and books. He has received numerous awards and is very, very active in including education for those with special needs. So I would like to now invite Professor Umesh Sharma ji. Thank you very much, Anil ji. Or I think this is a historical moment for everyone who's here, as well as for all Indians. I think people who have left India and अपनी मातृभूमि जो छोड़ के आए हैं। मैं आपको 2 या 3 छोटी-छोटी कहानियां सुनाता हूँ। उसके जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, मेरे भारत ने मुझे क्या सिखाया। आज भारत के बाहर आ गए हैं और हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे लोगों से। तो मैं भारत में एक स्कूल के अंदर काम कर रहा था। एक दिन एक इंग्लैंड से एक रिसर्चर आए हमारी लाइब्रेरी में और वो बैठे हुए थे। तो जिस टाइम वो हमारी लाइब्रेरी में आए तो क्या करते हैं कि मैं सोचता था हमेशा हिंदुस्तान के अंदर हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत 200 साल पहले पुराने शुरू हुआ होगा, लेकिन उन्होंने बोला एक्चुअली मैं आपके कंट्री में इसलिए आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुकुल के टाइम में क्या होता था, महाभारत के टाइम में क्या होता था। मैंने कहा ये तो हम जब अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें तो पता लगा कि सब 200 साल पुरानी है। तो जिस टाइम उन्होंने एक लेसन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये सीखा, जो मैं आज हिंदुस्तान से लेके जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया वो मैंने कंटिन्यू रखा, कि सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि आप जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं एक चीज भूल जाते हैं कि मेरी कंट्री ने इस दुनिया को क्या कुछ दिया। तो जो गुरुकुल दिया, गुरुकुल सिस्टम से जो कुछ सीखा, वो जब मैंने यहाँ पे आके अपनी रिसर्च शुरू की, I wanted to keep that in my research projects and all the research studies that I was doing. तो फिर जब मैं यहाँ पे पहुंचा, I tried to use that information, but I was not using Gurukul as a system. I was not writing Gurukul, but that really helped me to understand what was happening in Australia, and then I have worked Fiji, Solomon Island, all other countries.
when I started paying respect to the all other countries, it made me feel so much empowered with the new knowledge, but also respect. I started getting respect from other countries. So सबसे पहला लेसन तो मैंने यही सीखा कि जब दूसरी कंट्री में जाओ, जहां पे भी हम जाएं, उस कंट्री के ट्रेडिशन को सीखें, अपने कंट्री के ट्रेडिशन को सीखें और उन दोनों को जोड़ें। तो जब हमारी नई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, इतना अच्छा लगा कि पहली बार गुरुकुल सिस्टम के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, उसको भूले नहीं और उसी से हम आगे बढ़े हैं। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ कि अपने काम के लिए मैं यहाँ पे एक बार PNG गया, पापुआ न्यू गिनी। तो वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर थे, वो कहते आर यू इंडियन? आई सेड यस आई एम इंडियन। कहते यू पीपल आर वेरी गुड। आई सेड व्हाट डू यू मीन वी आर वेरी गुड? ही सेज पता है आपके यहाँ से जिस टाइम यहाँ पे कोविड हुआ हमारी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री ने हमको हेल्प नहीं किया, बट तुम्हारी कंट्री से कोविड के लिए हमारी कंट्री में वो वैक्सीनेशन आया। तो आई वाज सरप्राइज, नॉट ओनली दैट पर्सन न्यू, बट आई थिंक आप लोगों कुछ लोगों को पता होगा, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर PNG पहुंचे तो उनका पैर छुआ गया वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। वो रिस्पेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रहा था, वो हमें भारतीयों को मिल रहा था। जो कर्म हमारे नेता जो करते हैं, उससे जो हमें रिस्पेक्ट मिलता है। तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप इन माइंड दैट आवर लीडर्स, what we do for each other, what we do for the countries where we are, it makes a huge difference. So that's a tradition we need to continue to do. And I want to finish on the very last point. आपको पता होगा by 2048 our population is growing. So by 2048 every 5th worker in the world will be Indian. So हर 5वां इंसान जो पूरे संसार के अंदर जो काम कर रहा होगा किसी भी कंट्री में, वो भारतीय होगा। तो इसके दो मेन वो निकलते हैं। एक कि हमें एक मिनट यहाँ पे एको हो रहा है, सॉरी। एक तो हमें एक दूसरे का, अब एक तो जो डाइवर्सिटी इन स्ट्रेंथ होती है, जब नंबर बढ़ता है तो एक दूसरे का पहले तो ध्यान रखना है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, बट इट ऑल्सो कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. So it does not mean number means we start taking over the world. It means we start respecting each other, be more respectful, and start working across different continents, across the world, but take each other with you, the people who are in that country, but also support each other. I think I'll finish here because I realize there are lots of other people who want to say, put on their words. So I'll hand it over to you, Anil ji. Thank you very much. Thank you, Umesh ji, for sharing your expertise through your anecdotes. Or jaisa aapne kaha, I think the message you're really bringing out is, regardless of which field of work we are in, retaining our values and thinking beyond us in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam is what you've really illustrated through those stories and your experience when you went to Papua New Guinea. Very powerful. So thank you very much, Umesh ji. The next speaker I would like to introduce, Dr. Meenakshi Srinivasan. Meenakshi ji played a pivotal role in establishing the Sydney Sanskrit School, which actually happens to be the first community school for Sanskrit in the Southern Hemisphere. She has a PhD in Sanskrit from Bangalore University. She's a prolific speaker. She's been an author and has worked with indigenous communities here in Australia. Meenakshi ji, over to you. धन्यवादः. सर्वेभ्यो नमो नमः. असौ हिरण्मयखण्डः आदिवासीनां ध्यानकलाभूमिः मातृभूमिः च. तान् आदिवासीमनुकुलं स्मृत्वा प्रप्रथमतया कार्तज्ञं समर्पयामः. सर्वेभ्यो नमो नमः. अस्माकं सिडनी संस्कृतशाला परतया ARSP कार्यकार्य समितिं प्रति साष्टांग वंदनानि. हरि ओम टू एवरीवन. बहुत बहुत हम धन्य हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा अवसर दिया बात करने के लिए. Sydney Sanskrit School, established in 2006. This is the first Sanskrit community language school in the Southern Hemisphere. Till 2006, Sanskrit was a classical language. And as Umesh Sharma ji was saying, even I would like to share three important things. I started with my career with the Sura Saraswati Sabha Jagadguru Adi Shankaracharya Peetham Sringeri, Karnataka. There I learned all my Sanskrit basic studies, followed by Hindu Seva Pratishtanam in those days. Now it is called as a Sanskrit Bharati. There I studied spoken Sanskrit,
followed by in Australia in NSW, that is New South Wales. I sat 7 years in the primary school, learned K to 6 curriculum and the methodology, and we started introducing Gurukula system and the deductive approach of Australia in our Sydney Sanskrit school. Our main motto is Sanskrit with fun. Always Sanskrit taught as a Vedic language or a Shastric language. But in Sanskrit school, we are teaching this language through Sanskrit rhymes, Sanskrit stories, Sanskrit plays, hands-on activities, most important, worksheet, sight worksheets, magical worksheets. So all these are the mainstream school techniques we are adapting in our language school. It is a Sunday school established. Those who migrate from different parts of the world to Australia, especially in New South Wales, we have a special program with the Department of Education and the Federation of Community Languages Services. It is a Sunday school. It is a 2 hours of school. We run in 3 different locations. So Monday, Thursday, and Sunday we work. And online classes all over Australia, students are there, Adelaide, Perth, and from the Brisbane also we have. And we also established a special group of students in Melbourne. Nearly we have 60 students in Melbourne, also Victoria. So this is how we are spreading this language. It was a community language when the Bhoja was the king in Ujjain. So we re-establish the history, we establish our humble salutations to New South Wales government. It is adapted as a language program. So from 2006 onwards, this is a community language school. And also we conduct the seasonal camps, some Sharat Shibiram, some Vasanta Shibiram, some Sishira Shibiram. So everything is a seasonal camp based on the international year. Our signature camp is Paniniyam, the grammar camp. We teach the basic, intermediate, and advanced grammar to our students. In this crowd, I have my students and my senior teachers. They are the main contributors, and community leaders are there. They help to Sydney Sanskrit School. And our special thanks to Sri Mandir, and our special thanks to some of the organizations like Hindu Heritage Society. They are Hindu Council of Australia and Hindu clergy. They are the supporter of Sydney Sanskrit School. Sydney Sanskrit School contributes in the field of youth education, children's education, senior citizens education, and also the adult education. We are affiliated with Surasaraswati Sabha, Sringeri Jagadguru Adi Shankaracharya Peetham. We conduct international exams for our senior students and the teachers. The main intention of Sydney Sanskrit School is our teachers must get the local degrees and the diplomas, and also the international proficiency of the language. So the main contribution to Australian society is we belongs to the Dharawal region. So our senior teachers and the senior students, along with me, they have translated the lullabies of Dharawal language to Sanskrit, and we made a bilingual CD. Apart from that, Rashtragunaganam, Ode to Australia and Ode to Thailand was composed in Sanskritam. Our best work, we can say, when Modi ji was visited to Australia first time, we composed a Yuga Purusha song on achievements of Modi ji in Sanskritam. So these are our main achievements. Apart from all these things, we work with the Multicultural Society, and we got, Sanskrit School got many awards for our Sanskrit promotion, and the language made it once again as a community language school. Community language, that is दैनंदिन भाषा के रूप से हम हमारे संस्कृति में, हमें हमारे जनजीवन में जुड़े हैं.
every day, early morning, every day we have classes, spoken Sanskrit, designed for our kids and for the adults. So all the students come at 5:30, the class starts at 5:45 to 6:20. It is an ongoing spoken Sanskrit classes to the society. So these are some of the achievements, and a lot more to do. And our students do the Sanskrit plays and composition of some of the Sorry, Meena ji, we'll have to wrap up. We'll have to wrap up, Meena. Dhanyavadaha for giving us the opportunity. I conclude with the shloka. Ayam nijah paro veti ganana laguchetasam udara charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. Vasudhaiva kutumbakam. Salutations to one and all. Jai Ho. Jai Bharat. Dhanyavadaha. Dhanyavad, Meenakshi ji. That was a fantastic presentation, and keep up the fantastic work. I think there was a lot of claps when you said teaching Sanskritam with fun. So yes. I think that was a real home run. Keep up the great work. Dhanyavad. Next speaker is Atul Aneja ji. Atul ji is with Art of Living Foundation since 1999 to 2000. He was blessed by Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji to teach Art of Living workshops to the Australian public in 2002. Atul ji has held various positions in the foundation, including board director, national executive committee chair, and many more. I would like to now invite Atul ji, aap aa jaiye to the platform, and please start your presentation. Thank you, Anil ji. सबको नमस्कार, संजीव जी और वहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं इंडिया में, आप सबको धन्यवाद, आपने ये मौका दिया. Actually, उमेश जी ने स्टोरी सुनाई तो मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, which I was not planning to share, but I will share क्योंकि इसका रेलेवेंस है योगा और मेडिटेशन से. तो ये बात है कम से कम 15-20 साल पुरानी. I've been in Australia for 28 years. मेरा एक फ्रेंड इंडिया से थोड़ा परेशान होके ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा था. So he was going to stay with me for 1 week and then he will move on. So because वो इंडिया से थोड़ा परेशान होके आ रहा था, so I was driving him from airport to my house. तो रास्ते में देखा यार क्या सड़कें हैं. He was on the Harbour Bridge. यार what a bridge, क्या buildings हैं. तो ऐसे ही कहता गया कि हाँ हर चीज में तारीफ करता गया. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेजा यही है बस कि आज तेरे को सिर्फ ये जो दिख रहा है ना जिंदगी भर यही रहेगा. तो इंडिया छोड़ के आया है वो हम बाद में रियलाइज करते हैं, because I was already here for 10 years by then, that you will realize after living here for 10-15 years ki what India has given me. So that's where the crux is, that yoga, the meditation, the spirituality, the values we are carrying, and that is all connected. जैसे मीना जी बोली, उमेश जी बोले, yoga doesn't happen on its own. It is what so many other organizations are doing. That is what we Indian culture is bringing a change in Australia. That's what we call Indian diaspora's change. Although I created many slides, but I will not make it too formal. I will run a song in the end, which on Vasudev Kutumbakam. But अपना जो main culture है, the yoga which we are seeing. I was reading a news. 1 million plus Australians are doing yoga. In fact, the headline in Sydney Morning Herald was 1 million plus Aussies doing yoga. Although soccer and tennis are very popular still, but yoga is, almost there. So yoga कौन ला रहा है? It is because Hindu Council, BHP, RSS, so many activities we are doing. Now yoga is done in every parliament of Australia, in every council, in every park, in cathedrals, which was unseen 20 years ago. I remember when we started Art of Living here, we used to have 3-4 people in the course. Now we started with 2-3 teachers when we, me, my wife, and a couple of other teachers all over Australia, total 3 to 5 teachers. Now we have 200 plus teachers in Australia. And it's not just Art of Living Foundation, many other organizations, Brahma Kumaris are there, Isha Yoga is there, many other Australian organizations,
it's the some effect of all the work which cultural organization and community organizations are doing. That's what I want to say. Let me show you quickly my screen, and if I can play. See my screen? Visible? Yes, yes, it's coming up. Yes. Hasn't started yet. Still rotating around. Okay. Yes, it's come up now. Yes. Okay. So I created a few slides, but I will run past it. So what are the key challenges in Australia? Stress, anxiety and sleep disorder, which became very relevant during COVID era. Mental health is a big problem here. Domestic violence, climate and environment. Right? What are our options here? Go to the doctor, have some medicine, do some physical exercise, which Australians do most of the time, sports, some socializing, but it does not actually address the key issues, which are mental health, anxiety, sleep disorders. So what options we are left with? For the holistic well-being, it's a yoga and meditation. You know, in the 60s, there was a yoga teacher, Roma Blair. Yoga used to be seen as a religious exercise or some religious thing. That perception has changed. Who changed it? Our community organizations. The work all of us have done collectively. That's what has changed it. So that's what I was saying. More than 1 million Aussies practice yoga. Yeah. So who are these 1 million plus Aussies? Tradies, there was another article on tradies who are, leaving the tools to do some meditation and yoga. Professionals, doctors, moms, dads, people with disorders, even in detention centers, there are yoga happening, corrective centers, parliaments, everywhere we are doing. So actually, everybody is doing yoga here. So what are the positive impacts of yoga? Again, as we wanted to address, reduce stress, reduce anxiety, reduction in domestic violence. What are we improving? Improved sleep, mental health, well-being, healthy lifestyle, improved relationship, which doesn't actually limit just for your, it's not an exercise as people may think, that perception is also changing. It impacts in every aspect of your life actually. And that is seen, you become vegetarian, you leave smoking. Those are so many things which helping the nation actually, in the overall nation building. This is the video I wanted to show. Just tell me. Atulji, you have about 30 seconds. Yes, 1 minute. I will finish here. I think we are done with the time. Thank you all again. Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you, Atulji, for that very insightful talk. And I must just add, being a medical specialist myself, yoga abhi is even part of main research. So abhi it's looked at very methodically. जब हमें कितने सालों से पता है, कितने हजारों सालों से मालूम है योग का क्या benefit है और क्या नहीं है. So thank you very much for sharing that. The next speaker I would like to invite is Manoj Desai ji. Manoj ji has been serving the community for many years and is currently heading Seva Australia. There have been numerous national projects that have been coordinated
and significant seva efforts were made during the COVID crisis in India. So Manoj ji, over to you. Namaste everyone. Yeah, it's my privilege and honor to be part of this panel presenting on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. So quickly, I would like to share my screen. So can you all see my screen? Yes, all good. Okay. Yeah. So recently we celebrated 25 years of service in Australia. Australia being a country of migrants and multicultural society, we have been catering to all the communities that includes kids, senior citizens, Aboriginal community and refugee community. So, and we have two wings in Australia. One is Seva Australia, which caters to the local community needs, and Seva International Australia, which caters to the needs of outside Australia. That's mainly emergency services that we provide. So I'll quickly go on to these some of these slides, mainly covering the activities that we do as part of Seva Australia and Seva International. So one of the main activities that we do here is family support services. So as the name suggests, we provide services to the families in distress, in issues. I mean, when people migrate to Australia, they will have a lot of challenges, and in the process, they will get into some issues with the family. So we have a team of counselors and then psychologists, psychiatrists, and we also work with the local police and also take support from the family lawyer, etc., and provide the services for these families in distress. So we have an office in Wentworthville, close to the railway station, and then yeah. So I was talking about the issues, but whenever families come here, so before they get into issues, we want to make sure that I mean, they are well versed, not get into those issues. So in order for that, we conduct regular workshops such as positive parenting. It's mainly for the families, and apart from that, we also conduct regular workshops for senior citizens. It could be health related workshops or yoga, regular yoga classes, and we conduct regular picnics for them, just to make sure that they are, I mean, mentally and physically fit and also enjoy their life. And when it comes to new migrants, we have a lot of different workshops. So one of the popular workshops that we conduct as part of Seva is Crack Your First Job. So new migrants, definitely before they come here, they would not have the complete picture of Australia, Australian laws, how it works, and the market here. So they will have a lot of concerns. So in order to address those concerns, we conduct these Crack Your First Job and make sure that they get all the information that they need before they start their first job. And we also have been conducting the similar workshop for people who want to start their own business. So that's another workshop called Crack Your First Business. So wherein they get to know about the Australian market and what is required to start a business. And similarly, we also address or take care of their needs as far as Australian laws are concerned, and also the real estate market. So we have been conducting several workshops on these different topics as well. So apart from that, as I mentioned, we address or we serve the community on emergency relief and rehabilitation. So whether it is Australia or outside Australia, whenever there is a natural calamity
or whenever there's a emergency need, Seva volunteers reach there on the first, be the forefront and provide all kind of support. So recently we had this flood affected areas in northern part of New South Wales, where our volunteers rushed and then provided the necessary support. And time to time we get the support from the local government councils as well. So some of the data that is being shared on the screen, you can quickly go through in the interest of time. And during the COVID, especially all our Seva volunteers and the Seva core team, they worked really hard, whether it is outside Australia or inside in Australia. In Australia, we work with all the like-minded team and then run a big campaign for whether it's seniors or international students, whoever wanted food or medical support or groceries. We provided them mental health support, education support, and then vaccination awareness drives were also conducted. And as far as India is concerned, whether it is oxygen concentrators or oxygen generation plants or mobile vans. So we raised funds from the community as well as Western Australia government grant was available for this. So we could raise about 2.2 million and then provided support all across India. And we provide basic computer training for refugees in coordination with the Jesuit Refugee Services. And we also conduct all the digital awareness campaign for the needy people. Blood donation drive and 30 seconds to 1 minute left, Manoj. Yeah, sure. Thanks. Blood donation and bone marrow registry. We have been on the forefront, and Seva is like one of the top organizations doing the blood donation and plasma donation and bone marrow registry. And we work with the local councils and do the cleanup drives across Australia. And tree plantation again once in a year we conduct these tree plantation again with the in coordination with the local councils. And then Seva Milan, these happen once in a month, and then all the volunteers come together. It happens like a Karyakarta work as well. We enjoy and also learn a lot of new things there. In the Seva Day, we distribute food for homeless people. And outside Australia, we have been doing, tribal women empowerment programs, educating them, and also sponsor a child, which is one of the popular programs wherein we raise funds through donations as well as Mangal Nidhi, another concept. We raise funds and then send it to the needy for different projects. School kit program is one such project wherein people can donate for school kit. And disaster relief, which I earlier mentioned, whether it happens in Australia or outside Australia, we cater to the emergency need and work on relief and rehabilitation. And data, some of the data I have shared here. So thank you very much for your time, and wish you Dharmaki Jai. Thank you, Manoj, for that lovely presentation. और मैं ये भी कह सकता हूँ जो सेवा ऑस्ट्रेलिया की रेपुटेशन है गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, समाज के साथ, it's formidable, बहुत strong है, and it has a fantastic reputation. अभी मैं रेखा जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. तो रेखा जी has been a pioneer in uniting and gathering Hindi poets across Australia. She's a prolific speaker and has published widely, and I will let her do more of the talking and not me. So Rekha ji, over to you. बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते. सर्वप्रथम मैं ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक स्वामी एबोरिजिनल्स और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स की सभी पीढ़ियों, भूत, वर्तमान और भावी को प्रणाम करती हूँ. इससे पहले कि मैं कार्यक्रम का संचालन
सुभाष शर्मा जी को सौंपूं सिर्फ 4 पंक्तियां वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा विषय है सिर्फ भारत में ही जिसकी चर्चा हो सकती है, और भारत का ही इस क्षेत्र में नाम है। विश्व शांति का पाठ पढ़ाता भारतवर्ष हमारा, वसुधा है कुटुंब सिखलाता भारतवर्ष हमारा, सदा अग्रणी योग ध्यान में, आईटी और गणित में, गर्वित है हम मातृभूमि पर, शत शत नमन हमारा। तो इसके साथ ही मैं सुभाष शर्मा जी को मेलबर्न से आमंत्रित करती हूँ और वो आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगे। हमारे 4 कवि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं, प्रांतों से जुड़े हैं, उनका परिचय देंगे। मैं सुभाष जी के बारे में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और दिल से कवि हैं और बहुत अच्छे संयोजक भी हैं। 20 वर्षों से मेलबर्न में साहित्य संध्या का आयोजन करते हैं और उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी, आप आगे का कार्यक्रम संचालित करें। सुभाष शर्मा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत आभार इस परिचय के लिए और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध शुद्ध जनों का जो उपस्थित है। मैं इस सत्र का लघु सत्र में 4 कवियों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और ये जो है अनेक शहरों से लिए गए हैं। और सबसे पहले जो यहाँ के आज की जो थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये कविताएं उससे ही जुड़ी हुई होंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ पर्थ की कवित्री संगीता बंसल जी को। संगीता बंसल जी वैसे तो व्यवसाय से वो फार्मासिस्ट हैं, लेकिन कविताएं, कहानियां लिखती हैं, देश विदेशों में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं और रेडियो से जुड़ी रहती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी जो कविता है वसुधा का कुटुंब मुझे गर्व है इस धर्म पर, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है। नमस्कार आप सभी वरिष्ठ जनों को। मेरी कविता का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा का कुटुंब, गर्व है मुझे इस धर्म पर, गर्व है मुझे इस कुटुंब पर, सिखाता है जो सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, स्वीकृति, अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम की, करता है जो आत्मसात, करता है जो आत्मसात, उदार अनासक्त हो भावना विश्व बंधुत्व की, करता है प्रगाढ़ एक डोर है संपूर्ण विश्व, करता है प्रोत्साहित भारतीय दर्शन, पारस्परिक सद्भावना गरिमा को, गर्व है मुझे इस धर्म पर, स्थिरता समझ शांति को पोषित कर, करता है सृजन, स्थिरता समझ शांति को पोषित कर, करता है सृजन, विविधता को जिसने लगाया है गले, किया है स्वीकार लोगों, संस्कृतियों और विश्वासों के अंतर को, गर्व है मुझे इस धर्म पर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर, जहाँ गरीबी, असमानता, संघर्ष, चुनौतियां हैं हजार, जहाँ गरीबी, असमानता, संघर्ष, चुनौतियां हैं हजार, आने वाली नस्लों के पतन के अनेक हैं द्वार, वसुधैव कुटुंबकम का, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है संबल, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है संबल, सूर्य की प्राण शक्ति, सूर्य की प्राण शक्ति करती है निर्वाह जिस प्रकार, सूर्य की प्राण शक्ति करती है निर्वाह जिस प्रकार, हो अवतरण नव युग का उसी प्रकार, पृथ्वी पर विकास मानवता का उद्देश्य है जिसका, पृथ्वी पर विकास मानवता का उद्देश्य है जिसका, गर्व है मुझे स्वीकार की जिसने सर्वभौम सहिष्णुता, गर्व है इसका मैं एक हिस्सा हूँ, गर्व है मैं हूँ एक इसका हिस्सा हूँ। आभार आप सभी का। बहुत सुंदर प्रस्तुति और आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं दूसरे जो कवि हैं उनसे परिचय आपका कराऊं। वो इस ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही युवा साहित्यकारों में उनकी गिनती होती है, बहुत चिंतक हैं और विज्ञान से जुड़े हुए हैं वैसे, और
छत्तीसगढ़ की धरती से आते हैं। वो छत्तीसगढ़ की धरती पर उनको बहुत मान है, गुमान है, देश पर अभिमान है। वो ऐसे व्यक्ति हैं और उनको पुरातत्व से भी बहुत लगाव है और पुरातत्व पे उन्होंने एक शोध पत्र लिखा जिससे उनको जो है अवार्ड मिला और अनन्य पत्रिका से भी वो जुड़े रहते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा परिचय न देके मृणाल जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें दूसरी ढंग में जैसे आप अक्सर करते हैं। मृणाल जी। प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद सुभाष जी। अनिल जी आपको प्रणाम करता हूँ और रेखा जी आपका भी धन्यवाद इस मंच पर समय देने के लिए। और जैसे आज का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, से हम सब अब लगभग सभी जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद से लिया गया एक श्लोक का अर्ध श्लोक कह सकते हैं जो है, परंतु इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग हितोपदेश की कथा में आता है। एक ऋणात्मक उपयोग जो है वसुधैव कुटुंब का, जो एक लोमड़ी एक हिरण को फंसाने के लिए, खाने के लिए करती है। परंतु भारत ने हमेशा विश्व को विस्मित किया है और हम जो है वो ऋणात्मकता से भी जो है वो अच्छी चीजें निकालने में माहिर है। हम ऐसा लोहा बनाने में माहिर है जो जंग नहीं लगता। तो सीधे मैं वसुधैव कुटुंबकम की जब भी बात आती है तो बात प्रवासियों पर जरूर आती, क्योंकि हम प्रवासी हैं और ये हम पर ज्यादा लागू होता है। तो मेरी कविता एक प्रवासी विहंग पर है। 1 मिनट की छोटी सी कविता का एक अंश है। समय को देखते हुए मैं आपके सामने उससे सीधा रखता हूँ। प्रवासी विहंग कविता है। इसका शीर्षक, और उड़कर क्या करोगे लौट आओ भू पर विहंग। और उड़कर क्या करोगे लौट आओ भू पर विहंग। बहेलियों से बचते रहे, उड़ते रहे, थकते रहे, नहीं चुग्गों का फिक्र, आवारगी भी करते रहे। बांट लो किस्से सभी बैठ कर अपनों के संग, लौट आओ भू पर विहंग। भय से मिली स्वतंत्रता का मोल होता ही नहीं, स्वांतः सुखाए जीने से उद्धार होता है कहीं। इन सफेद परों पर अब चढ़ने दो मिट्टी का रंग, लौट आओ भू पर विहंग। आंखों से दिखते नहीं आकाश में खो जाते हो, आंखों से दिखते नहीं अब आकाश में खो जाते हो। अपनों में रहकर भी अपरिचित से हो जाते हो। पतझड़ बीत चुका अब, पतझड़ बीत चुका अब, भरो नीड़ में नई उमंग, लौट आओ भू पर विहंग। धन्यवाद। वाह वाह वाह, लौट आओ विहंग, क्या बात कही आपने, जो हर व्यक्ति को छू गई होगी, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर माइग्रेंट हैं और उनको सीधे छूती है। और मैं ज्यादा विलंब न लेते हुए अगले कवि जो ऑस्ट्रेलिया की शान है, मेलबर्न की शान है, मेलबर्न साहित्य संध्या से जुड़े हमारे वरिष्ठ कवि श्री हरिहर झा जी। हरिहर झा जी, जहाँ जैसे लोग कहते हैं कि जहाँ न जाए कवि रवि वहां जाए कवि, तो जब परिकल्पनाओं की बात आती है तो हरिहर झा जी की कविताओं में वो देखने को मिलती है। और आप अनेकों सम्मान आपको मिल चुके हैं, अनेकों पुस्तकें आप लिख चुके हैं और ये साहित्य संध्या के स्तंभ है। तो मैं आपसे हरिहर झा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कविता बहुत हो गई नफरत साथी प्रेम सुधा अब बहने दो, उसका प्रेम सुधा आप बहाएं और लोगों का मन जीते। हरिहर जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। झा जी आप म्यूट हैं। धन्यवाद सुभाष जी इस परिचय के लिए। मैं सीधे कविता पर आता हूं। पूरा विश्व एक परिवार है तो फिर नफरत क्यों। बहुत हो गई नफरत साथी प्रेम सुधा रस पीने दो। बहुत नाच ली मौत यहाँ अब जियो और जीने दो। बहुत हो गई नफरत साथी
ये विश्व एक मधुशाला है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। विश्व एक मधुशाला, खूब पिलाने आती हाला, कुटिल निगाहों से घबराती डरती साकी बाला, मन मलिन जो धोकर आए, समदृष्टि जो पाले, चंदा सूरज साकी बनकर सोम चषक में ढाले, बच्चन जी के साथ हमें भी, हरिवंश राय जी बच्चन, बच्चन जी के साथ हमें भी जाम छका छक पीने दो, सबको गले लगाओ या अब जियो और जीने दो, बहुत हो गई नफरत साथी। अब राजनीतिक दृष्टिकोण, विश्व शांति का दुश्मन आए तो, विश्व शांति का दुश्मन आए, करो सिंह का गर्जन, द्वेष भाव ना रहे, सफल हो जाए ज्ञान का अर्जन, विश्व सुखी हो जाए हमारे प्रेम भाव के दम से, चुपड़ी दो दो खाने की लत पाप कराए हमसे, रूखी सूखी खाकर यारो ठंडा पानी पीने दो, जीवन सादा उच्च विचार, अब जियो और जीने दो, बहुत हो गई नफरत साथी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर जी। और जो काम रेखा जी को करना था, रेखा जी बहुत सुंदर। जी सुभाष जी, स्वागत है आपकी कविताओं का। एक्चुअली अनिल जी, तब मुझे जो है आदेश आप दे रहे हैं, ये कार्त रेखा जी को सुनानी चाहिए थी कविता, पर वो नहीं सुना रही है, फिर मुझे ऑर्डर मिला तो मैं सुनाता हूँ। कुछ मुक्तक सुना रहा हूँ वसुदैव कुटुंब से जुड़ी हुई थीम पर। तो हो जिसमें सब की सुनवाई, उसे दरबार कहते हैं। हो जिसमें सब की सुनवाई, उसे दरबार कहते हैं। जो दीनों की सुने पहले, उसे सरकार कहते हैं। खुशी में तो सभी के साथ होते हैं बहुत, लेकिन हो दुख में सब दुखी जिसमें, उसे परिवार कहते हैं। हो दुख, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो गूंगों को भी देवाणी, उसे अखबार कहते हैं। जो गूंगों को भी देवाणी, उसे अखबार कहते हैं। जो दिल से दिल न जुड़ने दे, उसे दीवार कहते हैं। दया से त्याग से ही धर्म का पौधा पनपता है। दधीची के स्वयं के दान को उपकार कहते हैं। दधीची के स्वयं के दान को उपकार कहते हैं। जहाँ सुख दुख का मेला है, उसे संसार कहते हैं। न खोने का हो डर जिसमें,
उसे अधिकार कहते हैं। जो हिस्सा दे समझ भिक्षा उसे दुत्कार कहते हैं। जो सपने दिन में हो पूरे उन्हें साकार कहते हैं। मुझे पता है अनिल जी, बस 2 ही पद हैं, थोड़ा समय ले रहा हूँ। न जाने कितने नर नारी धरा पर भूखे सोते हैं। न जाने कितने नर नारी धरा पर भूखे सोते हैं। है न्यायालय बहुत लेकिन वो हक पाने को रोते हैं। जहां लाशों के व्यापारी उन्हीं लाशों पे सोते हैं। वहीं कुछ लोग कंधे पर स्वयं की लाश ढोते हैं। अरे वहीं कुछ लोग कंधे पर स्वयं की लाश ढोते हैं। सबका पेट भर दे उसको पालनहार कहते हैं। किसी का दर्द जो हर ले उसे उपचार कहते हैं। किसी को घर किसी को देश की परिवार लगता है। अरे किसी को घर किसी को देश की परिवार लगता है। मगर हम भारतीय इस विश्व को परिवार कहते हैं। मगर हम भारतीय इस विश्व को बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, संगीता जी, धन्यवाद हरी सुभाष। जी, बहुत सुंदर रचनाएं आप सबकी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल अस्थाना जी, मैंने ये क्षमा कि करें, सारी समय थोड़ा कविताएं ज्यादा वसुदेव कुटुंबकम की संकल्पना पर थी। जी, एक बार बहुत पुनः तालियां। बहुत धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद रेखा जी। मुझे लगता है जो समय दिया गया वो भी कम पड़ गया, लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं अभी अगले स्पीकर को बुलाना चाहूंगा, भागवत चौहान जी। वो ऑस्ट्रेलिया में 1977 में आए थे और फाउंडिंग डायरेक्टर हैं हिंदू काउंसिल ऑस्ट्रेलिया के। उनका बहुत बड़ा हाथ है अपने हिंदू स्वयं सेवक संघ के काम में, एकल विद्यालय, कर्म किचन और हिंदू बेनेवलेंट फंड। तो भागवत जी, अभी आपको नमस्कार। देखना। सबसे पहले इतनी अच्छी कविताएं हो रही हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। एंड रियली अनिल जी, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, सो वंडरफुल। अभी मैं, क्योंकि दिवाली के बारे में बोलने के लिए मुझसे कहा गया, तो आई जस्ट शेयर स्क्रीन एंड देन यू सी द हाउ वी हैव द फायरवर्क दिवाली एंड होपफुली यू गेट देयर एंड देन आई स्टार्ट माय। जोरदार कार्यक्रम बन गया। बीच में डाउन चला गया था अटेंडी, फिर ऊपर उभर आ रहा है, 24 तक आ गया था नीचे, 45-46 चला है। अटेंड करने लोग ऑनलाइन। Thank you. So that was the Deepavali, which we are celebrating last for 25 years. Before I start, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I would like to start by paying my respect to the traditional owner of this land, the elders past and present and emerging. I would also like to acknowledge the presence of 35 millions of Bharatiya settled in more than 100 countries. And finally, I would like to give a hearty congratulations to Antarashtriya Sahyog Parishad, which has given this opportunity to us. इसके साथ ही which is not in my speech, that remember me one of the episode, जब मैं शुरू में ऑस्ट्रेलिया आया उसके कुछ साल बाद ही एक न्यूज आई सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में। उसमें एक फोटो आई जिसमें था कि कुछ डॉक्टर्स की फोटो थी, और तो मुझे ये लगा कि बड़ी अच्छी चीज है, कोई इंडिया से कोई डॉक्टर्स आ रहे हैं एंड वी शुड मीट देम। तो जब मैंने वो न्यूज पढ़ी तो दैट वाज नॉट डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया, दैट वाज एन इंटरनेशनल डेलीगेशन ऑफ डॉक्टर्स व्हिच वाज हेल्डिंग इन सिडनी, एंड इट हैपेंड टू बी दैट द कंट्री जहां से डॉक्टर्स आ रहे थे, यूके से हों, चाहे फिजी से हों, न्यूजीलैंड से हों,
या इंडिया से हों या ऑस्ट्रेलिया से हों, वो मोस्टली डॉक्टर्स जो है सारे इंडियन थे। तो दैट वाज सरप्राइजिंग, दैट फील्स दैट कि हमको कितना है कि वो डॉक्टर्स, हमको लगा इंडिया से, लेकिन यूएस से भी जो डॉक्टर आ रहे थे रिप्रेजेंट करने के लिए उस सेमिनार को, वो ऑस्ट्रेलियन, वो अमेरिकन नहीं थे, वो इंडियन थे। So that's a proud moment for us that we are so successful and so dedicated to the cause of the devoted country. And that continue with that gives us that we are all proud of our ancient culture and Sanatan values, which taught us that God is everywhere. And every single one of us, there are values that have given us the conviction to practice the value of Vasudev Kutumbakam. That whole word is one family in our adopted country. That's the one of the things I think हमारा धर्म है उसने हमको दिया है. And Hindu Council is proud to have celebrated the first Deepavali festival in 1998 in Fairfield Showground in Sydney. In last 25 years, it has become the biggest Indian cultural celebration in Australia and has spread major cities across Australia. It is being celebrated in New South Wales Parliament, Federal Parliament in Canberra every year. The Opera House has get lighted on Deepavali by the state premier. Many councils across Sydney are also celebrating Deepavali in Sydney. Last year, we had 2 days fair in Sydney and was attended by the state premier and leader of opposition. 3 years back, it was also attended by the last Prime Minister, Mr. Scott Morrison. Last year was the first time it was also celebrated by the Governor General of Australia at his official residence in Canberra. It was attended by many Indians across Australia. Now it has been also recognized a Hindu New Year by our major corporation and is being celebrated by Australians regardless of their faith. Like we have seen that even the biggest bank here, Commonwealth Bank, they had annual event of Deepavali, which is like recognized as one of the for the Indians and the Australians. So that this festivals, we are able to share our values of Satyameva Jayate, meaning the win good over evil, light over darkness. We believe that our message of Vasudev Kutumbakam is being acknowledged and appreciated all over the world. We are grateful to have our values recognized in our great and adopted country of Australia, and are looking forward on sharing more of these values and culture in future also. So this is what I think that today's seminar, which we have organized by Antarashtriya Sahyog Parishad, that has given us the opportunity to share all over the world what we are doing. Now, and I also, thanks to Balisa Agrawalji, which I have opportunity to meet him long time back, and Shyam Parandeji, and because I'm this work for many years, and this work has been done, and they're always support for the Hindu Council and Hindu community and Australian Indian in Australia. Thanks to all this devotion, and really appreciate that. And I just conclude with one prayer. Asto ma sadgamya, tamso ma jyotirgamya, pure ma antam gamya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Namaskar. Dhanyawad, Bhagwat ji, and dhanyawad for all of your hard work and dedication over the years. Hindu Council Australia का काम और सारा कुछ आपने बहुत मेहनत की है, तो धन्यवाद। नहीं अस्थाना जी, इसमें सभी लोगों का सहयोग है, संजीव जी हैं, बहुत लोगों का सहयोग है इस कार्य में, और आई एम रियली प्राउड that we have got the opportunity to start Seva, even all this work here, Hindu Council work and HSS work, and now we have got, I'm really proud that we in Australia, growing population है एक तो सबका सहयोग है, that we are in all over Australia. Sorry, Bhagwat ji, I'll have to move on. Sorry. Sure. धन्यवाद. Sure. Thank you. ठीक है, तो मैं अभी डॉक्टर संतोष यादव जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. संतोष यादव जी is the founder and director of Ayurveda Yoga Wellness Clinic in Melbourne. He's the head of the Ayush Information Cell, Ministry of Ayush in Australia. Dr. Yadav was the president of the Australian Association of Ayurveda from 2016 to 2021. ये सारा परिचय नहीं है, लेकिन संतोष जी, over to you. Thank you, Dr. Anil Asthana ji. सबको नमस्ते.
मैं एक छोटे से श्लोक आयुर्वेद का डॉक्टर हूं मैं, और ऑस्ट्रेलिया में 2007 से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैं छोटा सा परिचय दूंगा कि जब हम शुरू किए 2007 में प्रैक्टिस, तो आयुर्वेद के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी यहाँ होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काम किया, मतलब थ्रू द एसोसिएशंस एंड थ्रू द like a support of the community, created the awareness about the Ayurveda among that. And आज हमें कहने पे बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम जैसे हमारे जैसे डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया में लगभग 200 से 300 हैं। और मैं अपनी बात करता हूं, आज हमारे पास कम से कम 10,000 डाटाबेस क्लाइंट मतलब पेशेंट्स हैं, जिसमें कि 60% के आसपास हमारे ऑस्ट्रेलियंस हैं और 40% के आसपास हमारे इंडियन, श्रीलंकन, चाइनीज, वो अदर कंट्री है। तो मतलब मैं कहना चाहूँ कि आयुर्वेदा की ग्रो बहुत फास्ट हुई है इन सिंस कपल ऑफ ईयर एक्चुअली। और जैसा आप देखते हैं कि जो भारत सरकार ने 2014 में इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जब गठन किया, मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन में पूरे दुनिया में इस पैथी को बढ़ाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक मैसेज है कि अगले कपल ऑफ डिकेड में कई कंट्री में ये पैरेलल सिस्टम ऑफ मेडिसिन होगा आयुर्वेद एक्चुअली। तो उसी के तहत यहाँ पर 2000 मेलबर्न में 2019 में हाई कमीशन ने मतलब यहाँ पर 125 ईस्टर रोड पर एक आयुष सेल का गठन किया। आयुष सेल मतलब आयुष इंफॉर्मेशन सेल। द रोल ऑफ आयुष इंफॉर्मेशन सेल ये होता है कि जैसे सेमिनार, वेबिनार एंड मेनी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, और जो भी एक्टिविटी हो रही है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी में, उसको इंडिया के साथ कोरिलेट करना। तो अभी विगत कुछ दिनों में हमने मतलब जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था उसमें आयुर्वेदा के चैलेंजेस क्या थे, अपॉर्चुनिटी क्या थी, वो हमने शेयर किया था मिनिस्ट्री से। मिनिस्ट्री ने फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन कराया। और उसी के मतलब हम लोगों के काफी प्रयास से और यहाँ पर जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एक एकेडमिक चेयर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुए हैं प्रोफेसर गोपालन। वो एकेडमिक चेयर आए हैं जो कि अबाउट आयुर्वेदा के रिसर्च और एविडेंस बेस के लिए उनको 3 साल के लिए यहाँ भेजा जा रहा है यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में, नीकम के अंदर। तो मुझे ये कहना बहुत गर्व है कि मतलब अब जो हमारी जो यहाँ पर पैथी थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और यहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट है वो इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है। और हम इसमें डे बाय डे इसमें काफी विकास हो रहा है और लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद सारे लोगों को ये समझ में आया कि मतलब हमें होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो आयुर्वेदा हमेशा होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है। जैसे कि कहा जाता है कि आयुर्वेदा के 2 प्रायोजन है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद हमेशा प्रिवेंटिव होता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और इसके बाद अगर कोई आतुरस विकार प्रशमनम च, अगर कोई रोगी हो गया है तो उसके रोग का निवारण करता है होलिस्टिक अप्रोच के साथ। एक्चुअली ये नहीं कि खाली दवा दे दिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेदा का पूरा एक प्रावधान होता है। और यहाँ पर जो आयुर्वेदा है वो अनरेगुलेटेड मेडिसिन, जैसे डॉक्टर को पता, डॉक्टर नीरज थानो को पता होगा, देयर इज 2 टाइप ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया द मेडिकल सिस्टम, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड इज कंट्रोल्ड बाय द APRA, unregulated is controlled by the associations. And in Australia there is many associations that control the Ayurveda actually, such as the Australian Association of Ayurveda, ATMS, Australian Traditional System of Medicines. So these associations are providing the provider number to the practitioner, and they start the practice like India how you do actually. Only that the problem to the medicines की थोड़ी सी यहाँ पर लॉ रेगुलेटरी इशू के साथ थोड़ी सी समस्या है जो कि धीरे धीरे। संतोष जी 1 मिनट है। ओके, तो रेगुलेटरी इशू का जो चल रहा है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है। टीजे लिस्टेड मेडिसिन यहाँ बनना शुरू हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिससे कि हम अधिक से अधिक मतलब आयुर्वेद को बढ़ा रहे हैं। और मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करूंगा, जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है टू रिकॉग्नाइज ऑफ आयुर्वेदा टू द मेडिकेयर सिस्टम, APRA एंड अदर में,
तो शायद मैं डॉक्टर अनिल जी को भी अपने टीम में रखा है। हमारे जो आयुष इंफॉर्मेशन सेल के टीम में मेनी ये हैं, डॉक्टर संजय राघव है, कपिल आप लोग जो हैं, मैं आप लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ अभी उसके साथ कनेक्ट कराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि इसको आगे बढ़ाने में सरकार के ऊपर प्रेशर करें, जिससे कि हमारी पैथी जो है यहाँ पर मेन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आए। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, वेरी गुड समरी। तो आई थिंक मेन क्या है जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कनेक्टेड है सब। गुड गुड, थैंक यू। ओके, हाँ जी, धन्यवाद संतोष जी। We'll move on to Vikrant Thakur ji. Vikrant Thakur ji is director at Sharp Instincts, which is a media agency based in Melbourne. He has a Daitva of Sangh in Victoria Vibhag in Australia, and I'd like to hand over to Vikrant ji. Thank you, Anil ji. First of all, I would like to congratulate ARSP in organizing such a empowering session. As you have all heard, that there are many diaspora organizations working in Australia across various fields very successfully, running number of initiatives. In fact, if I look at just Melbourne alone, there are about 300 diaspora organizations. As you have heard in yoga, Seva International is doing a lot of work in the Seva work, HCA is doing work, Hindi Niketan, you heard from Santosh ji. So there are a number of organizations, so I won't probably go into that. HSS also has about 60 odd shakhas in Australia, besides children's camp and all other activities we tend to do. But I'll probably try to focus more on the conceptual concepts of Vasudev Kutumbakam and what we can do as a diaspora to propagate this concept even more further. So as you have already heard this shloka from Upanishads, Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kasya Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. So the meaning, may everyone be happy, may everyone be healthy, may everyone see what is favorable, and may no one suffer. So this is the gist of Vasudev Kutumbakam. This is the gist of our entire cultural values. In summary, what it means is that we are all connected at a deeper level. So if we are all connected at a deeper level, if something wrong happens with anything or anyone with whom we are connected, we get a pain. We can never be happy. And this not only includes the human race, it also includes the entire animal race. It also includes all the fauna and flora. So the concept pretty much tells us that we have to remain in equilibrium to have a happy and healthy life, which is nothing else. But if you look at our family, if someone in our family is not happy, we get pain. We can never be happy if our brother, sister, parents are not happy. We get an equal amount of pain. So in Vasudev Kutumbakam as well, if even there is one country, one state, one nation which is doing very well, but at the expense of others, if they are doing well, they can never be happy. So that is probably one key part we have to probably understand, that our body, and the same is true with our body. If our hand is sick, we can never be happy. Our mind senses it altogether. So the way our body resonates, our body parts resonate with each other, we need to resonate within each other, and within us as well, to make this entire place a very healthy place, to make this entire world a very happy place. This concept, in fact, is being used widely in our spiritual world, in our personal lives, but also in our corporate lives these days. So you would have probably understood that there is a
latest global warming we are talking of. We are talking of sustainability. We are talking of emissions, and a new system is being propagated to eliminate all these things. And that system is called as a carbon credit system. So this carbon credit system is nothing but what it talks about is that if we have, or someone has created more emissions, has created more pollution, all he does is at some other place in our country or in this entire world, we have a positive impact. We create some positive credits of the environment. So even the success of a corporate life, even the success of I would say the environmental life lies in working together. That is the concept. But the main point I want to stress here is that there is no doubt about the fact that all the woes of the world lies in adapting and adopting this concept of Vasudhaiva Kutumbakam, and so that we can all live happily. But the question is, as a global Indian diaspora, which is across the globe we are, what can we do to achieve that quickly so that the message spreads across? So what is our role as a global Indian diaspora to propagate this message much more quickly? And you have already heard about this, that 33.5 million Indian diaspora lives across the globe, and the sun never sets for Indian diaspora. So we cannot have a better chance. We cannot have a better chance to affect this concept globally, because we are spread across the globe and the sun never sets for us. So let us utilize this opportunity, because 33.5 is in fact we'll have to wrap up. We'll have to wrap up soon, Vikrantji. Yeah, so that's fine. So Anilji, I'll do that now. So what can we do to affect this? Our lifestyle, our behavior, our values, which we experience, is what is going to teach this concept in the countries we are living in. So I think the best way to propagate this concept is to live by the values of this concept in our lives, so that people and communities around us can see this in action and we make this world a safer place. I'll just conclude by two personal simple examples. I met a member of parliament in Melbourne, and this was a Teachers' Day event, and I just recited this shlok: Guru Gobind dono khade kako lago paye, balihari Guru aapke Gobind diyo milaye. So after that event was over, he came to me and he said, "What is the?" And I explained the meaning. He said, "Can I note this down?" So he noted it down. He said, "I'm noting it down because I want to go back to my wife. She's a teacher, and I want to narrate it to him." Which he went, and next time I saw him, he said, "Look, Vikrant, my wife was highly impressed by that note." So she's a teacher, and obviously I told him this comes from the Indian culture, and she's now excited to go to Bharat to see Bharat. So after about 2 months, I saw him again, and he said, "Look, we are going to India." So my point is, our own values, our own experience and behavior is what is going to drive this concept of Vasudhaiva Kutumbakam across the globe in a much more quicker and much more bigger way. Thank you very much. Thank you, Vikrantji. Thank you, and a lot of food for thought there. In the interest of time, I'll move on to our next speaker, who is Samir Pandey. Samir Pandey was first elected to the City of Parramatta Council in 2017. Councillor Pandey was elected Lord Mayor in May 2023 as the city's first Lord Mayor from the Indian subcontinent. His vision is for a healthy, livable, smart and inclusive city. And I will now hand over to Councillor Pandey. May I request anyone who's not speaking, please put your mic on mute. Councillor Pandey. Thank you, Anilji. Thank you very much. And good evening, good afternoon, and good morning, wherever you are. My name is Samir Pandey. I'm the Lord Mayor at City of Parramatta, which is the second largest economy in the state of New South Wales. You'll have to excuse me with the light because I was at an event, scheduled event, and I just stepped out. I'm in my car, and I'm just going to say a few words from here.
Before I begin, I would like to acknowledge the traditional owners of the land and pay my respect to elders past, present, and emerging. And for those who are not aware of this acknowledgement, in Australia, the history of the indigenous people goes back to 50,000 years. And in our official capacity, when we speak, we do begin by acknowledging the traditional owners of the land, which are the indigenous people. First and foremost, can I also extend my deepest gratitude to the organizing committee, which has organized this event. Anilji, yourself from here, but everyone else who is involved in promoting, and their tireless efforts in promoting the Indian culture and preserving its tradition, and my deepest appreciation for what you do through this platform. We all know India has come a long way in the last, since independence. India has become a vibrant, powerful, and developing nation. A nation that has lifted millions out of poverty, a nation heading to be the fastest growing economy in the world, a nation, a young nation with 65% of its population under 35 years, and a peace-loving nation, but with still a strong military and space capabilities. And this is one of the things, the reason I mentioned this is, again, this is what has made India a leader among many other countries. The success of India lies in its diversity. And I'll speak about the diversity that we have in the LGA of Parramatta, where I am the mayor. The success of India lies in its diversity, in its technology, in its education, in its industries, in its youths, in its within its villages. And this is what we in Australia as well, we are trying to achieve. We are trying to achieve the success by being inclusive, by celebrating the diversity that we have in the country. In city of Parramatta, which is one of the most diverse local government areas in Australia, we are proud to be home to a significant Indian community. 5.5% of the people who live in our city are from, 11.2% of the population in the city are from the Indian diaspora. There are suburbs like Harris Park, for example, where 45% of the population are from the Indian background. Little India, some of you might not be aware, or some of you will be aware that there are streets in Harris Park, which is one of the suburbs, which has been branded as Little India. And this is the first Little India, I believe, in the country. When Prime Minister Modi ji was here, he unveiled a plaque towards Little India in Parramatta, which is very significant. It is very significant for the Indian community and Indian diaspora, and which also reflects on the enormous contribution people from Indian diaspora has made in this region. Few years ago, we also had a statue of Mahatma Gandhi ji, which was unveiled by the president at the time, the Indian president at the time. So again, it reflects on the contributions that people from Indian background have made in the CBD, in Parramatta area. As a council, we acknowledge. I'm obviously from Indian background, but city of Parramatta has 58% of our population is diverse, is from multicultural background. They have some connection overseas, and this is what makes Parramatta, which is the city, the most diverse LGA, which is the local government area in the country. I'll give you some numbers which might help you to understand how far the Indian community has come in the past 20 years in New South Wales. Today, our population is approximately about 800,000, which is a significant percentage. It's 3.1% of the Australian population. And Australia and India benefit from a long-standing relationship. There are a number of agreements which has been signed, and a number of visits by ministers and the Prime Minister himself has strengthened the commitment and relationship between India and Australia in the past few years, in the last 5 years, I would say. In late 90s, our population here was 100,000.
and it's 800,000 now. And you can see again, obviously that's been a big jump in the past decades, and majority of that migration has happened in the last decade. So although we are new, we still have been punching above our weight when it comes to a number of areas, whether it's technology, whether it's legal profession, and now in the last few years in politics. There are a number of politicians from Indian background, and which is very important. It is absolutely important and vital that the parliament, the local government, the federal government, the state government reflects the diversity that we have in the community. There are a number of other metrics and indicators which shows that India-Australia relationship has strengthened over the last several years. India was Australia's 7th largest trading partner, with two-way trade valued at 24 billion, and our 6th largest goods and services export market valued at 16.9 billion. India was Australia's 3rd largest services export market. There's also a number of initiatives like the ECTA agreement. Also, the Australian government has recently endorsed an economic strategy to 2035 with India, which is called Navigating from Potential to Deliver in 2018 to a roadmap for deeper economic integration with India. And these are all different measures which the Australian government has been taking over the last few years to strengthen the relationship with India. Anilji, when you let me know when my time is done, so I'll be happy to pause. Yes, thank you, Pandeyji. I'd say another 30 seconds if you don't mind. Sure. So I'll conclude by saying this, that the city of Parramatta is very diverse, very inclusive, and the Indian population has made significant contribution in the LGA. This Indian population, not only in the area of Parramatta, but across New South Wales and Australia, Indian population continue to make a significant contribution in a number of areas, whether it's business, whether it's technology, whether it's politics, whether it's media, and I think which is very, very pleasing for us to see. There is a number of areas where we can do a lot more than what we're doing. But I think at this stage, I'm very pleased to see the contribution that Indian diaspora is making in city of Parramatta and in Australia. I live in city of Parramatta, and if we can be of any assistance, or for that matter, New South Wales or in Australia, if I can be of any assistance, please contact us. But I wish you all the very, very best, and thank you for having me here today. Thank you. Thank you, Councillor. And firstly, congratulations on your accolades and your commitment to joining us from your car. It has not gone unnoticed. And I think you've made a very important point about having representation in policy-making spheres and government spaces and local bodies. So I think your words of encouragement will go a long way. Thank you, Doc. Thank you, Councillor. Before I go on to the next speaker, I mean, we've spoken about social organizations, community organizations, seva, all sorts, but one aspect has not been mentioned, which I feel is very important for the success of our Indian diaspora, and that is our family structure at home. Our family structure, there's been a lot of research from the UK and the US, which can demonstrate that the cohesiveness, the parenting skills, and the relationship closeness that the family imbibes, our values imbibe, have a significant element of success on our subsequent generation. And I can say from my experience, being a 3rd generation Indian out of Bharat, मुझे मार पड़ती थी अगर घर में मैं English बोलता. So that went a long way for me, and I'm very grateful to my parents. So with that, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें मतलब विदेश में रह के हम लोगों को अपने देश की बहुत ज्यादा याद आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये हमने कितने के हमसे हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य। Sorry, वो थोड़ा डिस्कशन बाद में हम लोग रख लेंगे। Sorry, इंटरजेक्ट नहीं करना, लेकिन टाइम का थोड़ी पाबंदी है। So I would like to introduce the next
इसी चलती थी बहुत ज्यादा, हाँ जी, मतलब हाँ जी। अभी भी आप मार्केट में जाओ, कहीं जाओ, हर Haji. I would like to introduce our next speaker, who is very well known to us from Melbourne, Manika Jainji. Manika Jainji is the Additional Secretary, Diaspora Affairs, Ministry of External Affairs. She is a senior diplomat who has served in Southeast Asia and Australia. Manika ji, it's very nice to see you again after when you were here in Melbourne. So over to you. Thank you so much, and namaskar sabiko. Good afternoon, all the delegates. I hope I'm audible. Yes. Okay. If anyone is not speaking, could you put your mics off, please? Manika ji, over to you. Okay. Manika ji. Yes. Just a small intervention. We're glad, we are fortunate that Manika ji is with us. Manika ji is one of the senior diplomats based out of Burma now. She will extensively work in Southeast Asia and I will also Australia sometime. So I request Manika ji to go on. Thank you so much. And good afternoon, everyone, all the panelists, delegates, on today's deliberation. I know that we have largely people from East Asia at this time connected, and I'm very happy that most of my career has been, in that part of the globe. Today's title is that Sun Never Sets on Indian Diaspora, and yes, I would completely agree with it, with my experience. And right now, as in Ministry of External Affairs, I'm looking after diaspora engagement. I'll try to put in a couple of Hindi words, though I know that there are some, some members of diaspora who would want me to continue in English only. Please bear with me. थोड़ा सा बीच में शायद हिंदी बोलूंगी. Why I say so and why this topic is so pertinent and topical is that, of course, Indian diaspora is one of the largest diasporas, and if not the largest. And it is very diverse and spread across the continents. I'll just try to share some, data which we have, out here at the ministry. I'd say that according to March 22 estimates, there was about 32.1 million diaspora, in which we had, what our estimates were from various missions and other agencies abroad. That 18.7 were PIO, that is people of Indian origin, which means that they do have their roots in India, but they have given up the passport of India, or they migrated long time before. And the rest, that is 13.4, are non-resident Indians, which means Indians who are living abroad, out of India. However, you'll be surprised that in January 2023, we did a very extensive exercise and really a painstaking exercise to get a data which is not only kind of present and up to date, but which can give us a little more in-depth, you can say, knowledge about how a diaspora is spread around, and that the numbers came to be about 33.5 million people. And among them, of course, NRI population has really shot up. It is 15.3 million NRIs now abroad, and of course 18.2 million are people of Indian origin. And I'm really proud to share with you also, it might be surprising to many that the presence is in 209 countries across the globe. So it is very topical that, yes, I agree, sun never sets on Indian diaspora. And in those, the top 5 countries are, where our diaspora is the largest or biggest, is US, UAE, Malaysia, Saudi Arabia, and Canada. Now, among these 5 countries also, the PIO population, that is people who have given up Indian nationality, is largest in, of course, US, then Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, and South Africa. See, some of these countries, like I would say Myanmar, I won't even say that they gave up their Indian nationality. Their historical context is such that
well, many of them were stateless earlier. They migrated much before under the indentured labor, you can say, times. And so, I mean, they were sort of, they are considered as PIOs, you know. And we've tried, and many have got, and I believe now they have been assimilated in the society there. We also know, as I was talking about, that the historical migration has not been, you know, in one, you can say, in one go. Whatever, there have been different times when migration has taken place. Largely, we see then the trend has been, there was this huge migration before independence to Girmitia countries as indentured labor, and the you can say the second, third, or rather third, fourth, or fifth generation of those people are in most of the Girmitia countries, and they've re-migrated to other places also, and now they hold very good positions, you know, in those countries. Then, of course, there was economic migration post independence. Largely, people moved out as professionals or businessmen, and they got settled in various parts of the world. And finally, of course, not finally, I would say, but later on, from 80s, 90s onward, and largely after the turn of the century, we have this huge migration of students where, you know, youngsters are going out for study and for doing professional courses or for doing any other institutional, you know, academic sort, and then settling down abroad. So these are large three, you can say, streams of migration. But now our diaspora is very rich, diverse, and I would say that very well settled also in many parts of the world, whether it may be in politics, business, economics, science and technology, so on and so forth, culture, art, and of course, a lot of them are doing a lot of community, you know, work. So I just wanted to bring a bit of the government of India's, or you can say, what is our perspective vis-a-vis diaspora. Of course, you know, we think diaspora is not only one big family, but is also very diverse, influential, and it can be in any of these fields, and they are really important to us. We consider them as bridge between India and the host country, wherever they are or wherever you are. And also, I would say that for us, diaspora जो है वो संस्कृति और सभ्यता की torch bearers हैं. You are all the cultural ambassadors for India. In that connect, I would say that, you know, government of India has embarked on, has come out with various schemes, programs to connect with diaspora, to have better interaction. Well, this forum is one of them, which is not government, meaning, of course, government promoted, but you can say a parallel forum or whatever. There are many good organizations which are doing a lot of work in connecting in diaspora. I'm going to spell out some of the government schemes. We've tried to maintain, you know, not only maintain our relationship with the diaspora community, but also enhance that, you know, connectivity, that relationship. Especially, you would have noticed that from 2014 onwards, the highest leadership of the country, whenever he travels abroad, there is one element of the program which is connection, or you can say outreach, or with the diaspora, and it's always a huge and very popular element and important element of the leadership's program. Not only that, many other ministerial delegations, and especially from MEA, whenever they go abroad, there always is an element of engagement, dialogue with the diaspora in that program. In addition to that, you know, our missions have various outreach programs. They have, you know, not only during national days or otherwise, they also conduct camps. They have various, you know, helplines or even open houses and so on and so forth. I'm sure you all would be aware of various interactive outreach, you can say, initiatives of our missions.
No, we have 5-6 programs which are largely the flag bearers of our outreach, and which are conducted, or you can say which are organized from the division which I'm heading. One, of course, I think so all of you would know, is Pravasi Bharatiya Divas, and this celebration it happens around 9th of January, and now it is a 3 days celebration in collaboration with the state. And what we do is, in addition to inauguration and valedictory, where of course inauguration is done by Honorable Prime Minister and valedictory keynote address is by Honorable Rashtrapati ji. Also, that is a time when Pravasi Bharatiya Samman Awards are also given. But in between, we have these theme-based conferences. Not going into the detail, but I would just kind of flag that the last PBD which we did was in Indore. That was 17th PBD, and which was at the beginning of this year. And you'll be happy to know that there were more than 3,500 delegates from 70 countries which participated in this, Pravasi Bharatiya Divas. There were many other kind of firsts in this Divas. I would not take up your time on that. The other thing I mentioned was Samman Awards, and I'm sure all of you would be familiar with that, about 30 awards are given every alternate year, and they are given to very distinguished diaspora members or organizations which are run by the diaspora members. Then another program which we do, Know India program. I don't know how many of the distinguished diaspora members know about it, or delegates who are here know about it, but that is one program which is not new, quite old. We have only re-carved out, we have expanded it, and it is because it is really taking traction now, and I would want to use this platform for you to kind of know about these schemes and also spread a word around. Now, this youth program is largely for the youth of people of Indian origin, meaning youth who are second, third generation, fourth generation, or whatever, of Indian diaspora. They are between 18 to 30 years. The program is designed in such a way that the youth, they visit India and they get familiarized with India, the contemporary India, and in all its aspects, whether it would be science, technology, economy, polity, heritage, tourism, so on and so forth. Also, we try to take them to one of the states, and so that they get the flavor of that state cuisine as well as developmental opportunity. There is an immersion element in that program also, where we kind of connect with one of the universities or a young, or an institution with youngsters, so that they can interact with Indian youth, of the same age group. In fact, the organized ARSP also does, a program with the members of Know India program, or the participants of Know India program. So every time there is a group which visits, so we also attach them to ARSP. So that is, we found a very good feedback from the participant or youth who have attended this program. So there used to be a 40-member earlier delegation, or you can say participation. We've expanded it to now 60. So 66, we've already done 65, 66th and 67th have already been announced. 66th would be commencing in 2-3 days time, and the partner state is Kerala. 67th would be in another, I think so, 2 weeks time, and their partner state is Maharashtra. But, watch out for the next one, 68, 69, whenever we announce. And if you know youth who are interested in joining this program, we really welcome them. Then there's another initiative of Government of India, which is called, yes. समय का ध्यान. Okay, so I was about to just give me, okay. There's one thing which is called Scholarship Program for Diaspora Children. The details, you'll find it on our website or wherever. About 150 such scholarships, generally given to diaspora children around the globe. And there are certain, guidelines for it, you may see that. Then we do a cultural promotion of cultural ties with diaspora through our missions.
when in events you must be invited, your associations might also be party and you can say a co-producer of those events. Another very good or rather an initiative which is very dear to the leadership is Bharat Ko Janiye quiz. That one I would really ask you to get your youth and especially school children interested to participate in this quiz, which is done every alternate year. And the winners, there are 4 prizes from each category, 3 categories, and winners are brought to India for a you can say tourism purpose for about 15 days tour. Then there is a Pravasi Rishta portal, Madad portal, and you would be aware that we also help Indians in any kind of distress time under the Community Welfare Fund. So these are some schemes and also some initiatives of Government of India. And I hope that, through you, I would request that the diaspora associations, diaspora members should come together, work together, also help us in making our outreach programs more successful. And I hope to see you, I think some of you sometime in forthcoming Pravasi Bharatiya Divas, whenever it is, or some of the young members in the future Know India program. Thank you so much. Okay, I finished. Thank you so much. Thank you, Kanika ji. Anil ji, are you there? Are you Asthana ji? Haji, मैं Anil ji, has any more participant from Australia left? No. I think it's all over. It's all done. It's all done. So yeah, sorry to intervene. My name is Muthu Ramachandran, and I am an executive of the Global Organization for Divinity Australia, and I'm also a founding member of the Tamil Arts and Culture Australia. I've been asked by the Tamil web Agila Ulaga Tamil Forum to speak. Just a second, sir. Just a second. Anil, do you have his name? No, we from our scheduled speakers, Anilji, there was no one pending. Everyone has spoken. Priyanka. Right. So yeah, I am representing the Aganda Tamil Ulagam. Yeah, go ahead. So please have a short comment. Huh? Thanks. As I introduced earlier, my name is Muthu Ramachandran, and I am executive of the Global Organization for Divinity, founded by His Holiness Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji in Chennai. And I'm also a founding member of the Tamil Arts and Culture Association in Australia. So I'll be speaking in Tamil today. Anevarukkum vanakkam. இந்திய புலம்பெயர்ந்தோர் இன்று உலக கலாச்சாரத்தில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக திகழ்கிறார்கள். சில அம்சங்களில் தனித்துவமான சக்தியாகவும் உள்ளனர். எண்ணிக்கையில் உலகின் 3வது பெரிய புலம்பெயர் சமூகம் நமது இந்திய சமூகம். சுமார் 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் உலகின் அனைத்து மூலைகளிலும் தங்கள் இருப்பை கொண்டுள்ளனர். இந்திய புலம்பெயர் நாடுகளில் சூரியன் மறைவதில்லை என்பது இன்று ஒரு நிதர்சனமான உண்மை. ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்தவரை இந்திய புலம்பெயர் சமூகங்கள் வணிகம், அரசியல், நீதித்துறை, அரசாங்கம், கல்வித்துறை, அறிவியல், விளையாட்டு உள்பட ஆஸ்திரேலிய வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் செயலிலும் உள்ளன. அவை ஆற்றல் மற்றும் நிறுவனங்களின் வளமான ஆதாரங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆஸ்திரேலிய மக்கள் தொகையில் இந்தியர்கள் சுமார் 3% உள்ளனர். அவர்கள் பல்வேறு சமூக கலாச்சார பின்னணி கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் பொதுவான சொந்த உணர்வு எப்போதும் அவர்களின் தாய்நாட்டுடன் அவர்களை பிணைக்கிறது. உலகமயமாக்கலின் சகாப்தத்தில் தாய்நாட்டிற்கும் வெளிநாட்டு இந்தியர்களுக்கும் இடையே ஒரு புதிய உறவை இது உருவாக்கியுள்ளது. வசுதெய்வ குடும்பகம். வசுதெய்வ குடும்பகம் என்பது உலகம் ஒரே குடும்பம் என்பதை அனைவரும் அறிவோம். இது பல நூற்றாண்டுகளாக இந்தியாவின் கலாச்சாரம் மற்றும் ஆன்மீக பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த காலத்தால் அழியாத கொள்கையாகும். வசுதெய்வ குடும்பகம் என்பதன் உண்மையான பொருள் உலகளாவிய சகோதரத்துவத்தின் சாரத்தையும் அனைத்து உயிரினங்களின் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருப்பதையும் உள்ளடக்கியது. Muthuji, excuse me, you have 30 seconds left. 30 seconds. வசுதெய்வ குடும்பத்தின் உண்மையான பொருள் சகோதரத்துவம்.
அதற்கு அன்பு வழி பாதை ஒன்றே வழி. என் குருநாதர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளிதர சுவாமிஜி அடிக்கடி சொல்வார், பாத் ஆஃப் லவ், இன் த பாத் ஆஃப் லவ். அந்த அன்பு வழி பாதையை நாம் செலுத்தினால் அனைவருக்குமான சகோதரத்துவத்தை நாம் அடையலாம். அதற்கு ஒரு வழிதான் இறை நாமங்களை ஜபிப்பது. அந்த இறை நாமங்களை நாம் தொடர்ந்து ஜபிப்பதின் மூலம் நமது மனம் அமைதிப்பட்டு அனைவரோடும் நாம் அன்பு செலுத்த முடியும். அப்படி நாம ஜபம் செய்வோம், அன்பு செலுத்துவோம், ஹரே ராம மகாமந்திரத்தை ஜபிப்போம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. வாய்ப்பு தந்த ஏஆர்எஸ்பி மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Over to you, Anilji. Back over to you. Thanks to all, and it was a wonderful presentation from Australia. We should have a clapping. Thank you, Anilji. And Australia is the most important emerging diaspora we know, and the representation from the Australia is very good. The speakers, the eminent speakers from almost representative sectors of industry as well as services. So thanks to Australia, and particularly we are very much like the poetry by Subhashji and other eminent poets who have contributed. Now we shift to New Zealand, and from the New Zealand we have Sunita Narayan ji. Sunita ji को विश्व हिंदी सम्मान मिला हुआ है. सुनीता जी ने बहुत सालों से, बेसिकली शी इज फ्रॉम फिजी, मैं जानता हूं कि नवबा से हैं, और सुनीता जी और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है. यद्यपि जापान से बहुत बाद में आना था, लेकिन प्रोफेसर मिजो कामी जी भी जुड़ चुके हैं. शायद हमने उनको जो समय दिया था वो भी हमारे बीच में है. तो एकदम श्री प्रोफेसर मिजो कामी जी का भी हम स्वागत करते हैं. और सुनीता जी से मैं निवेदन करता हूं कि सुनीता जी जो न्यूजीलैंड से जो उपस्थित हमारे विद्वान हैं उनकी प्रस्तुति करें. सुनीता जी. नमस्कार, कियोरा, और न्यूजीलैंड से आप सभी को अभिनंदन. सबसे पहले मैं संचालक मंडल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस मंच पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, और सचमुच में वासुदेव कुटुंबन का ये जो थीम है ये जागृत है. अभी मैंने आपको न्यूजीलैंड की आदिवासी भाषा कियोरा से संबोधित किया, और यहाँ पर जो भारतवासी है, भारतीय है, वो माओरी लोगों से बहुत मिलजुल कर रहते हैं, और कहीं कहीं पर तो हमारी संस्कृति भी इतनी मिली जुड़ी होती है कि हमें ऐसे लगता कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. और अब हम यहाँ पर 11 बज चुके हैं, और समय का सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं अपने जो स्पीकर्स हैं एक एक स्पीकर को इनवाइट करूंगी और वे अपनी प्रस्तुतिकरण करेंगे. तो सबसे पहले हमारे साथ है रोहित कुमार हैप्पी जी. रोहित कुमार हैप्पी जी इंटरनेट पर विश्व के पहले हिंदी प्रकाशन भारत दर्शन को स्थापित किया था, और आज वो इनके संपादक है, और इनकी जो साइट है इस पे बहुत सामग्री है बड़े से छोटों के लिए, और आपको जब मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा. तो इसके साथ मैं रोहित जी को बुलाती हूँ. रोहित जी. धन्यवाद सुनीता जी. मुझे अभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की ये दिख रही है स्क्रीन, और बालेश्वर जी दिखाई दे रहे हैं, तो प्रणाम करता हूं उनको. आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमें पता है आप स्वस्थ नहीं है, फिर भी हमारे अनुरोध पर आए. आपका स्वागत. धन्यवाद अनिल जी, पांडे जी, गुप्ता जी, नारायण जी. आप सभी को प्रणाम करता हूं, और इस कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं. मैं वाचक परंपरा से नहीं आता हूं, तो मैं अनुरोध करूंगा अपनी सुनीता जी से
कि एक मैंने छोटी सी मूवी भेजी है, वो चलाएं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय ज्यादा हो गया तो मैं चाहूंगा कि हम इसको आगे बढ़ाएं ताकि सभी अपनी बात रख सकें। एक बार फिर से आप सभी का इस निमंत्रण के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जी रोहित जी, मैं आपके जो वीडियो है मैं अब शेयर करती हूँ। हेलो, प्ले का बटन दबाइए सुनीता जी, ये जो बीच में है। हेलो, हाँ यहाँ ये प्ले का बटन है बीच में। नहीं, ये आप गलत दबा रही हैं। ओह नहीं, मैंने तो टेस्ट किया था, टेस्ट कर लिया था। ट्रायंगल वाला मिडल। यस यस, अब आ गया। अपनी बहन। साउंड शेयर। आवाज नहीं आ रही सुनीता जी इसकी कुछ। चलिए, सुनीता, इसको साउंड शेयर नहीं किया है आपने इसका, इसलिए आवाज नहीं आ रही किसी को भी। इसको बंद करके दोबारा से वॉइस भी, उसका जो है ना साउंड है वो भी शेयर कीजिए। आ गई है। तो हम लोग इसको चला रहे हैं। आगे बढ़ाइए। हाँ, कोई बात नहीं, धन्यवाद। सुनीता जी आप रुक जाइए, हम लोग इसको यहाँ से चला रहे हैं। आप रोक दें सुनीता जी, आप रोक दें। ठीक है, यहाँ से चला। आवाज आ रही अनिल जी, कार्यक्रम आगे जारी रखिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, शायद कोई नहीं यहाँ पे नहीं, ये शुरू स्टॉप कर दिया मैंने। स्टॉप हो गया। सॉरी, मेरा कंप्यूटर में कुछ हुआ है। रोहित जी, अभी भी चल रहा है या स्टॉप हो गया? सुनीता जी, मैं ऑफर करती हूँ कि
यस जब मेरा समय टाइम आएगा बताने का, उस बीच में जब भी ये चल जाए इसको चालू कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो लिहाजा थोड़ा आगे बढ़ाना ठीक है पड़ेगा जी। जी चलिए तो सुनीता जी आगे बढ़ाएं। ओके जी आ रही हूँ। ओके रोहित जी सॉरी कुछ हो गया, मैं उसको स्टॉप नहीं कर पा रही थी। ओके उसको फिर अटैच कर देंगे साइड में। तो आगे चलते हैं और अब हमारी अगली जो स्पीकर है वो है डॉक्टर पुष्पा भारद्वाज वुड, वेलिंगटन निवासी। पुष्पा जी पिछले 40 सालों से हिंदी शिक्षण, हिंदी अनुवाद, हिंदी के दुभाषी में रत है और सामुदायिक हिंदी स्कूल का पाठ्यक्रम तैयार करने में योगदान कर चुकी है। वेलिंगटन में प्रौढ़ों को हिंदी पढ़ाने का श्रेय भी इन्हें जाता है। डॉक्टर भारद्वाज वुड को वित्तीय साक्षरता और अंतरधर्मीय संबंधों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 2016 में महारानी के 90th जन्मदिन के सम्मान सूची में ऑफिसर ऑफ द न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट के रूप में नियुक्त किया गया था। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन में संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत भी इन्होंने की थी। वे न्यूजीलैंड में पहली छात्र थी जिन्होंने मध्यकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक आयाम विषय पर अंग्रेजी में शोध किया था। अनुरोध है कि परिचय सभी का संक्षिप्त रखें, जिनसे उनके थोड़ा सा बोलने का 5-5 मिनट में समाप्त करें, है ना, क्योंकि काफी हम 1-1.25 घंटा लेट हो गए। ओके ठीक है पुष्पा जी। नमस्कार। तेना कोतो खातोआ, ये हमारी यहाँ की मूल भाषा में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आउटेरोआ जो कि हमारा माओरी नाम है, आउटेरोआ न्यूजीलैंड में वसुधैव कुटुंबकम को आप कई रूपों में देख सकते हैं। आप भाषा और संस्कृति के जो प्रचार और प्रसार में लीन भारतीय हैं उनके कार्यों के माध्यम से देख सकते हैं। आप भारतीय भाषाओं के जो अनुवाद हैं उनके रूप में आप देख सकते हैं, पत्रकारिता में आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह के माध्यम से आप इस सिद्धांत को साकार रूप में देख सकते हैं। अभी सुनीता जी ने बताया कि यहाँ के जो मूलवासी भारतीय जो माओरी लोग हैं उनकी विचारधारा, उनके पारिवारिक मूल्य, उनके सामाजिक मूल्य, उनके सांस्कृतिक मूल्य हम लोगों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। और बहुत से उदाहरण आपको न्यूजीलैंड में मिल जाएंगे जहाँ माओरी लोगों में और भारतीय लोगों में आपसी वैवाहिक संबंध हैं और जिनके कारण जो उनके बच्चे हैं वो, और हमारे घर में सबसे बड़ा उदाहरण हमारे घर में है मेरे पति। आपने देखा होगा मेरा नाम भारद्वाज वुड है, तो मेरे पति जो हैं वो पार्ट माओरी हैं और पार्ट यूरोपियन हैं। तो मैं दोनों नाम अपने साथ इसलिए रखती हूँ कि मेरा अपना जो आइडेंटिटी है, मेरी अपनी जो पहचान है वो मेरी साथ साथ रहे। हमारी बेटी जो है उसको हमने नाम दिया है गायत्री, परंतु उसको हमने सभी धर्मों से, सभी संस्कृतियों से परिचित कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो मेरी जो विचारधारा है वो मैं विश्वास करती हूँ सबको साथ लेकर चलने का बजाय सबको आत्मसात करने का। तो मेरी विचारधारा में ये है कि थियरी ऑफ एडिशन रादर देन थियरी ऑफ असिमिलेशन। और इसीलिए जो कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर पिछले 40-45 सालों से, मैं आपको छोटी सी समय के अभाव में सिर्फ बताऊंगी कि हम लोगों ने किन किन क्षेत्रों में यहाँ न्यूजीलैंड में इस भावना को साकार करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा प्रयास है अंतरधर्मीय जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 35 वर्षों से हम लोग अंतरधर्मीय जो संस्थाएं हैं यहाँ अब लगभग न्यूजीलैंड के हर शहर में आपको एक मिल जाएगी। उसकी शुरुआत हम लोगों ने वेलिंगटन से की थी। तो सबसे पहला जो अंतरधर्मीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो 9/11 के बाद हुआ था 2002 में।
उसके बाद सबसे पहला महिला अंतरधर्मीय सम्मेलन वो भी यहाँ हुआ था 2003 में। उसके बाद सबसे पहला अंतरधर्मीय युवक समारोह हुआ, वो भी यहाँ हुआ 2003 में। तो हर साल हम लोगों ने इसे जोड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा अंतरधर्मीय आपको दिखाई देगा यहाँ की कॉमनवेल्थ डे सेरेमनी जो होती है वेलिंगटन में, जो राष्ट्रीय समारोह है, उस समारोह में भी हमने अंतरधर्मीय जो एक हिस्सा है उसको जोड़ने की कोशिश की है, और पिछले 15 सालों से हम वहाँ उसमें भी अपना योगदान देते हैं, ताकि भारतीय धर्म के साथ साथ, हिंदू धर्म के साथ साथ बाकी और धर्म भी उसमें साथ मिले जुड़े रहें। इसके अलावा जो है हम लोगों ने यहाँ की पार्लियामेंट में सबसे पहले शुरू हुआ था त्योहार ईद मनाने का, क्योंकि हमारे उस समय एक मंत्री थे, एक जो पार्लियामेंट के सदस्य थे वो मुस्लिम थे और उन्होंने शुरू किया था ये, पर उनके साथ ही उन्होंने अगले साल से फिर दीपावली का समारोह शुरू किया, और अब हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लगभग हर महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार मनाया जाता है। होली यहाँ पर अब आप ये देखिए कि वो न्यूजीलैंड का त्योहार बन गई है, दीपावली भी न्यूजीलैंड का त्योहार बन गई है, बल्कि बजाय इसके कि वो भारतीयों का त्योहार हो। भाषा के साथ ये है कि सुनीता जी हिंदी स्कूल में पिछले 28 साल से हैं। मुझे यहाँ आए हुए 40 साल हो गए हैं। जब मैं यहाँ शुरू में आई थी तो ना तो कोई इंडियन रेस्टोरेंट था वेलिंगटन में, ना हिंदी बोलने के लिए, मुझे हिंदी सुनने के लिए, क्योंकि जो लोग जो भाषा बोलते हैं उनको ये समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ, कि बोलने के लिए गले में जैसे घुटन होती है ना बोलने के लिए, वो एक भावना होती थी। तो मैं कई बार हफ्ते में कम से कम 2-3 बार भारतीय दूतावास को फोन करके सिर्फ हिंदी, ताकि मुझे सुनाई दे जाए किसी से और बोलने का मौका मिले। उसको मैं जब उसको सोचती हूँ और अब देखती हूँ तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमने काफी कुछ काम किया है। हालांकि हमारा एक प्रयास असफल रहा था, जो हम भारतीय भाषा को, हिंदी को खास करके हम जो है यहाँ की 10 प्रमुख भाषाओं में स्वीकार करवाना चाहते थे, परंतु हमने अपना इरादा नहीं छोड़ा है। हाँ ठीक है, रास्ता बदल लेंगे, अगर एक रास्ते से नहीं मंजिल मिली तो दूसरा रास्ता तैयार चल पड़ेगा। तो यहाँ की अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें इस भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है, तो उसे सबसे पहले हमें अपने साथ युवकों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक हम लोगों के बाद जो है, हमारी पीढ़ी के बाद उसका आगे चलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि थियरी ऑफ एडिशन, हम अपने साथ जोड़ के चलें, बल्कि ये नहीं कि हम अपनी जगह दूसरे को, ये कंपटीशन नहीं है कि मेरा धर्म अच्छा है या मेरी जातीयता अच्छी है या मेरा संस्कृति अच्छी है। इसमें हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें हमें देखना ये कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं, और दूसरों के पास ऐसा क्या है जो हम उनसे ले सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे मावरी लोग और भारतीय लोगों में काफी समानता और सामंजस्यता है, इसी वजह से कि हम आपस में compete नहीं करते। और जब तक ये भावना बनी रहेगी तब तक आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत संभव होगा। और अंत में जब हम भारत से निकलते हैं तो हमें ये याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम अपने देश को छोड़कर दूसरी भूमि पर पैर रखते हैं, हम भारत के दूत बन जाते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हमें इस तरीके से देखा जाए, हमें पुष्पक नहीं देखा जाता, सुनीता नहीं देखा जाता, हमें ये देखा जाता कि हम भारतीय हैं। तो हमारा हर गलत कदम हमसे पहले प्रचारित हो जाता है। इसलिए हमारे लिए हमेशा ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ देखा है 40 साल में, बहुत कुछ अच्छा देखा है, बहुत कुछ ऐसा भी देखा जो शायद मैं नहीं देखना चाहती थी। और आखिर में ये कहूंगी, जब मैं यहाँ 1980 में आई थी, मुझे किसी एक भारतीय का नाम ना जेल में दिखाई देता था, ना किसी क्राइम में दिखाई देता था। आज 2023 में ये है कि
हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है यहाँ पर। कम से कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो बुराई का हमने ना तोड़ा हो, पर उसके साथ साथ कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो अच्छाई का हमने ना तोड़ा हो। यहाँ के हर क्षेत्र में भारतीयों का बोलबाला है, चाहे वो साहित्य लेखन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग कम नहीं है। और यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें तो हमारे योगदान की बात ही नहीं कह सकते। धन्यवाद। सुनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? सुनीता जी, जी हाँ। हाँ सुनीता जी आगे। हाँ। अब हम चलते हैं आगे। पुष्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम साथ साथ बहुत काम करते हैं भारतीय भाषाओं को लेकर और भी कई क्षेत्रों में। तो अब हम आगे चलते हैं और हमारे अगला जो वक्ता है उनकी एक रिकॉर्डिंग है और ये 6 मिनट की है। अगर मैं 4 तक कर सकती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि प्रोफेसर जयशंकर शो ने यहाँ पर कितना काम किया। और वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, प्रोफेसर इन फिलोसफी, बहुत दिन काम किए। उनके नाम से लगभग 15 बुक्स है पब्लिश्ड है और लगभग 100 से ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया है। तो मैं 4 मिनट तक करूं, अगर ठीक है अनिल जी? आपको करने में ज्यादा समय ना लग जाए, इतना समय अगर लगना है तो आप दिखा दीजिए सीधा। हाँ, ओके, ट्राई करती हूँ। दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, साउंड नहीं दिख तो रहा है, साउंड नहीं है कोई। ओह ओके। हाँ साउंड नहीं है। ओ नहीं है? नहीं। ओह अगर उसमें भी आप हम लोग कर लेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं। कीजिए कि वो वीडियो मुझको हाँ। भेज दीजिए और आप सुमन जी को आमंत्रित कीजिए। सॉरी अनिल जी, आप क्या कह रहे थे? वो साउंड नहीं आ रहा है? नहीं साउंड नहीं आ रहा है, आप प्लीज सुमन जी को इनवाइट कर ले, मैं यहाँ पर वीडियो चलवा दूंगा। ओके, ठीक है। आप मुझे मैं इसको वीडियो मेरे को भेज दें। वीडियो मैंने भेजा है आपके पास। अच्छा, ठीक है, मैं श्याम चेक ने कर भेजा था, श्याम ने ठीक। भेजा था। निरंजन जी आप जरा वीडियो कर। ठीक है, आगे सुमन जी को। ओके, ठीक है, तब हम मूव करते हैं, हम आगे चलते हैं। और हमारे साथ अब है जीत सचदेव जी। जीत जी स्वयंसेवी संस्थाओं में बहुत काम किए हैं और मैं अब उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति करें। जीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। बहुत देर से हम लोग अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वाकई आ ही गई। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि इतने सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को सुयोजित किया गया है। ऐसा है कि मुझे मालूम है टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, तो बहुत भूमिका ना बांधते हुए मैं आई जस्ट स्टार्ट विद मुझे इन 1987 में आई केम टू दिस कंट्री ऑकलैंड में। हमने आके यहाँ पर अपने वी लिव्ड हियर इन ऑकलैंड। शुरुआत तो यहाँ ऑकलैंड से हुई 87 में। आई वाज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अंटिल 1995 जब हमने देखा कि बस बहुत हो गया पैसा कमाना, तो आई थॉट व्हाट आई शुड बी डूइंग नेक्स्ट थिंग। तो आई बिकम ए सोशल वर्कर इन 1995। तो ये भी एक बहुत बड़ा अजीब सा एक इंसिडेंट है। हुआ कैसे, मेरी सिस्टर रूपा सचदेव जो कि हिंदी की वो काफ़ी स्कॉलर हैं, तो उन्होंने अपना यहाँ पर हिंदी के काफ़ी प्रचार भी किया, हिंदी रेडियो स्टेशन चलाया।
तो वहाँ पर उन्होंने उनके जब वो टॉक बैक शो करती होती थी तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और जब पार्टिसिपेट किया एंड सॉ दैट कि भाई काफ़ी सारे माइग्रेंट्स जो नए आते हैं उनको काफ़ी सारी इश्यूज होते हैं, तो उन इश्यूज को हमने एड्रेस करना शुरू किया। तो एड्रेस करते करते हमने देखा कि यानी इसकी काफ़ी अच्छी जो बताते थे लोगों को, दे वर क्वाइट रिसेप्टिव ऑफ इट एंड दे थॉट कि जो हमारी जो सेवाएं हैं अगर हम इसको एक संचालन रूप से करें, एक प्लेटफॉर्म से डिलीवर करें तो बहुत अच्छा होगा। तो उस रीज़न से हमने एक यानी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, उसका नाम रखा भारतीय समाज। भारतीय समाज नाम रखने का ये पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमने कहा कि यहाँ पर हमने देखा कि अलग-अलग किस्म यानी हर स्टेट से अपनी-अपनी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमने कहा कि अगर हमने इंक्लूसिव बनना है तो वी हैव टू इंक्लूड एवरीवन। तो आज की डेट में जब भारतीय समाज की स्थापना के बाद अभी हमारे पास हर स्टेट के यानी जो भी हैं लोग हैं उसमें आते हैं, और हमारी जो सेवाएं हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। हमने शुरुआत की थी इवेंट्स के साथ। हमने जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे हुआ, दिवाली हुआ, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे नेशनल डेज हैं उनको भी हमने मनाना शुरू किया। तो ये हज़ारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने अंजाम देते थे, हम लोग देते थे। और उसके अलावा भी हमने कहा कि ये तो हो गई इवेंट की बात, लेकिन इवेंट के साथ-साथ हमने कहा कि हाउ वी कैन कनेक्ट मोर विद द पीपल। तो जो नए माइग्रेंट्स जब यहाँ पर आए काफ़ी सारे, तो हमने देखा कि उनके जब पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, दे आर ऑल आइसोलेटेड, बहुत अकेलापन महसूस करते थे, क्योंकि बच्चे उनके काम पर चले जाते थे और उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो दे वर गेटिंग डिमोरलाइज्ड और यानी उदास हो जाते थे। तो हमने क्या किया, एक काम किया कि हमने एक सीनियर सिटीजन ग्रुप की स्थापना की एंड देखते-देखते वो बहुत पॉपुलर हो गया। उसी तरीके से हमने कहा जो छोटे बच्चे थे, उनको हमने कैसे कनेक्ट करना था भारत के साथ, हमने लैंग्वेज एंड कल्चरल क्लासेस शुरू की। और ये जो हिंदी की बात हो रही है तो आई थिंक ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं। पहले वो रूपा जी भारतीय मंदिर में पढ़ाती थी, उसके बाद फिर हमने भारतीय समाज में ये जो परंपरा है इसको कंटिन्यू किया। ये जो सेवाएं हैं इसको हमने, मुझे किसी ने पूछा कि आप कौन सी सेवा प्रदान करते हैं, तो मैंने कहा भाई बात तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि मैं हम बताऊं कि हम क्या सेवाएं प्रदान करते हैं। हमने कहा ऐसी कौन सी सेवा है जो हम प्रदान नहीं करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चाहे वो कोई डिस्ट्रेस में है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उसको असिस्ट करना, कोई भी कैलामिटी आ गई उसमें पार्टिसिपेट करना, जहाँ हमें ऐसा लगा कि जहाँ गैप है वी यूज्ड टू प्ले ए रोल। जैसे कि आपने देखा कोविड में या साइक्लोन जब यहाँ आया था तो वी पार्टिसिपेट इन दैट। और इसके अलावा हमने और भी जितनी भी, जैसे किसी मानवीय कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी बॉडी ट्रांसफ़र करने में भी हमने काफ़ी सहयोग दिया। और हमने एक चीज़ और भी देखी यहाँ पर कि जैसे-जैसे डायस्पोरा बढ़ता चला गया, तो जो फैमिली वायलेंस वाज़ वेरी कॉमन, फैमिली वायलेंस एंड एल्डर अब्यूज़, इन चीज़ों को भी हमने एड्रेस करना शुरू किया। तो सेवाओं की तो मतलब यानी कि अगर बात करें तो अनगिनत सेवाएँ हैं कि जो हम प्रदान करते हैं, और हम प्राउड फ़ील करते हैं कि हमें ये मौका दिया है ईश्वर ने इसको अंजाम देने का, और हम वो करते चले आ रहे हैं। सबसे एक और बड़ी चीज़ हमने अचीव की है कि ये एक न्यूज़ीलैंड में हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि हमने कल्चरली एप्रोप्रिएट रेस्ट होम हमने क्रिएट किया है यहाँ। आप कल्चरली एप्रोप्रिएट रेस्ट होम का मतलब है कि जब यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग जो रेस्ट होम में जाते थे, उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि खाने में, उनकी कंपनी में, यानी कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ की दिक्कत होती थी। तो हमने इसके लिए एक काम किया। यहाँ के जो प्रोमिनेंट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं रेस्ट होम के, बोपा है उनका नाम, तो लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके ये सेवाएं प्रदान शुरू करी हम लोगों ने यहाँ पर। आज की डेट में ये काफ़ी प्रचलित हो गया। हाँ, जी। थोड़ा समाप्ति की ओर ले जाए। हाँ। हाँ जी, समाप्ति की तरफ ही जा रहा हूँ। तो ये कल्चरली एप्रोप्रिएट रेस्ट होम भी हमने स्थापित किया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि ईश्वर ने हमें एक ये मौका दिया है तो हम इसको भरपूर इसका योग करें। जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की बात आती है, मैं एक छोटी सी बात कह के समाप्त करूँगा कि अगर आप बाहें खोल दें तो सारी दुनिया आपकी है, उसमें आ सकती है। अगर आप बाहें अपनी फोल्ड कर लें अपने ऐसे,
होल्ड कर लें तो आपके अपने भी अपने पास नहीं आ सकते। तो हम जो भी करना चाहें उसको प्रैक्टिकल रूप दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इस तरह की ये सोचने की हम कहते रहें लेकिन अब उसको हम प्रैक्टिकल रूप देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सब मिलके ये शुरुआत कहीं तो करनी है जो कि हमारे देश की परंपरा है, इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहता हूँ, समय कुछ ज़्यादा ले लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अभी जो समय है उसको देखते हुए अब हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि कुछ मिक्स करेंगे, क्योंकि सिंगापुर से जो लोग हैं उसमें से 2 लोगों की फ्लाइट है, तो हमें संदेश मिला है। तो सुनीता जी आपसे अनुरोध है, वैसे तो लेट हो रहा होगा वहां पर बने रहें। बीच में जो आपकी रिकॉर्डिंग है जो आपने भेजी है, और शायद सुमन जी और रहती हैं अभी बोलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जी प्लीज। जी हमारे पास अभी 3 है, 3 तीन है तो स्पीकर्स अभी और है। बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा क्योंकि नहीं, इन्होंने नहीं, लास्ट अभी मिनट शॉर्ट रहेगा। हाँ हाँ अभी अभी हिमानी है। हम लोग को भी थोड़ा बेटा फीवर है, न्यूजीलैंड उसके पूरा कर बावजूद लेते बैठे हैं हैं। हम लोग, अच्छा न्यूजीलैंड ठीक पूरा है, कर लेते हैं। तो क्या संजय 2 जी का मिनट। ही संदेश था, तो हम ऐसा करते हैं कि न्यूजीलैंड से जो लोग हैं वो संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, सुनीत जी आगे चलाएं। जी ओके, तो ठीक है, 2-2 मिनट का हमारा रहेगा। हिमानी, अब हमारे साथ हिमानी मिश्रा जी है। हिमानी मिश्रा गोल्डब्रेथ, वो इनबकागिल से है। नमस्कार। हिमानी। हाँ, नमस्कार सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम और आपका बहुत आभार हमें ये मंच प्रदान करने के लिए। मैं शुरुआत करती हूँ संस्कृत के सभी ये फेमस श्लोक से जो अभी तक सबने बोला, पर मैं उसको एक बार बोलती हूँ। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुदेवम कौटुंबकम। साहित्यिक रूप से संस्कृत एक समृद्ध भाषा है और इसी भाषा से एक महान विचार की उत्पत्ति हुई है, वासुदेव कौटुंबकम। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी और कुटुंब का अर्थ है परिवार, कुनबा। इस प्रकार वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इसी को अपने जीवन में साभार और अपने जीवन में इसको आधार बनाते हुए जब मैं 17 साल पहले इनवरकारगिल आई, तब मैंने सोचा कि हम जो भारतीय हैं, हमारा ये सोच उस वक्त मेरे दिमाग में था। उसे रखते हुए मैंने धीरे धीरे यहाँ पे हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए काम किया, हिंदी का स्कूल खोला। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सामाजिक स्तर पे जो एक गैप था बहुत हमारे हिंदी भाइयों के लिए, हमारे भारतीय भाइयों और बहनों के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमने एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी खोला। तो इस दुनिया के आखिरी छोर पे, जो कि दुनिया का सबसे आखिरी छोर कहा जाता है, वहां पे हमारे भारतीयों और हमारे साउथ एशियन लोगों को हमने वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करी जो शायद पहले उनके लिए संभव ही नहीं थी उनको पाना। तो उनके लिए उनकी चीजों को एडवोकेट करना, उन्हें यहाँ तक लाना, मैं समझती हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और वो मैं शायद नहीं कर पाती अगर मेरे संस्कार उस वासुदेव कौटुंबकम को ना मानने वाले होते और ना उसे समझने वाले होते। तो ये तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारे भारतीय संस्कार हैं जो हम बाहर रह के भी उन्हें आगे ले जाते हुए चलते हैं। मुझे मालूम है समय की बहुत कमी है, इसीलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का सबका शुक्रिया दूंगी और चाहूंगी कि हम इन्हीं चीजों को हम आगे और बढ़ाते रहें, जिस तरह से और हम आप लोगों से सहायता प्राप्त कर सके, उसी से लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हिमानी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस साल हिमानी के नेतृत्व में इनबकागिल, वो एक छोटा सा शहर है, सिटी है, वहां पर उन्होंने गिरमिट फेस्टिवल किया और फिजी वासियों को इकट्ठा किया और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। और धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं सुमन जी की ओर। सुमन जी, आपके पास भी बहुत कम समय है, चलिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, कुछ बातें जो औरों से हट करती हैं उनको मैं पहले ले लेती हूँ। जैसे कि हम
एक प्रोग्राम सनराइज टू सनसेट योगा 21 जून जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मोदी जी के आह्वान से स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने हमारे शहर में पहले स्टार्ट किया, लेकिन इंडिया से हमारे भाई जुड़े और उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जो सनराइज से लेके सनसेट तक हम योगा करें, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो यहाँ समाहित है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना। सनराइज हमने गिस्बॉन से शुरू किया, वहां पर योगा के कार्यक्रम किए और शुरुआत के बाद हम लोग विश्व के अलग अलग देशों में घूमते हुए नॉर्वे पे जाके हमने खत्म किया ये योगा का अपना प्रोग्राम। तो एक ये चीज का ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह से हम लोग आपस में निटेड हैं और कुछ कृपा है ऐसी आज की टेक्नोलॉजी की कि हम लोग ये सब कर सके, संभव है। तो दूसरा ये है कि जब हम किसी देश में जाते हैं नए, जैसे कि मैं भारत से जब न्यूजीलैंड पहुंची, तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए जो मुझे लगा कि जरूरी है कहने। एक तो कम्युनिकेशन, अरे भाई आप किसी को जानते नहीं है तो उससे बातचीत कैसे करें, बड़ी समस्या। तो हम घर से निकलते थे, सड़क पे कोई भी महिला अगर सलवार कुर्ता या साड़ी पहने दिख जाती थी तो हम उनसे नमस्ते करके वहीं खड़े होकर उनसे बात कर लेते थे और यकीन मानिए बहुत खुशी मिलती थी। तो ये अपनापन जो है ये कम्युनिकेट करके चालू, बहुत जगह भाषा भाषी डिफिकल्टी रहती थी, लेकिन हिंदी तो भाषा जोड़ती है सबको, तो हम लोग हिंदी हिंदी में या अपने थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज से बात करके एक दूसरे को खुश कर लेते थे। यही करते करते समस्याएं जो समझ में आई तो 1 to 1 लोगों को हेल्प करते करते हम लोगों ने समाज सेवा में समझ लीजिए आते ही कदम पड़ गए। और ये तो एक ऐसा वो था कि छूटता नहीं था, नशा कह लीजिए या पैशन कह लीजिए, इसको लेकर निकलते थे तो हर चीज करने का, कोई प्रॉब्लम में होता था उसको मदद करने का मन करता था। और कुछ अपनी भी समस्याएं थी, ये नहीं है कि हम भी नए होते हैं तो हमारी भी समस्याएं होती हैं, तो किसी तरह उनका हल ढूंढ कर फिर वहां की लैंग्वेज भी सीखी। इतना सुंदर तरीके से मावरी वो पढ़ाते हैं। आज मैं अपने समाज, हिंदी समाज के बीच में ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितनी अच्छी तरह से उन्होंने मावरी पढ़ाई, उनके वायाटस यानी कि उनके गाने और उनके गीत, सब कुछ हमें उन्होंने सिखाए और जो हमें साथ में उन्होंने सीखने के लिए रिसोर्सेज दिए। सुमन जी, मैं ये बस कहूंगी कि सुमन जी, हिंदी में हम उतना नहीं कर सके हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट है जो आपके सामने रख रही हूँ। इसी प्रकार से फैमिली स्ट्रक्चर का भी बहुत मायने हैं यहाँ, तो सारी समस्याएं उसके इर्द गिर्द भी घूमती हैं। छोटी छोटी फैमिलीज हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किसी को रहना मिलता है, किसी को नहीं। और आपने क्या पहना ओढ़ा है, जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि आप एम्बेसडर हैं, जैसे ही आप किसी दूसरे कंट्री में पहुंचते हैं तो आप इंडिया के एम्बेसडर हैं और आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या कर रहे हैं। तो यूं समझिए कि यूं तो कुछ नहीं है, लॉ ऑर्डर सभी के लिए है, लेकिन एक हम लोगों का अपने तरीके का सोचने का कल्चरल उसका तरीका है। तो मैं अपने इन 21 साल के सफर में यहाँ पर एक बहुत बड़ी पूंजी समेटे हुई हूँ जो मैं समय समय पर कोशिश करती हूँ कि लोगों से शेयर करूं। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैंने वादे के हिसाब से बहुत कम समय लिया, कोशिश की। बहुत धन्यवाद बहुत सुमन जी। धन्यवाद सुमन जी। ओके, अब हम अपने आखिरी स्पीकर की ओर चलते हैं। डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, वो एक साहित्यकार है और सुनीता जी आप आ जाइए। मुझे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी पर फिर भी मुझे भारत में बहुत सम्मान मिला है। न्यूजीलैंड में शायद इतना नहीं, या नहीं मैं नहीं समझती क्यों, लेकिन भारत में बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारा गवर्नमेंट लेवल से लेकर सामाजिक सुमन संस्थाओं जी बहुत ही द्वारा। धन्यवाद। प्रतिष्ठित विदुषी हैं और जैसा उन्होंने जानकारी दी भी, भारत में कई मंचों से वो सम्मानित हो चुके हैं। हम सुनीता जी का भी बहुत स्वागत करते हैं। सुनीता जी स्वागत है। सुनीता जी किधर है? सुनीता शर्मा आ जाइए।
अरे भाई आप ही जाओ। हाँ थी, तो चलिए वो थोड़ा थी, मुझे हंस याद लें। है। रिटायर हो गई सुनीता। ओके, शायद नहीं है। सुनीता शर्मा जी आप हैं? रात के 12 बजे कहाँ होंगी। हाँ, नहीं वो तैयार थी और थी अम, और जी कहाँ होंगी रात के 12 अ, बजे? ठीक है, तो सिंगापुर के दरवाजे पे दस्तक देके उनको वापस बुला लीजिए। आइए तो ओके, आइए हम आगे ठीक, बढ़ते हैं, और अगर कोई ओके, बात बीच में जुड़ेगा तो जो स्कोप होगा तो जरूर उसको जोड़ेंगे। ओके, तो मैं अब जो ये जो तीसरा सत्र है हमारा फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसका ये बहुत ही शानदार सत्र हुआ, और विशेष धन्यवाद सुनीता जी का, इतना समय उन्होंने लगाया। और हमारे साथी भी जुड़े जो अभी रात के बता रहे हैं, सब 12 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी वो जुड़े हैं। तो एक बार तालियों के साथ हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब हम धन्यवाद। मंच प्रदान करते हैं संध्या जी को, डॉक्टर संध्या जी सिंगापुर से। वे मलेशिया, इंडोनेशिया और जो बाकी देशों से लोग हैं, और मैं कहूँगा प्रोफेसर मिजू कामी जी भी जुड़े हुए हैं। तो प्रोफेसर मिजू कामी जी को एक बार पहले वो जब भी उचित समझे बुलवा लें, और फिर सिंगापुर और मलेशिया, इंडोनेशिया के उनसे बोलें। संध्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मेरी आवाज स्पष्ट होगी? आवाज। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का कि इतने सुंदर आयोजन का हिस्सा बनने का हम सभी को मौका दिया है, क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा अनुभव है जो हम सभी को मिलेगा, और इससे एक, मैं कहती हूँ, एक नई दिशा तय हो रही है। वास्तव में भारतीय डायस्पोरा हर जगह है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और बहुत सारी चीजें परिचय में थी, लेकिन वो सब मैं नहीं दूंगी जो मैंने सोचा था कि लोगों को बुलाने से पहले, चूंकि समय थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं। तो वसुधा हमारी है, एक ही है वसुधा। और परिवार अगर भारतीयों की तरह अगर हम देखें तो उसने तो सभी को परिवार माना है, और भारतीय डायस्पोरा इसके लिए सबसे सटीक है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम अगर कोई भी डायस्पोरा चरितार्थ करता है तो वो भारतीय डायस्पोरा। इस बात से हम में से सभी सहमत होंगे। तो इसी को लेते हुए मैं सिंगापुर से 2 लोगों को सबसे पहले बुलाना चाहूंगी, क्योंकि उन दोनों लोगों के, एक को एम्स्टर्डम जाना है, यही है आज के उसका भी वो, कि वो एक देश से फिर दूसरे देश जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, और चूंकि जहाज रुकती नहीं है किसी के लिए, तो मैं इस कड़ी में सबसे पहले सिंगापुर से बुलाना चाहूंगी सचिन गंजापुरकर जी को, जो वैसे अपने पेशे से तो वो हेड है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग के, लेकिन मैं उनका परिचय इस रूप में भी देना चाहूंगी कि अध्यक्ष है महाराष्ट्र मंडल सिंगापुर के, और उसके साथ ही भारत के महाराष्ट्र राज्य सरकार के भाषा विभाग द्वारा नियुक्त मराठी भाषा के वो अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं, और कई अन्य पदों पर भी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जो बहुत लंबा है, उसको मैं न पढ़ते हुए उन्हें सीधे आमंत्रित करती हूँ कि सचिन जी आए, और सिंगापुर के बारे में जो भी उनका अनुभव है महाराष्ट्र मंडल के साथ, वो सारी चीजें संक्षेप में आज की सभा के लिए रखें। स्वागत है सचिन जी। धन्यवाद संध्या जी, इतने अच्छे परिचय के लिए धन्यवाद पहले तो। और वसुधैव कुटुंबकम आपने जो आयोजन किया है, सभी ने किया है, वो सेम मेरी भी वही भावना है। सभी लोगों से एक अनुरोध है कि तो समय सीमा जो है 5 मिनट की है, तो क्या अपने समय में बहुत आप अगर रख सके तो हम बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद जी, जरूर। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे बैठे तो आभारी होंगे, उन लोगों को बुरा लगता है। इधर अच्छा लगेगा। चलिए, तो मैं ये शुरुआत ऐसे करता हूँ कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आप दुनिया में कहीं रहिए, सोने की लंका में रहिए, मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। आप में से कुछ श्रोताओं की बातें सुनकर अच्छा लगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो पहल है, भारत की ये पहल को, अपनी गरिमा को बढ़ाने के लिए मैं 3 भाषाओं का उपयोग करूंगा। महाराष्ट्रियन होने की वजह से मैं मराठी में भी बात करूंगा। और तो यह पहल जो है प्रधानमंत्री जी ने की है, सारे मंत्रालय, इंडियन हाई कमीशन हर जगह जिस जुड़े हुए हैं, और आपके जैसे जो आयोजक है, तो इस पहल का रंग हमें अभी गहरा होते नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो सम्मान की बात होती है कि हाउ पीपल परसीव यू, राइट? दैट स्टेटमेंटशिप overall globally has been demonstrated very strongly. The perception as an Indian is very strong. But ये मानते हुए अगर 2 दिन पहले की घटनाओं की बात की तो मन विषम न हो जाता है, क्योंकि ये भी हमारी पहचान है।
इस पहचान को हम लेकर जीते हैं व्हेन यू आर अब्रॉड। आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमारा जो भी चरितार्थ है, हमारा जो भी चरित्र है, ये हमारी पहचान है। और मुझे लगता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम में इससे, इन घटनाओं की वजह से हमारी जिम्मेवारी अधिक बढ़ती है, क्योंकि दुनिया हमें देख रही है। हर एक न्यूज को एनालाइज हर देश अपनी तरह से करता है। सिंगापुर की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत, अभी मैं हम सोने की लंका भी रही तो मुझे मेरी मातृभूमि और मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ, तो वो भारतीयता की वजह से सिंगापुर में जो भारतीयों का स्थान है उस पर थोड़ी एक मिनट की बात करूंगा मैं। यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है, नाउ गोइंग बैक टू इंग्लिश, इज बेसिकली देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हियर। दे आर इंडियन कम्युनिटीज divided and united by their uniqueness. Language is one, culture is one. यहाँ पे मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली, इवन संध्या जी जो काम करती है हिंदी भाषा के लिए, और Indian High Commissions, all these people are connected together, and Indian High Commission plays enormous role in connecting all of us. And then there are organizations like Lisha, Little India Shoppers Association. There is Indian community wing, which unites all of us. There are dialogues with ministers here in Singapore. All delegates coming from India, Indian High Commission invites us. That is the way we get to know what's happening, not only in India, but what is our perception, how people perceive us, right? So, and to do that, all of us unitedly work together cohesively and stand as a one strong community. हमारे यहाँ होली होती है, दिवाली होती है, गणेश उत्सव होता है, बंगाली एसोसिएशन का दुर्गा उत्सव होता है, थाईपुसम होता है। All events we celebrate together to showcase culture. Now coming to language, a lot of work is done by individual communities, and they all strive to ensure that your second generation, third generation, fourth generation, they still have the pride in their own language roots. मुझे लगता है भाषा अपनी संस्कृति है, और जिस दिन हम अपनी भाषा बोलना बंद करेंगे, शायद उस दिन हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो ये this is how Singapore's Indian community is closely knitted and united. Coming to business community, Indian business community, Singapore is one of the top countries in terms of FDIs coming to India, money routed to India. Singapore plays one of the best nation to play that neutral role, to bring people together. And there are Indian businessmen. I can tell you few of them. Those so GIS करके यहाँ पे Global Indian Institute, they help all Indian communities. Other schools are there, Indian schools. They unite people. Mr. Atul Temurnikar, who is the founder, I'll tell you, at least 20-30 communities, they use their facilities. They support all the initiatives that we can come together. Then coming to some of those business tycoons, I'll say there are many of those here. They contribute heavily to all these communities. So they are the bridges between India and Singapore in terms of investment, in terms of cultural ties, people to people talk. That's what our High Commissioner always used to say. अभी मैं थोड़ा मराठी में जो मेरे मन पर जिन विषयों का प्रभाव रहा है, और मुझे लगता है मैं 3 मिनट लिए, अभी 1 मिनट लूंगा to say one more minute. साने गुरुजी जो गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे, जिस प्रार्थना को सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. That is the only religion. Spread happiness and love. और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी हो, मोदी जी हो, सारी उनकी यंत्रणा है, इसी में है। भारत एक देश जो है, हम कभी खुद हो के किसी की निंदा, किसी के पहल से किसी से युद्ध, ये भारत की प्रतिमा नहीं है। और इसी वजह से हमारा सम्मान जग में बड़ा है कि हम पीस मेकर हैं। तो साने गुरुजी ने जैसे कहा था, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, जगीजे हीन अतिपतित, जगीजे दीन पद दलित, दया जाऊन उठवावे, जगाला प्रेम अर्पावे. प्रभूची लेकरे सारी, दयाला सर्व ही प्यारी, गुणाना तुच्छ लेखावे, जगाला प्रेम अर्पावे.
धरावा मोद विश्वात, असावे सौख्य जगतात, सदा हे ध्येय पूजावे, जगाला प्रेम अर्पावे. In short, what we are doing is all these learnings. I think now I'm able to do. We are able to. I'm practice becoming things. now technical person. Okay. Very good. I think someone is speaking, so Photo पर cursor लेकर. But maybe you should have taken this job. You cannot take it. I am aware of that. Maybe 25 years ago. धानुका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए. तो मराठीत जर सांगायचं झालं तर या विषयाचा विचार केला. साने गुरुजींनी जी प्रार्थना सांगितली ती मी प्रत्यक्षात अवलंबेल असं ज्या वेळेला प्रत्येक भारतीय माणूस म्हणेल त्यावेळेला आपण जगाला प्रेम अर्पू. आणि म्हणून आपण मध्यस्थाची भूमिका करू शकतो, आपण प्रमुखाची भूमिका करू शकतो, आपण नेतृत्वाची भूमिका करू शकतो. हे आज भारताने जगाला दाखवून दिलेलं आहे. काही घटना असतात त्याचे मनावरती परिणाम होतात आणि त्या घटनांचा सुद्धा विचार झाला पाहिजे, कारण ती आपली संस्कृती नाहीये. आणि त्यासाठी मला वाटतं भारतातील प्रशासन नक्कीच प्रयत्न करेल. या कार्यक्रमात मला बोलवल्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद मानतो. डॉक्टर संध्या यांचे विशेष धन्यवाद. आपण इथे संधी दिली. आपल्याला या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देतो आणि माझी रजा घेतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी. और बिल्कुल सिंगापुर में छोटा सा देश है, अगर आप सब जानते होंगे तो विश्व मानचित्र पर उसको लिटिल रेड डॉट कहा जाता है, मतलब एक छोटा सा बिंदु, लेकिन पहचान उसकी पूरी दुनिया में है. और कारण, बहुत बड़ा कारण भारतीय डायस्पोरा का भी है, क्योंकि यहाँ भारतीय डायस्पोरा 9% से भी ज्यादा है और यहाँ की चौथी आधिकारिक भाषा तमिल है. साथ ही तमिल के अलावा 5 अन्य भाषाएं यहाँ के विद्यालयों में द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी उनकी शिक्षा बच्चे उनमें मातृभाषा शिक्षा ले सकते हैं, वो लेते हैं, लेनी पड़ती है कह सकते हैं. तो जो यहाँ का भारतीय समुदाय है वो बहुत दुनिया के कई देशों से बहुत अलग है. अभी कई लोगों ने बात की कि भावी पीढ़ी को सीखनी चाहिए भाषा संस्कृति, तो उसमें मुझे लगता है सिंगापुर काफी आगे निकलेगा, क्योंकि यहाँ अपनी मातृभाषा की शिक्षा आवश्यक है. ये चुनाव नहीं है, बल्कि उन्हें पढ़नी है. उसके पीछे जो सरकार की सोच है वो बहुत अच्छी है कि भाषाएं हमें अपनी संस्कृति, हमें अपने रूट्स, हमें कल्चर सभी से जोड़ती हैं. तो इसलिए यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो हम भारतीय समुदाय के लोग इस समाज को दे रहे हैं और साथ ही इस समाज से हम ले रहे हैं. और अपने देश, चाहे वो भारत हो या सिंगापुर, दोनों को एक जन्मभूमि है हमारी, एक हमारी कर्म भूमि है, दोनों के प्रति बराबर, जिसे हम कहें सम्मान दे रहे हैं, दोनों के लिए बराबर हम कार्य कर रहे हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी. और महाराष्ट्र मंडल बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है. अतुल तिलमुकल जी जो यहाँ के मराठी समुदाय के चाहे वो प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है या कुछ, उनको विशेष निमंत्रण जाता है और वो जाते हैं उसे अटेंड करने. तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा भारत में भी किस तरह की है. तो वो और सिंगापुर में रहते हैं, तो बहुत अधिक इस समुदाय द्वारा कार्य किया जाता है. अब मैं अगला बुलाना चाहूंगी विनोद कुमार दुबे जी को, जो पेशे से जहाजी हैं, कविताएं, उपन्यास, कहानियां लिखने के शौकीन हैं और आज वो अपनी कविता सुनाएंगे. ज्यादा समय वो कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमेशा उनको जल्दी रहती है, जहाज समय से उड़ना चाहिए. वैसे वो उस वाले जहाज नहीं, पानी के जहाज में कार्य करते हैं, कैप्टन है पेशे से. मैं परिचय भी किसी का ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है. तो विनोद जी, मंच आपका. आइए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कीजिए. संध्या जी धन्यवाद. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है. जी बिल्कुल स्पष्ट. तो बिना देर किए मैं कविता सुनाता हूं और जैसा अनिल जी का आदेश है 5 मिनट के अंदर इसको समाप्त करता हूं. मेरी जो कविता है एक एनआरआई की मनोदशा, जो अपनी मिट्टी छोड़कर किसी और देश में रह रहा है, उसकी मनोदशा का गान है. वो कहता है कि वहां भी हम नहीं पूरे, वहां भी हम नहीं पूरे, यहाँ अब तक आभासी हैं, कहीं का जन्म है अपना, कहीं के हम प्रवासी हैं. ये पहली पीढ़ी के हर एनआरआई के दिल का किस्सा है. ये पहली पीढ़ी के हर एनआरआई के दिल का किस्सा है कि जितना उसमें विदेश
उतना ही भारत का हिस्सा है। यहाँ दौलत, यहाँ शोहरत, यहाँ जो हाल है अपना, यहाँ दौलत, यहाँ शोहरत, यहाँ जो हाल है अपना, अब इसी से पहचान अपनी है, यही ससुराल है अपना। मगर कैसे उसे भूलें, ऐसा जायका था वो, मगर कैसे उसे भूलें, ऐसा जायका था वो, जहां जन्मे हुनर सीखा, शायद मायका था वो। वहां के तंग हाली की यहाँ जब बात आती है, वहां के तंग हाली की यहाँ जब बात आती है, माथे पर शिकन की कुछ लकीरें खिंच ही जाती हैं। वहां बंदियों का यहाँ जब जिक्र होता है, सीना फूल जाता है, हमें भी फक्र होता है। दुनिया बदल रही हैं, रिश्ता पीछे छूट रहा है, पकड़ी है रस्सी मुट्ठी में, पर रेसा रेसा टूट रहा है। वाह। बच्चे समझते हैं हॉलीवुड उन्हें कब तक बॉलीवुड दिखाएंगे, उन्हें चाहिए पिज्जा और बर्गर, आखिर कब तक चावल दाल खिलाएंगे। तो कवि का दर्द है कि ऐ सड़क बिजली विकास, तुम क्यों इतनी देर से आए, कि तुम्हारी तलाश में कई मुल्क से हो गए पराए। और आखिरी पंक्तियां हैं कि अब यही नियति इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा। अब यही नियति इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा। एक मट्टी ने पाला पोसा, दूजे का नमक उधार रहेगा। कि हम नहीं पूरे यहाँ अब तक आभासी हैं, कहीं का जन्म है अपना, कहीं के हम प्रवासी हैं। शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विनोद जी। और आप तो बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं, हमें पता भी है। एक बार जोरदार तालियां हम फिर से बजाते हैं। संजय जी, बहुत धन्यवाद विनोद जी। विनोद जी का उपन्यास संजय जी, इंडियापा बहुत प्रसिद्ध संजय है, जी, साथ ही वीकेंड वाली कविता जी। संजय जी, जो सुनीता जी न्यूजीलैंड पता चला कि छूट गई है, तो अभी हम संक्षिप्त टिप्पणी के लिए संजय जी को एक बार बीच में बुलाते हैं। सुनीता जी को, सुनीता जी न्यूजीलैंड से यदि है तो वो अपनी बात कहें। न्यूजीलैंड से सुनीता जी। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वसुदेव कुटुंबकम। एक धरती, एक परिवार, एक उद्देश्य। और न्यूजीलैंड से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, और मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को, मेरी एक पुस्तक है चित प्रतीक्षित, और उसमें प्रवासी भारतीय होने के कारण हम अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, इस धरोहर को कैसे हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते हैं, इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी कविता, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूजीलैंड से प्रोग्राम सिंगापुर चला गया था, पर फिर भी आप लोगों ने मुझे जोड़ा। तो बहुत छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चाहूंगी। प्रवासी भारतीय तू। प्रवासी भारतीय तू, अपनी पैतृक जड़ों से यूं जुड़ तू। प्रवासी भारतीय तू, अपनी पैतृक जड़ों से यूं जुड़ तू। भेड़ बकरी की तरह मत कर अंधा अनुकरण यूं। प्रवासी भारतीय तू, अदम्य साहस समर्पण धैर्य से, अदम्य साहस समर्पण धैर्य से लिख अपनी नई दास्तां तू। प्रवासी भारतीय तू, किसी भौगोलिक सीमा में ना बंध यूं। यही बात हम कर रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम। किसी भौगोलिक सीमा में ना बंध तू, नई चेतना, नई प्रेरणा, नया संकल्प ले अब तू। प्रवासी भारतीय तू, प्रवासी भारतीय तू, नव निर्माण, नव प्रकाश का ध्वजा वाहक बन तू। प्रवासी भारतीय तू, प्रवासी भारतीय तू, ले शपथ,
अब क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जय हिंद जय भारत की बात कर रहे हैं, एक धरती एक परिवार, अपनी भाषा व संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो जीवित संदेश हम दे सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ले शपथ तन मन धन से भारतीय भाषा भारतीय संस्कृति का उन्नायक बनेगा तू। ले शपथ तन मन धन से भारतीय भाषा भारतीय संस्कृति का उन्नायक बनेगा तू। ले शपथ। वैश्वीकरण, वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ेगा, खुद भी पढ़ेगा, दूसरों को भी पढ़वाएगा तू। ले शपथ वैश्वीकरण व वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ेगा व पढ़वाएगा तू। ले शपथ। रास्ते कठिन भी हो तो क्या, आसान नहीं है क्योंकि हम प्रवासी हैं और यहाँ पर अपनी संस्कृति को अपनी एक दो दिन नहीं, ये नहीं कि हम प्रवासी भारतीय दिवस है या हिंदी दिवस है तब हम प्रयास करें। हर दिन, एक दो दिन नहीं, पूरे साल हर दिन बन जीवंत उदाहरण, अपनी नई कहानी अपनी नई जुबानी का कहीं नव निर्माण कर तू, प्रवासी भारतीय तू। वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ व पढ़वा तू। ले शपथ आने वाली नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की जीती जागती यह अमूल्य धरोहर उपहार में देगा तू। प्रवासी भारतीय तू। ले शपथ। कहीं देश के सम्मान में अपने कर्तव्य व ऊंचे मानदंडों से नींव का पत्थर बनेगा तू। ले शपथ, कर शपथ, ले शपथ। प्रवासी भारतीय तू अपनी पैतृक जड़ों से यूं जुड़ तू। प्रवासी भारतीय तू वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ेगा व पढ़वाएगा तू। जी शुक्रिया सुनीता जी। संध्या जी, आपने जोन के बाकी लोगों से कहे उससे पहले एक प्रोफेसर मिजो कामी जी काफी समय से जुड़े हुए हैं, शायद समय जो आगे बढ़ा उसका उनको अंदाजा नहीं था, तो मेरे ख्याल से एक बार प्रोफेसर मिजो कामी जी से आप अनुरोध कर लें और उसके बाद बाकी लोगों से। जी बिल्कुल। प्रोफेसर मिजो कामी जी को सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जापान से, और हम सभी उनसे परिचित हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। प्रोफेसर एमिरेट्स हैं वो ओसाका विश्वविद्यालय में, साथ ही कई अन्य सम्मानों से सम्मानित हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान, माफ कीजिएगा, विश्व हिंदी सम्मान के साथ ही कई अन्य सम्मान, सबसे बड़ा पद्मश्री सम्मान। मैं सभी चीजें मैंने कहा जैसे कि उनको हम एक तरफ रखते हुए सीधे उनको सुनने चलते हैं। तो मिजुकामी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई देता है जी? नमस्कार आदरणीय डॉक्टर अनिश जोशी जी और संध्या सिंह जी और विश्व भर के सभी बंधुओं और बांधवियों, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतनी बड़ी सभा में मुझे बोलने का मौका मिला, लेकिन मैं गलतफहमी में था क्योंकि अभी तक मैंने देखा बोलने वाले सभी लगभग प्रवासी भारतीय है। तो ये जापान के बारे में, जापान में भी है प्रवासी भारतीय बाहर के, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। आंकड़े बताता है कि 12 करोड़ है, 12 करोड़ छोटा है, लेकिन हम आप ठीक कह रहे हैं कि सभी हमने डायस्पोरा के प्रतिनिधियों को बुलाया था
जापानी होते हुए भारतीय है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से हमने आमंत्रित किया है। राम जी ने कहा कि आपको अवश्य सुनना है हमको, तो आप जी जी हाँ, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात जी। तो जापान के प्रवासी भारतीयों के बारे में कुछ परिचय देना चाहता हूँ। नए आंकड़े के मुताबिक तो पूरे जापान में 2% आजकल विदेशी है। उनमें से भारतीयों की संख्या लगभग 38,000 है, बहुत कम है। फिर भी जापान के हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कोरिया है, चीनी है, कोरिया है। उसके बाद दक्षिण एशियाई देशों में से नेपाली का नंबर आता है, जो कि 8वें नंबर पर है, और 87,000 तो नेपालियों का है, और 12वीं नंबर में भारत का आता है 38,000, और उसके बाद 14 नंबर में श्रीलंका का नंबर है 26,000 लगभग, और उसके बाद 21वें स्थान पर पाकिस्तानी 16,000 के लगभग, और 22वां बांग्लादेश वो 15,000 के लगभग है। तो बहुत कम है, फिर भी भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। ये 90 के दशक के पहले, यानी भारत की जो आर्थिक उदारीकरण के पहले, हमारा जो कोबे मेरा जन्म स्थान है, और कोबे में प्रवासी भारतीयों की सबसे अधिक थी। अभी भी है कि 2,000-3,000, बहुत कम है। और उदारीकरण के बाद सब टोक्यो में बहुत ज्यादा प्रवासी भारतीय रहने लगे। तो कोबे के भारतीय और टोक्यो के भारतीयों में अंतर ये है कि कोबे के भारतीयों को ओर्दो कमा कहते हैं। वो बहुत पुराने जमाने से कोबे और ओसाका में आके बस गए हैं, और कुछ लोगों ने जापानी नागरिकता को अपनाया है, और वो ज्यादातर वाणिज्य में लगे हैं, और जातिगत विवरण कहूँ तो सबसे अधिक गुजराती है, और सिंधी है, और पंजाबी है, और 3 मुख्य तौर पर ये सब बिजनेस कम्युनिटी है। कोई अच्छी हिंदी बोलने वाले बहुत कम हैं, तो इसलिए हमें तो शिकायत थी। कोई यूनिवर्सिटी में तो जो हिंदी सीख के आया, लेकिन जो कोबे में जाके अच्छी हिंदी बोलने वाले नहीं मिले। नहीं, कुछ अपवाद भी है, वो उसका जिक्र करूंगा। अच्छा, टोक्यो में जो भारतीय रह रहे हैं, सब उदारीकरण के बाद आए, उनको न्यू कमा कहते हैं, और ज्यादातर आईटी वाले हैं, और बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सैलरीमैन है। आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे जाएंगे, सैलरीमैन है। प्रोफेसर साहब, समय की थोड़ी सीमा है, थोड़ा सा आपको संक्षिप्त करना होगा। जी संक्षिप्त में। अच्छा, एक बार आंकड़ा छोड़ देता हूँ। खैर, अपवाद भी है कि जो कोबे के जो प्रवासी भारतीयों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था हिंदी सीखने में। मैंने ये जो इंडिया टुडे का जो अंश आपको अंक दिखाता हूँ, इनमें से मैंने अपनी कहानी लिखी, जो हिंदी सीखने के वे दिन। ये सभी लोग पूछते हैं, आपको हिंदी कैसे आपने हिंदी सीखने का निश्चय किया? तो ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत ही लंबी कहानी है। तो लेकिन मैं तो 3 मुख्य
प्रेरणात्मक तत्व था। एक प्रवासी भारतीयों ने, मतलब कोबे में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, जबकि मैं हाई स्कूल का लड़का था, बहुत मासूम लड़का था, 15 साल का। वो मैं कोबे शहर तो बहुत भारतीय रहते थे, तो उन लोगों ने मुझे प्रभावित किया था। बहुत सुंदर महिला को देख के, वो बहुत मासूम लड़के के लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ना, बहुत आकृष्ट हुआ। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो गुरु निरपेक्ष नीति से मैं प्रभावित हुआ था। ये जब 20 मई को मोदी जी हिरोशिमा आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उसका जो भारत की मीडिया में फैल गया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कुछ मीडिया ने को राजनीतिक का रंग दे दिया। मैंने कभी मोदी जी के सामने पंडित नेहरू जी का नाम नहीं लिया। अलग जो मीडिया के साथ साक्षात्कार हुआ था, तब मैंने विस्तार से कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब वो 85 के दशक में उनकी बहुत दुनिया भर में उनका नाम था, जैसे आजकल के नरेंद्र मोदी जी की तरह नेहरू जी की भी इज्जत और प्रतिष्ठा थी। तो तब बीजेपी तो मौजूद था ही नहीं ना। तो एक मीडिया ने ऐसा प्रचार किया कि नेहरू जी को कोसने वालों सुनो, इस तरह, मतलब ये शायद बीजेपी के समर्थक हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये उन दिनों आजकल जो जितनी इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान मोदी जी को मिलता है, उन दिनों नेहरू जी को मिलता था। और बीजेपी के समर्थक 80 साल पहले होते तो वो नेहरू जी के समर्थक होते। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन नेहरू जी ने जापान के लिए अच्छा काम भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। जापान गरीब देश था, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नामक कोई चीज नहीं है, और उद्योग की उत्पत्ति के लिए लौह अयस्क की बहुत जरूरत थी। जापान भारत में ज्यादा थी, जापान में बिल्कुल नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे, हालांकि निर्यात में पाबंदी थी भारत में, लेकिन जापान को जी इसको समेटते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में हैं और हर जगह रात हो रही है। जी, प्रवासी भारतीयों के बारे में तो बस इतना कहा। हाँ, एक व्यक्ति का नाम लेना ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में कम से कम लक्ष्मीधर मानवीय जी, ये हिंदी जगत जानता है। वो मेरे कोलीग थे, 5 साल पहले उनका देहांत हुआ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहने को बहुत कुछ है। और हाँ, मोदी जी के साथ मुलाकात हुई, ये इसका तो जिक्र करना ही पड़ेगा कि अभी 2 महीने पहले की बात है। मोदी जी हिरोशिमा आए थे, और आश्चर्य की बात, मुझे अचानक बुलाया गया कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से, मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। अभी तक मोदी जी से 5 बार मिल चुका हूँ, लेकिन वो सबके सामने, और मुश्किल से 1 मिनट नमस्कार करने का मौका मिले, सामने 5 मिनट तक बोलने का समय कहाँ मिलेगा। ऐसे साधारण लोगों के लिए मिलना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया अपनी तरफ से, ये आश्चर्य की बात है। और मिला, और बहुत हिंदी की बातें की, और उन्होंने बहुत और बहुत अच्छा लगा। ये पूरा मीडिया में, दुनिया भर के मीडिया में फैलाया गया। इसमें भाई मैं अपनी कोबे के प्रवासी भारतीयों का जिक्र भी करूंगा। सबसे पहले ये मुझे बताया था कि आपका ये मोदी जी के साथ मुलाकात हुई, बधाई बधाई बहुत। ये सबसे पहले ये खबर देने वाले और बधाई देने वाले कोबे के प्रवासी भारतीय थे। इसलिए अगर आज के कार्यक्रम के बारे में पूरा जानकारी मिली होती तो मैं कम से कम 1-2 प्रवासी भारतीयों को यही बुला सकता था, लेकिन ये मुझे
पता नहीं था, इसलिए क्षमा कीजिए। और मैं समझता हूँ कि कोविड जी सर मेरे तालियों के साथ हम उनका बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। और ये संजय जी आगे ले लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिजुकामी जी। और अब सीधे सिंगापुर से एक वीडियो है जिसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ सीधे 2 वक्ता जो जुड़े हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगी ताकि जल्दी से संक्षेप में अपनी बात वो रख सके। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस मीनाक्षी Sabapati. She is former senior broadcaster and TV newscaster with Singapore National Channel MediaCorp. Meenakshi ji. Okay, let me unmute. Okay, am I? Thank you. Okay, vanakkam. Even though I used to be a senior broadcaster with a Tamil channel and presently a Tamil teacher, I would like to speak in English for the benefit of those who may not understand the language. Okay, and I'm very glad to be part of this event. And a brief introduction of myself. I'm a born and brought up Singaporean, okay, and educated as well in National University of Singapore and National Institute of Education. And I have authored a few books, including the book called Simple Tamil, published by Europhone, and of course Ariwoma Nam, which means do we know, okay, by the MediaCorp channel itself. Okay, I was asked to speak about the broadcasting and media and how it provides some avenue for culture and promotion of cultural value. So yeah, but keep it to 4 to 5 minutes because of the time constraint. No, in fact, I intend to finish it in 3 minutes. Thank you. I see it's getting very, very packed and I'm a bit tense there also. Okay, so to cut it short, in MediaCorp, we used to have so many programs, educational and informative, and the culture or religious values, so to say, was propagated by a number of programs. And the most famous one that was produced by me was called Ariwoma Nam, which led to a lot of, which led to me getting a lot of listeners from elsewhere. Okay, just to let you know, last time the MediaCorp radio was able to reach people all over the world, including places like USA. Like when we have a night program, it would be afternoon in the US, right? So people used to listen to the Tamil programs and respond. And so it so happens that everywhere I go, I see people remembering, understanding, and the program that became very popular. You're not audible. Please keep your mic this way. Yeah. Hold the. Yeah, now it's better. Able to hear now? Okay. Yes, So, thank you. The focus was that we let people know that for every tradition and practice that we have, there is a basic reason for it. We cannot just ignore everything as superstition, okay, as was propagated by the West. We shouldn't fall for it. We must believe that our religion and our customs have some value and scientific reason behind it. Okay, that was the focus. And we have made it very, very successful. So much so that, you know, a few years ago when I went to USA for a Diaspora Tamil Education Conference, the people there remembered this and they were very proud. Okay, the biggest success was when people say they were able to stand up for themselves. They are proud to be Hindus. They don't fall under the pressure from other people who might say, okay, look at your religion, it has got so many gods and so on. So now we are able to stand for ourselves because the biggest strength comes from knowledge. So our main mission was to bring the knowledge to people through media. Okay, so to cut it short, I'm just going to say that we have made it. Last time we used media like radio and TV. Now we use the online media, and let's keep it that way. Let's join together, connect the whole world. And like Agatya Munivar and Tirumular, who could fly over the sky, we now fly through media, okay, social media. So we shall do it now via the internet and keep all of us connected. And Jai Hind, let's be proud Hindus. Thank you. Thank you, Ms. Meenakshi. Thank you so much for keeping it short and sweet. Thank you.
Now I would like to call Mr. Seshadri Kannan ji. He is a motivational speaker, religious discourse, debate speaker. He is working in a marine sector. He is a senior project engineer at satellite communication industry. Mr. Seshadri ji. Greetings of the day to my brothers and sisters of the Vasudhaiva Kudumbakam. From where the word Vasudhaiva Kudumbakam is derived, it is from the Mahopanishad. Ayam Pandurayam Nedi Ganana Lagusedasam Udara Charidanam Tu Vasudhaiva Kudumbakam. This is from the Upanishad, which talk about the Vasudhaiva Kudumbakam. What is the meaning of this? The person, one who differentiate between the living things and between the people. He is my Bandhu, he is my Mitran, he is my Chatru, like that, who differentiate. He is a mean-minded person. But one who overcome this mindset and treat everyone equally is a noble person. He is the one who understands the truth that this world is one family, which is called Vasudhaiva Kudumbakam. What is Kudumbakam? It is a family. How a family can be happy? Family members should treat and accept each other with love. The same applies to the Vasudhaiva Kudumbakam. Everyone in this universe should treat each other as equal, accept and show love to everyone. This is what Andal in her Tirupavai mentioned, that Vayyattu Valvirgal. That is a Veda Vakyam. What it says, Sarvam Vishnu Mayam Jagadu. The meaning of this word is Vishnu is omnipresence. Vishnu is the one who present in you, is the same Vishnu present in me and all the creatures of this world. That's called Sarvam Vishnu Mayam Jagadu. This is the same is mentioned in Islam. The Arabic word Allah called the God who is omnipresent. Whatever the religion, it may be Islam, it may be Sanatana Dharma or any, that's all teach. The world is one family. I would like to quote from the famous lines of Nahur Hanifa, who is a very famous Tamil singer who sung many Islamic songs. He mentions, Alai adikkum kadal padaithu alagu paarpavan, malayin meedum kadalin meedum aatchi seibavan. God, he is the one creates the sea, and he is the one ruling the sea and the hill also. This is the same concept of Sarvam Vishnu Mayam Jagadu. This is explained in the Nammalvar Thiruvaimozhi. I believe that all of you heard about the Nalayira Divya Prabandham, which is the transcript of Tamil Vedas. Especially Nammalvar is considered as the poet who translate, who bring the essence of the 4 Vedas into Tamil. That's why he is called Vedam Tamil Seida Maran Sadagoban. He mentions in this Pasuram, Nam, Avan, Ivan, Uvan, Aval, Ival, Yaval, Tam, Avar, Ivar, Uvar, Adu, Idu, Udu, Yedu, Vim Avai, Ivai, Uvai, Avai Nalam, Thingavai, Am Avai, Ayavai, I Nindra Avare. What is the simple meaning of this? You may call anyone he, she, it, whatever, but in all the things, who is inside is only the God. You clearly read this Pasuram. He never mentioned the God is Vishnu, Parameshwara or whatever. He mentioned he is the one living in all the creatures. You can name it anything. This is the basics of the Vasudhaiva Kudumbakam. If we understand this, everyone understands that every creature in the world is created by the same Almighty, and he is the one present in every creature of the world. Then we can start showering our love to every creature
and the Vasudhaiva Kudumbakam will prosper. There are so many cultures, there are so many way of worships, but all these things leads to the same Almighty. You can call him as Vishnu, you can call him as Parameshwara, you can call him as Allah or Jesus, but only the one God is operating the universe. This is also very clearly mentioned in the Nammalvar, another pasuram in his Thiruvaimozhi. Avaravar tamadamar arivagai vagai, avaravar irayavar ena adi adaivargal. Avaravar irayavar kuraivelar, irayavar avaravar vidivadi adaya nindranare. The simple literary meaning of this pasuram is, you can pray any God, any form of worship, everything is equal. Based on the faith which you follow, you will reach the Almighty. So, whatever the God you are, everyone is equal. If we understand this and start accept everyone and shower our love to each other, Vasudhaiva Kudumbakam will prosper. The same, I'm concluding my speech by quoting another slogan, which is derived based on the Manusmriti. Why I'm mentioning Manusmriti? Today's many people misunderstand what Manusmriti is telling, but there is a one portion in Manusmriti is Mitra Labha. Mitra means friend. We may now request, please come to the concluding part of your speech. Yeah. So the Mitra Labham, Ayam Nijaparo Vedi Ganana Lagusedasam Udara Charidanam tu Vasudhaiva Kudumbakam. If you want to have good friends, treat them equally and treat them as your family. Vasudhaiva Kudumbakam will prosper. Thank you very much for the wonderful opportunity. Thanks. थैंक यू मिस्टर ब्रदर, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी हरीश पंत जी को, जो सिंगापुर उत्तराखंड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हरीश जी 3 से 4 मिनट में बस अपनी बात आप रखिए। बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी। नमस्कार सभी आपका सदस्यों। वीडियो अपना अगर आप ऑन कर सके। वीडियो मेरा समहाउ कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसमें, तो मैं कोशिश ठीक है, आप जल्दी से फिर अपनी बात रखिए जी। धन्यवाद। सभी उपस्थित सदस्यों, महानुभाव को मेरा सादर नमस्कार। मैं हरीश पंत उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर का वर्तमान में प्रेसिडेंट हूं। जैसा कि आपको आज का विषय वासुदेव कुटुंबकम को विश्व के अलग अलग भाग से रहते हुए हम अपने जीवन में किस प्रकार से वसुदेव कुटुंबकम के भाव अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उस पर अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। पूरे पृथ्वी को परिवार मानकर एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करने के लिए वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन हर किसी को करना चाहिए। पृथ्वी के हर एक जीव को समझने की जरूरत है कि हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है। सभी का अस्तित्व एक दूसरे के कारण ही संभव है। इसलिए एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, सहयोग, अहिंसा, संवाद के माध्यम से मानव एक दूसरे के बीच सद्भावना हासिल कर सकता है। वसुदेव कुटुंबकम का आपसी प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्यार करोड़ों लोगों को एकजुट करता है। इसमें एकता स्थापित करता है। एक दूसरे की भावना को समझ समाज के हर धर्म और संप्रदाय को लोगों को अपनी समझ विकसित करने की जरूरत है, ताकि वो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाएं। संवाद के माध्यम से मानव एक दूसरे के बीच सद्भावना हासिल कर सकता है। मैं सन 1994 में सिंगापुर आया था। यहाँ सिर्फ एक परिवार को जानता था। धीरे धीरे मेरा परिचय अन्य परिवारों से हुआ। साथ ही उत्तराखंड के परिवारों की संख्या भी बढ़ी। विश्व के विभिन्न समुदायों से संपर्क हुआ, मेल मिलाप बढ़ा और हम एक परिवार का हिस्सा लगने लगे। और जहां तक सिंगापुर में उत्तराखंड से जुड़े लोगों की बात की जाए, तो आज हम 1000 से भी ज्यादा परिवार सिंगापुर में उपस्थित हैं। हम अपने परिवारों को परिवार को भी जोड़ने का निरंतर काम कर रहे हैं। 8 वर्ष पूर्व जब हमारे एसोसिएशन उत्तराखंड एसोसिएशन सिंगापुर की स्थापना हुई, अपने अपने स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसमें सभी समुदायों के लोगों को भागीदार बनाया।
अपनी संस्कृति और अपने भोजन से हमने सभी को आकर्षित किया एवं आने वाले 6 अगस्त को हम उत्तराखंड कौथी का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और सभी समुदायों को आमंत्रित करते हैं। पिछले कई वर्षों से यही निरंतर प्रयास हमारा रहा है कि विश्व में जहां भी रहें एक दूसरे से एक परिवार के हिस्से की तरह जुड़े रहें। यही भावना वसुधैव कुटुंबकम को आगे की ओर बढ़ाएगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को उत्तराखंड एसोसिएशन की ओर से साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। और इसके साथ ही हम सिंगापुर से आखिरी वक्ता की तरफ बढ़ते हैं, मिस्टर केवी राव जी। केवी राव जी यहाँ के कई बड़े पदों पर रह चुके हैं और वो इस समय रेजिडेंट डायरेक्टर है आसियान के टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। कई कंपनी के बोर्ड मेंबर है, जैसे कि अगर मैं सिंगापुर की भी बात करूं तो सिंडा, जो कि सिंगापुर इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उसके बोर्ड ट्रस्टी हैं, वो बोर्ड एडवाइजर है सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, वाइस चेयरमैन है सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन, ऐसे सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स आदि कई ऐसी संस्थाओं के वो बड़ी बड़ी संस्थाओं के वो मेंबर बहुत बड़ा है। इसलिए मैं सभी छोड़ते हुए, चूंकि वो उपस्थित नहीं है, उनका वीडियो है, इसलिए मैं अभी वीडियो साझा ना करते हुए पहले मैं मुझे लगता है कि या मैं एक बार एक प्रयास कर लेती हूँ। अगर वीडियो चल गया तो सिर्फ 2 मिनट ही चलाऊंगी और फिर उसके बाद हम दूसरे जोन की तरफ बढ़ चलेंगे। मुझे बताइए अगर आवाज आ रही है। नमस्कार, I'm KV Rao speaking to you from Singapore. After having lived in this part of the world for more than half my life and over 3 decades. When you look upon the contribution of India, Indians and Indian culture in the world, it is very important to look at our own history of immigration. Today, more than 35 million Indian origin people live around the world. That is almost the population of a country. And you will find Indians in perhaps all the 300 plus countries of the world. The past history dates back to those days of the kings and kingdoms, when Indian empires had influence right up to Korea, Cambodia, Indonesia, in this part of the world, including South Asian countries. There's a long history, and it dates back to a couple of thousand years. There is a shared culture of dance, art, music, and influence into their languages and literature too from the ancient times. The second part of the history is the colonial part of the history, which was influenced largely by the British regime, when many Indian indenture labor, like the Girmitias, were moved under force into countries like Maldives, Fiji, Mauritius, and also labor into the Straits areas of Malaysia, Singapore, and the region. The whole industry of sugar in that part of the world was served by the Indian labor, with or without their wishes. If you look at our part of the world, yes, the entire palm plantations and the palm oil industry and plantation industry and the rubber industry was largely manned by labor brought by during the British times. And this history dates back to about 200 plus years. However, all of these tribes and people have assimilated so much that today they have become part of their own countries. The third wave is the wave of educated Indians, the doctors, the engineers, the lawyers, the scientists, the astronauts, the bankers who have moved to US, Europe, Southeast Asia, and all over. And the fourth, or the future wave, or the postmodern wave, is of Indian students who are found in all around the world. And for the next about 50 years, they would be strongly influencing innovation, discovery. They are there in information technology, the whole surge on artificial intelligence, on programming, on design,
name it, and you have all these Indians. In fact, it makes you feel proud when the Prime Minister of India speaks in the US Senate and talks about the Samosa caucus recently. Coming to a little bit more on Singapore, I would like to share that I'm associated with some wonderful institutions, and Singapore is truly multicultural, multi-ethnic and multi-religious. सार्वधार्मिक संस्था है, सब तरह के languages बोलते हैं, और if you see this country, the initial Indian immigrants came about 203 or 204 years ago from Tamil Nadu largely, and one must recognize that the Tamils have earned the respect of the communities here, and officially the fourth language of Singapore is Tamil. And the news is read in Tamil, the currency notes carry Tamil, and it is so well understood in this whole place that mostly anyone who looks Indian is perhaps speaking Tamil, which may not be the case. In the modern times, in the more recent times, Singapore has more than 18 or 20 languages of India spoken in the small Indian population, Indian diaspora, who celebrate their festivals, their rituals, their food fairs, and name it what have you. It's a very, very culturally alive place. I also see that wherever we Indians are there, we are a vibrant society, and every one Indian makes a lot of impact in the community in terms of his activities. And I would say the per capita cultural quotient of an Indian is much higher than perhaps anyone else, because we lead a life which is very demonstrative of our joys, of our beliefs, of our rituals, of our festivals, and we make everyone come together during these occasions, our neighbors, our friends, and multicultural people. And that is one of the reasons today Indian weddings have become the most popular locations for foreigners to come and enjoy our culture, Indian birthday parties, and name it. We have it all, and we are a vibrant set of people everywhere. Let me share with you a little bit about Singapore Indian Fine Arts Society, which I chair in Singapore. This was started in 1949. We are 74 years old. We have 40 staff, 28 full-time teachers, and 18 faculties where we teach Indian classical music, डांस एंड आर्ट. हमारे यहाँ कर्नाटिक म्यूजिक है, मृदंगम है, मैं वीडियो का लिंक वैसे साझा कर चुकी हूँ. अब मैं तो यहाँ सिंगापुर को हम विराम देते हैं, चूंकि एशिया भाग इस समय हम कर रहे हैं. पहले फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हुआ, उसके बाद ये एशिया चल रहा है. तो अब इस कड़ी में मैं हांगकांग से बुलाना चाहूंगी. फ्रॉम हांगकांग आई वुड लाइक टू invite Dr. May Chitra ji. From Hong Kong, Dr. May Chitra ji. Yes, I'm here. Yeah. எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்ற குறளுடன் I'm going to speak in Tamil because I've asked to do it, and I hope you'll just bear with me for 6 minutes because it's only one person from Hong Kong, so I think I'll take that 6 minutes. இந்த மாபெரும் இணைய வழியில் இந்தியர்களை இணைக்கும் இந்த மாபெரும் இணைய வழி கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து இந்திய நெஞ்சங்களுக்கும் மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு விழா இனிதே நடக்க வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை பற்றிய ஒரு சிறு அனுபவம். கணிதம் மற்றும் கணினி செயலிகளில் என்று 2 முதுகலை பட்டம் சென்னையில் பெற்றவள். 25 ஆண்டுகள் ஹாங்காங் வாழ்க்கையின் போது சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங்கில் பகுதி நேர பணிபுரிந்து கொண்டு தகவல் அமைப்பில் முனைவர் பட்டம், டாக்டரேட் இன் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். நாங்கள் ஹாங்காங்கில் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவிக்க வந்துள்ளேன். தற்போது ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக தற்காலிகமாக பெங்களூரில் வாழ்ந்து வருகிறேன். நான் தன்னார்வத்தால் 4 வருடங்களாய் தமிழ் கொரிய, தமிழ் சீனம், தமிழ் சுமேரிய பண்டைய தொடர்புகளை தமிழ் அண்ட் கொரியா, தமிழ் சைனா அண்ட் தமிழ் சுமேரியா இஸ் மை research work going on now. இந்த ஆய்வுகளின் மூலம் இந்தியர்கள், குறிப்பாக தமிழர்கள் எப்படி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற கணியன் பூங்குன்றனாரின் வாக்கிற்கு ஏற்ப திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடிய போதும் அந்தந்த நாடுகளில் அவர்களுடன் சேர்ந்து பணியாற்றி அவர்களை வளர்ச்சி அடைய செய்திருப்பதை காண முடிந்தது. இந்த யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்பதே
வசுதேவ குடும்பகத்திற்கு இணையான தமிழ் கூற்று. திஸ் இஸ் த ஈக்குவலன்ட் ஃபார் வசுதேவ குடும்பகம், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். ஹாங்காங்கில் வணிக வளர்ச்சிக்கு இந்தியர்கள் பங்கு முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. 70,000க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் வாழும் இந்த நகரில் 70,000 people are living, more than 70,000 Indians are there. பல மாநிலத்தவர்கள் வாழ்கின்றனர். இந்திய பண்பாட்டை மறக்காமல் இருக்க அந்தந்த மாநிலத்தவர்கள் சங்கங்களை அமைத்து கூடி மகிழ்கின்றனர். There are different cultural associations for each and every state. இவர்கள் அனைவரையும் இணைக்கும் பாலமாய் 2000 முதல் சில்ட்ரன் கல்ச்சுரல் குரூப் CCG இந்திய குழந்தைகளை கூட்டி இந்திய பண்பாட்டை அறியும்படி வினாடி வினா, நடனம், பாடல் போன்ற நிகழ்வுகளை நடத்தி வருகிறது. மேடை நிகழ்ச்சிகளையும் RTHK என்ற ஹாங்காங் அரசின் வானொலியில் 12 தொடர்களை தயாரித்துள்ளது. 12 serials were done for RTHK, that is Radio TV Hong Kong in Hong Kong. Youth Festival, CCG CIBS Day. So we celebrate 2 of them from the CCG. இந்திய விழாக்கள் மட்டுமன்றி ஹாங்காங் அரசும் மற்ற தன்னார்வ குழுக்களும் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளில் குழந்தைகளையும் பெற்றோர்களையும் பங்கேற்க வைத்து கலை நிகழ்ச்சிகள், அரங்குகள் மூலமாக இந்திய பண்பாட்டை சர்வதேச அளவில் அனைவருக்கும் அறிய வண்ணம் செய்து வருகிறது. So we just teach Indian culture to both Indians and the Chinese through various activities from CCG. இதன் மற்றொரு முக்கிய பணி, I want to tell, this is the important one, அனைத்து இந்தியர்களை இணைக்கும் பாலமாய் ஒரு இந்திய பள்ளியை துவக்கும் முயற்சி. So we were trying to get an Indian school in Hong Kong. It was a 15 years of effort. அங்கு வாழும் இந்தியர்களுக்கு இது பல ஆண்டுகளாய் குறையாய் இருக்கிறது. நானும் மேலும் கல்வியில் சிறந்த இருவர் சேர்ந்து 3 ஆண்டு காலம் சீனாவின் குவாங்ஜவ் நகரில் பள்ளியை நடத்தும் வாய்ப்பு கிட்டியது. அதனால் இந்த பள்ளி அவசியம் வேண்டும் என்று ஊக்கமளித்தது. ஆயினும் இந்த அனுபவம் ஹாங்காங்கில் ஒரு பள்ளியை நிறுவ மேலும் ஊக்கப்படுத்தியது. 2 முறை சர்வே எடுத்து, we did 2 times survey and we gave the request to the government, Hong Kong government. இந்த அரங்கில் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்க விரும்புகிறேன். I request this audience to just listen to this. சிறிய நாடுகளான ஜப்பான், கொரியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகள் பள்ளிகளை நடத்தும் போது இந்தியாவிற்கென்று ஒரு பள்ளி நிறுவப்பட அரசும் நிதியாளர்களும் கூடி உதவ வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வேண்டுகோள். ஹாங்காங் பாஸ்போர்ட், அடுத்த one more request. ஹாங்காங் பாஸ்போர்ட் இருந்தால் 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பயணத்திற்கு முன் விசா வேண்டியதில்லை. We don't need visa from Hong Kong passport. இதனால் என் கணவர் ஹாங்காங் பாஸ்போர்ட் பெற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அவரது வேலை நிமித்தமாய் 50க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு சென்று அவர் ஹாங்காங் பாஸ்போர்ட் பெறுவது பயணத்தை எளிதாக்கும் என்று எண்ணியதால் he got a passport, Hong Kong passport, because he was traveling for too many countries. இது போன்று பலரும் ஹாங்காங்கில் உள்ளனர். இதை கூறி என்னுடைய 2ஆம் வேண்டுகோளை வைக்கிறேன். உலகளாவிய இந்தியர்களை ஒருங்கிணைக்கும் வேளையில், you are just combining all the Indians at this time, you have to have a இந்தியர்களை ஒருங்கிணைக்கும் வேளையில் பல நாடுகளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு இந்தியர்களின் வெளிநாட்டு பயணங்களை எளிதாக்க வேண்டுகிறேன். ஹாங்காங்கில் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக் கழகம் பல இந்திய சங்கங்களை இணைத்து இந்திய விழாவை நடத்தியதை இங்கு குறிப்பிட வேண்டும். அதே போன்று ஹாங்காங் அரசும் ஒரு முறை இந்திய விழாவை எடுத்தது. இது அனைவரையும் இணைத்து வெளிநாடுகளில் வாழும் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து இந்தியர்கள் மொழி வேறானாலும் உணர்வுகள் என்றும் ஒன்றுதான், இந்திய உணர்வு ஒன்றுதான் என்பதை இந்த விழாக்கள் மூலம் அறியலாம். முகலாயர்களின் ஆட்சிகளினாலும் வெள்ளையர்களின் அடக்குமுறையாலும் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகெங்கும் பெருமை பெற்று விளங்கிய இந்தியா தன் வரலாற்றை மறந்து வாழ்ந்து வரும் இந்த தருணத்தில் இத்தகைய இணையவழி அரங்குகள் அந்த பெருமையை மீட்டு கொண்டு வரும் முயற்சி என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து கொண்டு வாழ்வது இது வழிவகுக்கும் என்பது உறுதி. Before concluding, I would like to tell my request in English. Make Indian passport an international one like Hong Kong passport, because we don't need any visa for more than 100 countries. Take steps to have an Indian school in Hong Kong and thereafter in China to spread our Indian culture and bring Indians together in this region. இந்த வாய்ப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்த அனைத்து முனைவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. இந்த அரங்கு மேன்மேலும் பல நாடுகளுடன் தொடர்பு கொண்டு பல விஷயங்களை செய்ய வேண்டும். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். உலக மூத்த குடியான தமிழரின் வாக்கிற்கு இணையாக வசுந்தேவ குடும்பகம் ஒன்றிணைக்க வாழ்த்துக்கள் கூறி என் உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். नंद्री, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू. Now I would like to call Miss Priya Lakshmi Murugasan from Philippines.
Miss Priya Lakshmi. Priya ji, are you there? No, Priya is actually, she waited for last 2 hours. She just moved to another place now. Okay. I would like to call from Philippines now, Miss, Sri Nalakumar RS. Yes, hi. Hi, Okay. good evening. Sorry for keep everyone. you waiting. Yeah, thank you. No problems. I actually wanted to hear from Priya more. Good evening to all, and thank you for giving the opportunity to share. I've been learning a lot from all of you. Probably from Philippines, it's a different situation here. We are very small in numbers from India here, so we don't have a big movement to share things what I'm hearing from other countries like Singapore and Australia and New Zealand and Fiji. But great, and I hope Philippines also will soon become at one time to have a very strong organization here. Let me share a little demographic about the Indians in Philippines. In Philippines, most of the Indians here come for a corporate job. A good 80% of the population stays here from 3 to 4 years, and then they return back to a different country or to India. Exceptions like me and others, we stay here for a longer time, for a longer work. But the number of floating populations here are quite high. As you know, Philippines is a BPO market. India used to lead the BPO market, so lots of Indian BPO companies are here, and therefore it brings in lots of Indians to come and then stabilize some of the operations here. So that way, the unique opportunity or a challenge in Philippines is we see lots of floating Indian populations, very small base. That puts us into challenge in terms of organizing very large events, because we have to dip into that very smaller base permanent population. But we still manage to do some special events. Mostly the Indian festivals like Diwali, Pongal, Shankarandi are those events which really bring us all together. And through the social medias and the WhatsApp groups, we are also able to reach out to those visiting Indians. Together, we all make it as a success. Currently, Diwali seems to be one of the biggest successful event here. We did get the support of one local malls who sponsor us every year for the space. There are lots of good mix of South, West, and North and East Indian populations are here. So we get the opportunity to listen to all the musics. I should say that these festivals and the Hindu temples are the congregate for us to continue to bring and introduce the cultures to our next generation, as well as to the local Filipinos here in terms of what India is, what culture is. And as the teas and samosas are getting famous in the world, I should say the food group channels are the first channels where the Indian would come and look for, hey, where is the Indian food I can get? And that is one of the attractions for us to bring the groups together, and we know and we try to help each other. The one common thing I should say with the roots of the Indians, which we bring in here, is anybody who visits India, who come to Facebook, any help needed or posted on the social media, I could see the number of responses being floated very quick, and then try to make sure that the Indian never fails here is very good. I always feel very appreciated and very grateful to being in India to see when those help flows in, and then we are able to bring up everyone. With that, in my mind, being an IT guy here, I'm always looking at what could be another way of bringing in these both permanent and Sir, we may now request to please come to the concluding part. Sure. Please. I'm looking at another new way to bring all these visiting and permanent Indians to a single forum in a much easier and faster way, and collaborate and enjoy.
Thank you for the opportunity. And if Priya should be coming online back soon, and I will ping you so that we can call her later. Thank you. Thank you so much, Thanks a Mr. lot. Nalakumar. Yeah. Thank you so much. We will see if we can put Priya in. Definitely, you let us know when she is here. अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंडोनेशिया से एक ही जुड़ सके हैं, तो उनको हम पहले सुन के और फिर मैं शिखा जी को दूंगी थाईलैंड और आगे ले चलने के लिए। तो इंडोनेशिया से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ई मादे धर्मयश जी। इनके लिए परिचय बहुत लंबा है, मैं बिल्कुल भी परिचय में समय ना गंवाते हुए, क्योंकि हम सभी इनसे परिचित है, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें और 700 से अधिक लेख प्रकाशित इनके हुए हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका एकेडमिक काम कितना है। इंडोनेशिया और पश्चिमी देशों में, विशेषकर माल्टा, पुर्तगाल और इटली में कई योग और ध्यान केंद्रों का ये प्रबंधन करते हैं। सिर्फ इतने छोटा सा ही परिचय देते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ई मादे धर्मयश जी को। क्या कर रहे हैं? मैं देखती, मैंने तो किया कहीं कहीं जगह। ओम स्वास्थ्यास्तु। डॉक्टर संध्या जी को प्रणाम। श्री श्याम पांडे जी को प्रणाम। नमस्कार मेंबर है, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। और अच्छा लगा जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के ऑफिस के जो मीटिंग रूम का है दृश्य, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। एक भारत एक जो विशेषताएं जो बहुतों में से एक है, वो है संस्कृत साहित्य। इसमें संस्कृत साहित्य एक जैसे भा एक प्रकाश रहता है, भा रहता है, तो वही है फैलता है दुनिया में, और वही है जैसे हम मानते हैं सा प्रथमा विश्ववारा, सबसे शुरू भारत से ही शुरू फैला हुआ सारे संसार में। वैसे भी हमारे इंडोनेशिया में यही जो संस्कृत साहित्य का प्रभाव है बहुत काफी अधिक, बहुत अधिक है, और अति उत्तम काव्य साहित्य निकला जो अपने मूल से आके एक अलग असली रूप बन के निकला और समाज को प्रकाश देते हैं, गाइडेंस देते हैं। इसी से जैसे संस्कृत साहित्य एक एक शास्त्र हम देखते हैं, वो सब प्रकाश ही प्रकाश देते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, दीपक जैसे। और दुनिया को यही चाहिए, प्रकाश ही प्रकाश। और भारत का जो असली प्रचार प्रसार है, जहाँ हम भारतीय या संस्कृत साहित्य प्रचार प्रसार करते हैं, उसी में भारत का जो विशेषताएं हैं दिखेगा। और इंडोनेशिया में यही है, अनगिनत साहित्य निकला है संस्कृत साहित्य से। और जैसे साहित्य से, संस्कृत साहित्य से संस्कृति निकलता है, वैसे भी आजकल सारे इंडोनेशिया में विशेष रूप में बाली तथा जावा, उसमें जीवित संस्कृति है जो भारतीय की संस्कृति को दिखाता है। आप सभी को मेरा निमंत्रण है, पधारिएगा बाली और सेंट्रल जावा। आप खुद देखेंगे हर कदम कदम पर भारतीय संस्कृति, बोलचाल, नाम है, कला में सब हमारे ट्रेडिशन, वही सब भारतीय संस्कृति दिखाता है। तो ये है एक जो इस मीटिंग में शायद यही हम इंडोनेशिया की तरफ से हम याद दिलाते हैं, never forget to spread your Sanskrit literature, and never forget to bring this Sanskrit Sahitya, Sanskrit literature to your children, to your next generation, because our future is our children.
प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। संध्या जी, कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स आप भी अपने सत्र के लिए कुछ कहना चाहें तो कहिए, और फिर उसके बाद दूसरे सत्र पर चलते हैं। अभी अनिल जी मलेशिया भी है यहाँ। अभी मलेशिया है, ठीक है, मलेशिया को बुलवा लो। आपके पड़ोसी हैं, जल्दी जल्दी करो, अभी समय कम है। हाँ, पहले काफी देर हो गई है, इसलिए अभी बीच में, उसके पहले भी कंबोडिया और कई देश बीच में हैं जो अभी रुके हुए हैं। इमादी जी, आपका हो गया? हाँ जी, अगर और जी ठीक है। शायद इतना ही, बस आपको सभी को प्रणाम करना है और धन्यवाद सुनने से मुझे धन्यवाद बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जल्दी से बुलाती हूँ, मलेशिया की तरफ चलते हैं और मलेशिया से मैं अंजू पुरोहित को सबसे पहले बुलाना चाहूंगी। अंजू पुरोहित जी लेखिका हैं, साथ ही केएल बिजनेस अड्डा के सह संस्थापक है, जो महिलाओं की में उद्यमशीलता और व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संस्था है। परिचय मैं सबका काट रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। अंजू जी आइए और 3 से 4 मिनट में अपनी बात रखिए। अंजू जी कविता सुनाएंगी हमें। अगर इजाजत है तो मैं कुछ बात मलेशिया के बारे में रख के फिर कविता अगर जी बिल्कुल स्वागत है, संक्षेप में बात रख के और फिर आप जी। तो सभी का अभिनंदन करती हूँ और सलामत दाता। मलेशिया से हूँ इसलिए, और पधारो सा। मैं राजस्थान में जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 20 वर्षों से अपने देश के बाहर गर्व से एक जिम्मेदार प्रवासी भारतीय के रूप में मैं वैश्विक समाज के हिस्से की अपनी भूमिका निभा रही हूँ। आज जब विश्व पटल पर हम प्रवासी भारतीय न केवल संख्या में बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी वृहद एवं विस्तृत रूप में अपने आप को सम्मिलित पाते हैं, तो वैश्विक शांति, वैश्विक पर्यावरण, वैश्विक राजनीति और मानव सभ्यता के संपूर्ण विकास के लिए भी हम प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे गर्व है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र एवं सर्वाधिक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विनिमय का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी अद्वितीय मातृभूमि के लिए अनमोल वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य मुझे ही नहीं बल्कि विश्व में रहने वाले सभी प्रवासी भारतीयों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे दिलों में गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी अनमोल अंजू जी संक्षेप में ही। जी। तो मैं मलेशिया के बारे में आती हूँ कि एक प्रवासी के तौर पर अपने आवास के दौरान मैंने यही अनुभव किया है कि हम प्रवासियों के लिए अपनी मातृभूमि से और संस्कृति से जुड़े रहना व अपनी आने वाली पीढ़ी में इसे संरक्षित करना भी उतना ही जरूरी है, और उतना संरक्षित करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कानूनी नियमों, संस्कृति और संस्कारों के प्रति भी पूर्ण सद्भावना रखना। तो यहाँ पे एक मलेशिया जो है वो यहाँ पे सब सर्वाधिक यूएस के पश्चात सर्वाधिक भारतीय यहाँ पे प्रवासी। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं और एक बहुत ही छोटा परंतु एक सुंदर सा मलेशिया एक देश है। और तो मैं जब ये बोलती हूँ कि मानव जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वो मानव कल्याण के संस्कार जो है हमारे भारतीय सभ्यता के, वो ये भी सिखाते हैं कि जहाँ रहें वहाँ के समाज के लिए भी प्रतिबद्ध रहें। तो एक यहाँ पे मारवाड़ी युवा मंच है जो कि युवाओं में सोशल वर्क के लिए भी कार्य करता है। उसी के साथ में एक केएल बिजनेस अड्डा है और जिन्होंने आत्मनिर्भर भारती करके एक अवार्ड की शुरुआत की है, जो प्रवासी उद्यमी महिलाएं हैं उनको एक ये पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें जो यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं सरस्वती जी, उन्होंने भी अंजू जी आप चूंकि बहुत देशों के लोग है ना बीच में जा भी रहे हैं, काफी देर से रुके हुए बात करते आपने कविता सुना दें। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। श्याम जी नमस्कार। रखिएगा अंजू जी। जी तो मैं वसुधैव कुटुंबकम का ही एक रेफरेंस देते हुए मैं देश के बारे में बात करती हूँ, जिसमें तो पेश करती हूँ, मेरा भारत देश महान, तू ओमकार का नाद है, तू ओमकार का नाद है वेद उपनिषद श्रुतियों का राग,
तू ओमकार का नाद है वेद उपनिषद श्रुतियों का राग। तुझ में आकर शून्य को भी मिल जाते हैं ब्रह्मांड का आयाम। तुझ में आकर शून्य को भी मिल जाता है ब्रह्मांड का आयाम। तू साकार है निराकार भी है तू। तू साकार है निराकार भी है तू। अहम ब्रह्मास्मि अंतस है तेरा। अहम ब्रह्मास्मि अंतस है तेरा। सब तुझी में है लीन। सब है ब्रह्मा तेरे लिए। सब है ब्रह्मा तेरे लिए। ए वसुधैव कुटुंबकम के शंखनाद। ए वसुधैव कुटुंबकम के शंखनाद। तुझ में निहित सृष्टि का ज्ञान मेरे भारत देश महान। तू ही समय है। तू ही समय है या है समय का सहचर तू। तू ही समय है या है समय का सहचर तू। सिंधु से परिमार्जित मानवता का इतिहास है तू। नूतन और पुरातन मिश्रित सभ्यता का परिष्कार है तू। भरतवंशियों के वंशज मेरा तुझको कोटिश प्रणाम मेरे भारत देश महान। तू गांधी की जननी। तू गांधी की जननी। तू ही तथागत का है बोध। तू गांधी की जननी। तू ही तथागत का है बोध। तेरे आगे शीश झुकाएं न जाने कितने सिकंदर अबोध। तू न हिंदू न मुसलमान। तू न हिंदू न मुसलमान न ईसा का बंदा। तू भारत है। तू भारत है। तू हर एक में तू ही तू बसता। तू ही तो दुनिया में जमहूरियत की मिसाल। तू ही तो दुनिया में जमहूरियत की मिसाल। और इसी के साथ अंतिम पंक्तियां कहती हूँ। तू कुदरत का कोई करिश्मा है। तू कुदरत का कोई करिश्मा है या है कायनात का प्यार। या है कायनात का प्यार। तुझे दिवाकर सबसे पहले पहना जाते धवल उर्मियों का वो हार। तुझे दिवाकर सबसे पहले पहना जाते धवल उर्मियों का वो हार। और विराट हिमालय हाथों होता तेरा गंगा स्नान। हिंद महासागर रत्नाकर करता तेरे चरणों का पान। हे जननी जन्मभूमिश मेरा तुझको कोटिश प्रणाम। हे जननी जन्मभूमि मेरा तुझको कोटिश प्रणाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। माफ करती हूँ समय सीमा की समय 24 घंटे कम है हमारे लिए। जी। आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाऊंगी मलेशिया से शैलजा मेनन जी को। वो एक योग शिक्षिका हैं, लेखिका और वक्ता हैं। मलेशिया के सेलांगोर में मैट एंड बियॉन्ड योग स्टूडियो के संस्थापक भी हैं। शैलजा जी स्वागत है आपका। प्लीज कीप इट शॉर्ट। आई थिंक शैलजा डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? So I welcome Shailja. Yes. I get the message also, keep it short. Thank you. Okay, namaste everyone, and thank you all of you for this wonderful opportunity to share all our experiences as Indians living abroad with all of you and how we in our own small ways contribute to the communities that we live in. Yeah, so big thank you to Antarashtriya Sahyog Parishad. And I've been living in Malaysia for the last 25 years, and I've been doing yoga as well for the last 25 years. I have my own yoga studio, and through the studio, I really seek to spread the awareness of yoga, both to adults as well as children. So while adults form the majority of my students, I also have a great group of children, and I take great pride in being able to share the beauty of and richness of our yogic literature and Hindu culture to the children through these classes. And I come from a school called Manasa Yoga, and they have also played a very great part in spreading yoga throughout Malaysia by training hundreds of teachers. And most of them are Chinese. And as a result of that, there's a very good racial integration that goes on through the practice of yoga, whose primary principle is also Vasudeva Kutumbakam. Right, so when we go through yoga, the origins of yoga, though it originated in the caves of the Himalayas, right? Today, especially with the huge global event that International Yoga Day has come, we can all see the popularity of yoga, right? It has spread from, I would say, the streets of New York to the studios of Dubai. Importantly, we have to ask, why is it is so popular, right? So we all know it's popular, but really its popularity is because of its embrace. Yeah, it's embrace of people beyond caste, beyond race, beyond religion, and completely in that spirit of Vasudeva Kutumbakam.
And when we look at Vasudeva Kutumbakam in its meaning, right? So Vasu is that which resides, and Deva, the root word is Divu, which is light, right? So when we look at that, we understand that this is the light. What is common between us? What integrates us? What connects us? It is this spark of light that resides within each one of us. And through our yoga practice, when we connect to that light, we realize that that same light resides not just in us, but in the person who's next to us and to the person who lives in New York as well, right? So we understand that that light is the common factor that binds all of us into a kutumbakam, into a family. Now, when we look at yoga, its root also comes from the word yuj, which is to yoke or to unite. And if you look at that, what is it that we're trying to unite? We're trying to unite with this great light that is there within us. And that is the whole practice of yoga. And through all of the practices that we do, of tamas or ignorance that covers the light so that the light within each of us can shine brightly. So when you look at the Yoga Sutras also, Maharishi Patanjali, that's what he talks about. He says, Tata Shyate Prakasha Avarnam. Through the practice of pranayama, we are able to thin that veil of ignorance that covers the light so that our light shines brightly, and we understand that that same light is part of that universal light. And that is the whole reason that yoga is so popular, and yoga connects and unites all of us, because we understand that we are not separated and we are not like these little islands that exist on our own, but we are all part of a great continuum of light. So this is how yoga contributes to the spirit of Vasudeva Kutumbakam. And it goes through, it looks through the separation, right? We all separate ourselves through the boundaries of geography, through the boundaries of race, through religion, through caste. And that is the tamas or the ignorance that veils us. But through the yoga practice, we're able to break through that, and we're able to connect to the light. We're able to shine that light, and we're able to see that light in everyone else. And we understand that we are this great big family of light. Right. So with that, I want to conclude my talk, and thank you all of you for giving me this patient hearing, and namaste. Thank you. Thank you so much, Shalja. That's really sweet. Now I'd like to call NRK Rakshita. Rakshita, आप हैं? Yeah, hello. Can you hear me? मलेशिया से जी रक्षिता रक्षिता की रुचि मूवी डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और जैसे में काफी समय बढ़ी है, और संगीत कला के क्षेत्र में इनकी रुचि बहुत अधिक है। कई सारे कार्य उसी से संबंधित करती हैं। So रक्षिता, please keep it short. Thank you. Yeah. I'm trying to keep it to 4 minutes minimum. I'm not taking much of your time. But Vanakkam, Namaste, Namaskar to all the respected prominent panelists here of Vasudeva Kutumbam. And I'm truly blessed to be a part here. I would start in Tamil, but I would continue in English just to benefit others. திரைக்கடல் ஓடியும் திரைவியம் தேடு என்பது ஔவையின் அமுத வாக்கு. அதாவது இவ்வாழ்வில் செழிக்க அலைக்கடல் தாண்டியும் மற்ற தேசங்களுக்கு சென்று பொருள் ஈட்டி வருவாயக. திரைக்கடல் தாண்டிய தேடல் துவன்றுவதற்கு போதும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாமே இன்றி அதுவே தொடர்ந்து அயல் நாட்டில் இருப்பதற்கு போதும் என்று இருப்பது கடினம். கலை, இயல், இசை, மொழி, நாடகம் இவையாவும் தான் அயல் நாட்டு இருப்பதற்கு காரணமாக திகழும் என்பது என் கருத்து. The premise of the above Tamil saying is that you may venture to different countries in search of a livelihood, but I strongly feel the search for livelihood may bring you to new places, but that won't be a reason to keep you away from home country for a longer time. So pondering about what has kept us away for a longer time, it must be the feeling of at home, and also the other main aspects of life such as arts, culture, literature, music, language, food, etc. So being an Indian living in Malaysia for a substantial amount of time, I find Malaysia as a home away from home. Coming from a land of diversity, I find Malaysia celebrating unity in diversity in their own way. The most astonishing thing about this country, which I like the most, is that while the country provides you an opportunity to embrace the new culture, it also allows you to retain and follow your own culture and values. Hence, it's very easy transitioning to Malaysia. The Indian High Commission here actively participates and promotes many events in KL, encouraging all Indian groups.
And coming to myself, I was a banker and working in IT, passionate of arts and culture. I left that high-paying jobs to embrace my various interests, which includes film direction, learning flute, piano, and other art forms. And I've tried my hands on MC for a few high-profile events. And finally, now I'm able to start my own entrepreneurial journey in the field of photography and videography as a digital content creator. And I'm fortunate to be able to cover talented artists in various forms here in Malaysia. And being the director of photography for several cultural events from Indian communities has helped me connect to the roots of our Indian cultures. I was able to pursue all of these only because of the cultural ambience which has allowed me to. There are multiple Indian community associations which are aiding budding entrepreneurs like me, which I'm very, very thankful to. So there are many supporting groups here. It can be for social support or community support, language support, or business cultural supports. So likewise, Ms. Anjuji, who has spoken before, Business Adda has also helped us connect to several such people here. And if you come to Tamil, here there is Tamil paper, Tamil school, and Tamil radio station also. So when you, so this kind of community works has helped our next generation kids learn and adapt to this region and languages of our Indian culture here. So if you see, there are Indian schools which do encourage learning the Indian languages. But if you see other international, our kids going to other international schools, they don't have that aspect of learning Indian culture, for which we have private teachers. I have my friends and doctors and teachers who have started their own schools, medical practices, who are running their own institution, encouraging traditional art forms such as Bharatanatyam, Odissi, Kathak, or Carnatic music, Hindustani music, and several such things. So I would like to keep it short here. So as a Tamil-born, Karnataka-raised Indian living in Malaysia for over a decade, I'm able to say that I can celebrate India's rich, diverse culture while living here in Malaysia. It may sound a little ironic, but the truth, because of the diverse Indian group friends we have here, we are able to connect to them and have a taste of all the Indian cultures. For example, I am able to witness the Dashara festivals, Onam festivities, Kavri processions. Rakshita ji, please keep it short. Last please wind up. Yes. I'm not even talking about Hariraya and Chinese New Year celebrations. So I would like to conclude here that Malaysia is a place where we celebrate the rich, diverse culture of Malaysia and also that of India. I would like to thank ARSP for this lovely opportunity to participate and share my insights on Vasudeva Kutumba. Thank you so much, all. Thank you so much, Rakshita ji. Now I would like to call Mr. Subramani Sonia ji from Malaysia. Subramani ji, yes, I can see. Namaskar, welcome. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Good evening to all the panelists. In fact, I'm very thankful for this opportunity. Basically, I would like to explain some background of the Malaysian history, the Indian history in Malaya. Actually, the old name of Malaysia is Malaya. So we have 4 waves of immigration of the Indian community to Malaya. First one was they were traders from the South Indian cities. They came to Malaya and they were traders, sailors. And second, in the 11th century, the Chola kings of South India, larger maritime power of the time, embarked on a policy of imperial expansion. So they invaded this what we call the state called Malaya, and they established the colonial capital at Kedah. They call it Kedah. It's a small state of the Malaya, and now in Malaysia. So they established a commercial and political center there. And basically, Tamil influence lasted not more than a century in this country. And then we can see in the Tanjavur inscription a lot of historical proofs that the Chola king has been they have control over the Srivijaya and also the Malaysian peninsula. The second wave of the Indian arrival in Malaya was in 1786, that is 18th century, whereby
the Penang Island was established by Sir Francis Light, the British, I think is a commander of the British Army. So Penang Island was a convict station for the prisoners. And later, even the freedom fighters from the South India, the Marudu Pandian brothers, the general of the Pandian kings, the son were captured and sent to these prisoners, sent as prisoners to this island. And in 1860, there were about 4,063 prisoners in Penang Island. Then later, in 1873, the prisoners were sent back to India. So this is all during the British rule. So reason for the emigration of the Indian laborers was under indentured, the third wave. The third wave came because in 1887, this region was very famous, it was under British, and it was famous for sugarcane and coffee plantations in Malaya. There were about from about 1900 AD, rubber replaced the plants for sugar and coffee. So because it's due to the demand for the automotive industry, the number of rubber plantation increased. So there were three kinds of immigrants, laborers in Malaya. One was indentured labor or contract laborers who came from South India, mostly South India. Then second was the Kangani system. The Kangani system means the Kangani means supervisor. So they were recruited, the supervisors went back to India and recruited their relatives as laborers to work in the plantations. And then the third one was independent laborers. These are the three main type of laborers who, the workers or the Indian, who migrated from South India, mostly from South India, and some from North India as business people who came to Malaya. So actually, I'm the second generation. My father was from India, and I'm born and brought up here. And actually, I'm educated here, and as well as my family. We are all Malaysians. Basically, we have about 528 Tamil schools in Malaysia, so which use the Tamil as a medium of instruction. So it is a primary school. That means any Tamil children, they can get, government-aided school. It is a government-aided school whereby they can be educated through Tamil medium from standard 1 to standard 6. So after standard 6, they are going for the secondary level, whereby they can take up the language as a separate subject in the secondary school and until the university. So we have 3 universities which are providing Tamil language as a degree program in Malaysia. So these are the things. As I was I was a lecturer, senior lecturer in the linguistics department of University of Malaya. Can you please make the closing comments? Can you please make the? Can you please make the closing comments? Yeah, sure. So basically, we are very happy to be in Malaysia because it's a multi-racial country. Even though it's a Muslim country, we are given a chance to practice our own religion. So basically, you can see that we are actively propagating our Hindu Dharma to all our children in Tamil schools through our syllabus and as well as the textbooks, Hindu textbooks to them. So basically, this is a very accommodative country. We are very happy with it. And thank you for the opportunity. Thank you very much. Thank you, Dr. Sandhya Singh. Thank you, Subramani ji. Now I would like to call Mr. Ravindra ji Arjunan from Malaysia. Sandhya ji, मुझे लगता है कि since we have 10 speakers from Malaysia, so let us know other speakers from Malaysia. We can listen with Shikha ji. So now we should come to the last zone of zone 1. And I would request you to hand over to Shikha ji Okay, for sure. the last one. Thank you. ठीक है, मैं आप शिखा रस्तोगी जी को थाईलैंड से बुलाना चाहूंगी। शिखा जी वहाँ के ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी अध्यक्ष हैं और साहित्य से जुड़े कई कार्य कर रही हैं, कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। तो शिखा जी, आपका स्वागत है। आइए वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित इस चर्चा को आगे ले जाइए, क्योंकि हमारी पीढ़ी सबसे अधिक सौभाग्यशाली है जो वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रही है और भारतीय समुदाय को भी पूरी दुनिया में फैला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। संध्या जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा
कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, हांगकांग, इन सब देशों से मिलाकर ये बहुत ही समृद्ध जो है वो सत्र रहा। और आपने जितनी कठिन परिस्थितियों में इसका संचालन किया उसके लिए आप भी बधाई की पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका धन्यवाद करते हैं। और मैं आदरणीय श्याम जी से कहूंगा कि इस सत्र के लिए प्लीज आप कंक्लूडिंग कमेंट दें और उसके बाद हम अगले जोन में चलेंगे। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद श्याम जी। जी किशन जी, बहुत अच्छा सत्र रहा। और ये जो कॉम्बिनेशन रहा हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, तो तीनों का हमने आनंद उठाया है। कुछ समझ पाए, मराठी में था, हाँ मराठी भी था जी। पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आनंद जरूर उठाया। धन्यवाद। शिखा जी, अब आप ले ले। शिखा जी। हाँ जी, हाँ जी। शिखा जी, सबसे please पहले take over. मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद द्वारा आयोजित वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित 24 घंटे दिन रात चल रही पूरे विश्व में प्रवासी भारतीयों के बीच में हमारा वसुधैव कुटुंबकम किस प्रकार है, इस गोष्ठी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और अनिल जी, श्याम जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस गोष्ठी से जोड़ा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वैसे भी हमारी जो ये गोष्ठी है, हमारा जो ये कार्यक्रम है वो बहुत देरी से चल रहा है, तो मैं सर्वप्रथम चीन से उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, जो हमारे इस जोन का संचालन करेंगे, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार रखें और विचार के बाद वे हमारे आने वाले वक्ताओं को आमंत्रित करें। तो मंच आपका विवेक जी। बहुत बहुत आभार शिखा जी, आदरणीय अनिल सर। विवेक जी, बस ये अनुरोध रहेगा क्योंकि हम पहले से ही लगभग 1-1.5 घंटा पीछे चल रहे हैं। ये सुंदरकांड की तरह 24 घंटे का पार्ट है और ये 24 घंटे की जगह नारायण जी कह रहे हैं 36 घंटे का होने वाला है। तो इसलिए सभी से अनुरोध है, विवेक जी आप ये देखिएगा कि कोई भी 4 से 5 मिनट से ज्यादा कोई वक्ता ना बोले। और म्यांमार के जो वक्ता हैं जो काफी देर से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस जोन की शुरुआत म्यांमार के वक्ता से ही करें। जी आगे चलें। अगर मलेशिया के कोई वक्ता छूट गए हैं तो अंत में उनको भी आप ले लें। सेकंड सत्र में भी ले सकते हैं। जी बहुत बहुत आभार सर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से मुझे जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आप सब जैसे विद्वानों के साथ मुझे भी अपने विचार साझा करने का अवसर मिल रहा है और इस मंच से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ है मुझे। और भारतीय जो संस्कृति है वो तो सनातन काल से वसुधैव कुटुंबकम का प्रचार प्रसार कर रही है। और हमारी संस्कृति के इस वसुधैव कुटुंबकम में केवल पूरे विश्व के मानव ही समाहित नहीं है, बल्कि समस्त विश्व के पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी समाहित इसमें है। और यही हमारी संस्कृति की विशेषता भी है। और वर्तमान समय में यह हमारी इस वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र वाक्य है, इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब हमारा जो विश्व है, हमारा जो मानव समाज है, वह कई खंडों में विभक्त है, देश में, महाद्वीप में, राज्य में, जाति में, पंथ में, धर्म में। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में जो हमारा विश्व है, जो हमारा मानव समाज है, वह निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम को उसकी आवश्यकता है, जिसमें चलकर एक सहिष्णु समाज की स्थापना हो सके। तो इस कार्यक्रम के शुरुआत में अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए सर, अब ना शुरू हो गया अपना। मैं जापान से आदरणीय डॉक्टर रमा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रमा शर्मा जी। नमस्कार। एक सेकेंड, म्यांमार से शायद रविंद्र जैन है जी। म्यांमार से कोई है अभी पूछे जुड़े हुए? अभी नहीं हुए? म्यांमार एक बार चेक कर लें। म्यांमार से रविंद्र जी हैं, वो काफी समय से परेशान हैं। मतलब उनको पहले ले लीजिए विवेक जी। जी जी ठीक है जी। आदरणीय रविंद्र जैन जी म्यांमार से यदि जुड़े हों तो कृपया आए और हमें अपने वक्तव्य से लाभान्वित कराएं। आदरणीय रविंद्र जैन जी म्यांमार से।
कुछ परेशान हो गए, कुछ ज्यादा परेशान हो गए तो वो चले गए शायद लगता है। नरेंद्र जैन वो जुड़े हैं जुड़े हैं। पैनलिस्ट नाम से जुड़े हैं। अच्छा, तो एक बार फोन कर लें किन से किन के माध्यम से जुड़े हैं, वो फोन कर लें। इतने आप है ना विवेक जी रमा जी को बता दीजिए। हाँ, रमा जी विवेक जी रमा जी को तब सुनते तक सुनते हैं फिर। जी जी जी, क्षमा करें रमा जी, कृपया आए। आ गए मैं। बहुत बहुत आभार विवेक जी, मैं वाकई बहुत इंतजार कर रही थी। अनिल जी आपका, श्याम जी, शिखा जी, सबको बहुत बहुत आभार इतने अच्छे पटल पे जोड़ने का। मिजोकामी जी को मैं इस टाइम को बाबा करूंगी, शाम हो गई बहुत, और शायद वो मेरे से रूबरू पहली बार हो रहे हैं। मैं सबको बता दूं कि मैं 35 साल से जापान में रह रही हूँ। यहाँ के ISSN नंबर लेके जापान का मेरी पहली पत्रिका हिंदी की निकल रही है, हिंदी की गूंज, क्योंकि ये एक भारत का वसुधैव कुटुंबकम के चल रहा है, तो हमारा परिवार है जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। मैं सबको बस एक संदेश देते हुए ट्वीट करूंगी कि सभी बहुत आदरणीय हैं। मैं बचपन में एक कविता लिखी थी, बस वो सुनाना चाहूंगी। जिसने जाना मूल्य समय का आगे वो बढ़ पाया है, अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। धीरे धीरे चलकर कछुआ जीत दौड़ में जाता है, एक एक तिनके से पंछी अपना नीड़ बनाता है, लेकिन अपने रहने को घर बंदर बना ना पाया है। अलसा कर जो बैठ गया वो जीवन भर पछताया है। जिसने जाना मूल्य समय का आगे वो बढ़ पाया है। हमारा ये कार्यक्रम वाकई ही बहुत लेट हो रहा है। समय का सभी को मूल्य जानते हुए थोड़ा थोड़ा बोल के आगे चलना चाहिए। मैं भी इतना ही कहती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय रमा शर्मा जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं नरेंद्र हूँ पर जमात जी, म्यांमार से नरेंद्र जी, आदरणीय नरेंद्र जुड़े हुए हैं क्या? जी जुड़ा हूँ। जी सर आपका हार्दिक स्वागत है। विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे हम लोग। जी नमस्ते जी, थैंक यू। हम लोग आने मैं शुरू कर सकता हूँ जी? जी पोर्टल आपका है। जी उपस्थित महानुभाव सज्जनों एवं सारे वसुदेव कुटुंब के हर एक नागरिक को मैं नरेंद्र शाह, वाइस प्रेसिडेंट ऑल म्यांमार हिंदू सेंट्रल काउंसिल और को ट्रस्टी श्री काली टेम्पल ट्रस्ट की ओर से विनम्र बड़े हृदय से प्रणाम, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल कहते हैं। सर्वप्रथम मैं ऑल म्यांमार हिंदू सेंट्रल बोर्ड के कार्य के विषय में कहना चाहूंगा। ऑल म्यांमार हिंदू सेंट्रल काउंसिल सारे अखिल म्यांमार प्रदेश के सभी हिंदू धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों और साथ ही धार्मिक भूमियों की रक्षा करना और समस्याओं का हल समाधान करते हैं और सभी मंदिरों के ट्रस्टीगण के चुनाव कराते हैं और हमारे मंदिरों के पवित्र भूमियों को कोई खराब उपयोग ना करे, इसकी देखभाल करती है। इस कार्य के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ऑफ म्यांमार ने हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है और श्री काली माता मंदिर जो यांगों में है वह सारे म्यांमार में विख्यात है। यहाँ जहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी सितंबर 2017 में पधारे थे और साथ ही दिसंबर 2018 में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी भी पधारे थे। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ हिंदुओं की 8 कम्युनिटी इस मंदिर की देखभाल करती है। मैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं आज इस महत्वपूर्ण सभा में खड़ा होकर आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। आज दुनिया एकता के पथ पर चलने की आवश्यकता को महसूस कर पा रही है। हम सभी इस विश्वास के साथ एक साथ यहाँ पर आए हैं कि हम सभी एक ही पृथ्वी एक पर निवास करते हैं, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमारा भविष्य भी एक ही है। यह पृथ्वी हमारा आधार है, हमारा घर है और हमें इसकी सुरक्षा और संरक्षण करने की जिम्मेदारी है। हमें इसके संतुलन को बरकरार रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए और पर्यावरण के प्रति सतर्कता बढ़ानी चाहिए। हमारे कर्मचारियों को नई और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम इस धरती के संतुलन को खराब न करें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ जीवन मिले। हमें एक कॉन्शियस प्लेनेट, जागरूक धरती के बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व चीज है जिसे मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी हमारे जीवन का आधार है
इसी मिट्टी से हम सबका जन्म हुआ है और हम एक दिन इसी मिट्टी में ही वापस चले जाएंगे। हमारे जीवन में हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वह सब मिट्टी की ही देन है, लेकिन गलत तरीके से की खेती, जंगलों की कटाई और दूसरी कई वजहों से ऊपरी मिट्टी बहुत तेजी से खराब और नष्ट हो रही है। विश्व स्तर पर 52% खेती की भूमि पहले ही खराब हो चुकी है। धरती संकट में है। यदि मिट्टी इसी तेजी से खराब होती रही तो इस धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि हमारे पास 60 साल जितने की खेती करने के लिए मिट्टी रह गई है। UNFAO और ISRO, इसरो ने भी इस बात को पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ मिट्टी बचाओ के वेबसाइट पर उपलब्ध अपलोड किया है। धरती संकट में है। यदि मिट्टी इसी तेजी से खराब होती रही तो इस धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी धरती को तैयार करना महत्वपूर्ण है जो पौष्टिक भोजन पैदा करे और सभी जीवों को जीवित रखने में सक्षम हो। मिट्टी एकमात्र ऐसी जादुई चीज है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती है। समाधान के रूप में मिट्टी में कम से कम 3 से 6% जैविक सामग्री यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट वापस लाना है, नहीं तो वह खेत की भूमि रेगिस्तान में बदल जाएगी। और वह कैसे आएगा? इसके लिए खेत की भूमि को वनस्पति पेड़ पौधों की छाया से ढककर और पौधों के कूड़े और पशुओं के वेस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर की ओर हमें बढ़ना है और इससे किसानों की आमदनी भी 300 से 800% तक बढ़ जाएगी। लगभग हर बड़ा पर्यावरण का संकट नरेंद्र जी एक ही मिनट जी। लगभग हर बड़ा पर्यावरण का संकट कुछ हद तक मिट्टी की क्वालिटी के खराब होने का ही एक परिणाम या लक्षण है। इसी तरह पर्यावरण से संबंधित लगभग हर समस्या को मिट्टी के स्वास्थ्य बनाकर सुलझाया जा सकता है। अभी मैं आते हैं योग के ऊपर, 1 मिनट में बोलूंगा। योग शब्द का अर्थ है एकत्व या फिर एक हो जाना। एक हो जाने का अर्थ है जब आप इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर में महसूस कर लेते हो तो तब आप योग की अवस्था में आ जाते हो। एक हो जाने का अर्थ है कि यह आपको परम वास्तविकता में ले आता है। तो एक तरह से वासुदेव कुटुंबकम को अपने भीतर महसूस कर लेने जैसा हो जाता है। योग शब्द का वस्तु तो अर्थ है कि वह चीज जो आपको हकीकत पर ले आती है। हमारा भविष्य भी एक ही है। हम सभी को मिलकर एक समृद्ध और सुखी भविष्य का निर्माण करना है। हमें अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी को अवगत रहना चाहिए और उसमें सक्रिय योगदान देना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध भविष्य की तैयारी करनी होगी। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार नरेंद्र जी, आपने बहुत समय का बहुत ध्यान रखा और कम शब्दों में आपने बहुत ही सारगर तरीके से अपने विचार रखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब पुनः जापान चलते हैं। जापान से हम लोग कश्यप पांड्या जी से निवेदन करेंगे। कश्यप पांड्या जी पिछले 9 वर्षों से जापान में हैं और वहां पर भारतीय संस्कृति का, भारतीय त्योहारों के माध्यम से अलग जगाए हुए हैं। तो हम कश्यप पांड्या जी को सादर आमंत्रित करते हैं। कश्यप पांड्या जी, कृपया 3 से 5 मिनट के अंदर अपने वक्तव्य को। नमस्कार सभी को। मुझे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में आज अवसर देने के लिए खूब धन्यवाद आपका। मैंने अपना वीडियो भेज दिया। समय न लेते हुए मैं विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो वीडियो चला दे और एग्जैक्ट 5 मिनट का है, वो 5 मिनट में खत्म हो जाए। विवेक जी ना वीडियो चला दीजिए। जी 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 जी, यूट्यूब का है ना? हाँ, नहीं यूट्यूब को नहीं, डाउनलोड किया है मैंने उसको। हाँ जी, ओके।
बढ़ा दें विवेक जी, वॉल्यूम बढ़ाएं, जी वॉल्यूम बढ़ा के देख लें। कि समाज बहुत कम है। तो यहीं पर भेज दें आप विवेक जी। थोड़ा अभी भगा तक दीजिए, जी थोड़ा भगा दीजिए, एक आध मिनट। जी जी जी। देखिए ये चलेगा नहीं, अभी आप स्वयं हैं, आप 2-1 मिनट में अपनी बात रख दीजिए, इसको रहने दीजिए। जी इसको समझ गया। जी जी विवेक जी, क्योंकि ये वीडियो चलेगा नहीं, उस पर प्रयास ना करें, पहले से टेस्ट करना चाहिए था। आप कश्यप जी, आप अपनी बात 2 मिनट पे रख दें। मैं बात रखना चाहूंगा इतिहास वगैरह में ना जाते हुए, क्योंकि निजू कामिसान भी थे और दीपा शर्मा जी ने भी अपने वक्तव्य में काफी बता दिया है। मैं सिर्फ 2-4 चीजें बताना चाहूंगा कि भारतीय सभी त्योहारों को हम यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली में हम दीपोत्सव मनाते हैं, होली में रंग दे बसंती मनाते हैं, नवरात्रि में हालो करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, और खास करके पिछले साल गत वर्ष दशहरा 2022 पर हमने एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम बनाया था। सब इंडियन डायस्पोरा ने इंडियन एम्बेसी की मदद से जापानी जो लोग हैं जिन्होंने भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति के लिए कुछ न कुछ किया है, जैसे कि योगा टीचर्स है, जैसे कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि मिजुका मिसान थे, जिन्होंने अपने कार्य से भारत को और भारत की संस्कृति को कुछ न कुछ योगदान दिया है। ऐसे जापानीज लोगों को हमने दशहरा पर इंडियन एम्बेसी के हॉल में बुलाया था और उन्हें फेलिसिटेट किया था, एंड हमने उनको अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया था। एक और चीज का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, रक्षाबंधन के अवसर पर हम सब भारतीय अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो स्पेशल परमिशन से हम लोग फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है और पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनके पास जाते हैं और उनको हम रक्षाबंधन के दिन पर, बच्चे हमारे जो है छोटे छोटे, वो रक्षाबंधन के निमित्त पर राखियां उनसे बांधते हैं और अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं, और जिससे हम वसुधैव कुटुंबकम की असलियत में चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आप यहाँ ही हैं? विवेक जी, म्यांमार से शांतिलाल जी मंच पर हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी शांतिलाल जी दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी फोटोज हैं सबके नीचे शांतिलाल जी लिखा हुआ है। तो कौन है शांतिलाल जी म्यांमार से? शांतिलाल शर्मा जी, आप मंच पर हैं तो आइए। जवाहर जी भी शांतिलाल जी दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ शिखा जी, पता नहीं क्यों मेरे आपने लिखा था मेरे नाम के आगे भी शांतिलाल है, मैं तो जवाहर ही हूँ। सभी शांतिलाल जी हैं यहाँ पर। चलिए है ना, हम चलते हैं कंबोडिया। कंबोडिया से हम बुलाते हैं दिनेश जी। दिनेश चौबे जी, आप उपस्थित हैं? दिनेश चौबे जी, लगता है वो भी चले गए हैं। तो मैं अब ना विवेक जी आपको आमंत्रित करती हूँ। आप बताइए कि चाइना के अंदर किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना चरितार्थ होती है। एक कुटुंब एक परिवार। विवेक जी 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 खोलिए। शायद कुछ बगिंग हो गई जिसके कारण से नाम ये बदल गए हैं। वो यहाँ पर हमारे स्तर पर उसको चेक कर रहे हैं। तब तक जो शेष वक्ता इस जोन के रह गए हैं, विवेक जी रह गए, और कौन है? जी अब दिनेश जी हैं, दिनेश जी को बुलाता हूँ।
दिनेश दिनेश चौधरी भी हैं, लेकिन धानुका दिनेश जी जी, तो दिखाई नहीं दे रहे ना। हाँ सुशील धानुका जी भी है ना चले गए। अब तो विवेक जी आप बोलिए चाइना से। विवेक जी, आप समापन कीजिए। हाँ जी जी मैं अपने एक कविता का पाठ करना चाहूंगा। मेरी एक कविता है विजयनी भारतीयता। भूधरा पर आर्य सभ्यता सबसे न्यारी, सर्वाधिक प्राचीन सनातन संस्कृति हमारी। हम ही से सुशिक्षित हुआ था जग सारा, हम ही थे वसुंधरा के नायक उन्नायक। संपूर्ण विश्व है परिवार हमारा, भारतीयता है पहचान हमारी। हम है खंडित भारत के वासी, अखंड भारत है आस हमारी। प्रकृति का है यह शाश्वत नियम, सभी दिवस होते नहीं एक समान। जो आरूढ़ होता है शिखर पर, वही अवतरित होता है भूतल पर। उन्नति अवनति का चक्रवत नियम, राष्ट्रीयता का ह्रासमान इतिहास। विखंडित होती रही भारतीयता, भारतीय अस्मिता, पुनर्स्थापित न हो सकी राष्ट्रीय एकता। आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय विमर्श का यह महान पर्व। करे विवेचन विगत में हमने क्या खोया क्या पाया, कैसे रखेंगे सुरक्षित हम अपनी आजादी। हम भारतवासियों की यह प्रबल भावना, प्रखर राष्ट्रीयता की हो पुनर्स्थापना। जन जन का है यही संदेश, विजयनी भारतीयता का उद्घोष। बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत आभार मुझे यह अवसर मिला इस सत्र को के संचालन के लिए। तो आदरणीय अनिल सर का, श्याम पांडे जी का, शिखा स्तुगी जी का, सभी का बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा सा अनिल जी, थाईलैंड में वसुधैव कुटुंब की भावना कैसी है, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय न लेके 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगी, क्योंकि वक्ता दोनों थाईलैंड के चले गए हैं। तो थाईलैंड में वसुधैव कुटुंब की भावना, जैसे कि अभी पूर्व वक्ता बोल के गए हैं, जगह जगह प्रवासी भारतीय रहते हैं। और जैसा कि हमारी आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है कि प्रवासी भारतीयों का कभी सूरज अस्त नहीं होता, बिल्कुल सही है, सूर्य अस्त नहीं होता। प्रवासी भारतीय पूरे दुनिया के अंदर फैले हैं और वो अपनी भारतीय संस्कृति को अपने साथ लेकर गए हैं। थाईलैंड में भी एक छोटा सा भारत बसता है, यहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं जिसके अंदर विश्व हिंदू परिषद है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्य करती है। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी का है, पशु व्यवस्था का है, अनाथ आश्रम का है, ब्लड डोनेशन का है, और भी जानिए हमारी ट्रेडिशन को, हमारे संस्कारों को, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। यहाँ पर मंदिर हैं, जो मंदिर के अंदर गीता और रामायण का पाठ होता है। गीता का शनिवार को 12वां अध्याय के साथ संपुट लगता है। अलग अलग मंदिरों के अंदर रामायण का वाचन होता है। रामायण थाईलैंड के घर घर के अंदर पढ़ी जाती है। ये बात जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि थाईलैंड के अंदर जो थाई स्कूल्स हैं उसके अंदर भी रामायण पढ़ाई जाती है, जबकि हमारे भारत के अंदर धीरे धीरे ये लुप्त होती जा रही है। केवल जो सीबीएसई के स्कूल है उसके अंदर रामायण है, लेकिन थाईलैंड के अंदर थाई स्कूलों में आज भी रामायण पढ़ी जाती है। रामायण के साथ साथ यहाँ पर हमारे देवी देवताओं का वास है। देवी देवता उसी तरह से थाईलैंड के अंदर पूजे जाते हैं जैसे हम लोग पूजा करते हैं। हमारी तरह ही यहाँ के संस्कार हैं, जन्म संस्कार, मरण संस्कार, नामकरण संस्कार ऐसे ही होते हैं। थाईलैंड के अंदर सबसे बड़ी जो विशेष परंपरा है जो भारत से मिलती हुई है, नामकरण संस्कार की। यहाँ एक व्यक्ति को नाम दिया जाता है, कास्ट दी जाती है, तो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जाती। जैसे कि आज मेरे मंच पर सभी लोगों के साथ शर्मा लगा हुआ है, तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे शर्मा मिल जाएंगे, लेकिन थाईलैंड के अंदर अगर एक को एक कास्ट दी गई है तो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही जैसे कि पहले हुआ करता था, हमारा नामकरण संस्कार होता था और हमें एक कास्ट जाति व्यवस्था के अंदर बांटा जाता था। ऐसे यहाँ पर भी जो पेड़ पौधे हैं उनको पूजा जाता है, पीपल की पूजा की जाती है और बरगद की पूजा की जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे भारतीय संस्कृति से जोड़ती हैं। भारतीय दूतावास तो अपने कार्यक्रम वो सभी करता है, योग का काम करता है, अलग अलग कार्यक्रम जो दूतावास के द्वारा, भारतीय कल्चर सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, जो पूरे विश्व के अंदर एक जैसे होते हैं। इसके अलावा भी जो थाई लोग हैं
वो हमारे संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारे पहनावे से, हमारे खान पान से, हमारे धर्म से, हमारे देवी देवताओं से। तो आज बहुत ज्यादा समय हो गया कहने के लिए, मेरे पास बहुत सारे बिंदु थे, लेकिन ज्यादा न कहते हुए, जब भी आप थाईलैंड आएंगे तो थाईलैंड के अंदर आप जैसे ही हवाई अड्डे पे उतरते हैं, आपको सबसे पहले अपने समुद्र मंथन के दृश्य का सीन आपको दिखाई देगा, जो आपको ले जाएगा भारत की ओर। जैसे जैसे आप हवाई अड्डे से निकलकर शहर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको गलियों के नाम, स्वाय के नाम भी भारतीय परंपरा से मिलते जुलते दिखाई देंगे, जिसके अंदर अशोक स्ट्रीट, शांति स्ट्रीट, सीता स्ट्रीट दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना कहूंगी कि भारत थाईलैंड के अंदर भी बसता है। भारत की संस्कृति, भारत के आचार विचार, परंपरा, भाषा, बहुत सारे भाषा के शब्द, हिंदी भाषा के शब्द थाईलैंड के अंदर बोले जाते हैं। तो वसुधैव भावना, एक परिवार पूरी दुनिया में है, वो है भारत का परिवार। ऐसे ही थाई लोग भी भारतीय परंपरा से मिलते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगी कि वसुधैव कुटुंब की भावना थाईलैंड में चरितार्थ होती है। धन्यवाद अनिल जी। आज हम सब जी धन्यवाद शिखा जी। नरेंद्र जैन जी हैं मंच से। रविंद्र जैन जी। ये शांति नमस्कार है सर, म्यांमार से शांतिलाल जी जुड़ गए हैं। नमस्कार आप सबको। म्यांमार से मेरा नाम। हाँ बिल्कुल, आप ज्यादा 3 मिनट तो जी स्वागत। हाँ नमस्कार, रविंद्र जैन। वैसे मैं इंदौर से हूँ, बट म्यांमार में पिछले 15 साल से हूँ, और हमारे पहले वक्ता ने ऑलरेडी बता दिया था म्यांमार के बारे में। और म्यांमार में एक ही चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने हिंदू और सनातन त्योहार और बाकी त्योहार मनाए जाते हैं, उतने शायद इंडिया में भी नहीं मनाए जाते हैं। यार म्यांमार में जो हमारा समाज है, जैसे अभी हमारे सुबह मिनिस्टर जी ने बोला था कि यहाँ थर्ड सबसे ज्यादा डायस्पोरा रहता है। तो आप सब लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग म्यांमार आइए, और ये बहुत अच्छी कंट्री है, और आप के लिए हम सब आपका वेलकम करते हैं। और म्यांमार बहुत कुछ वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करती है। बहुत कुछ नहीं होते हुए भी म्यांमार के लोग के चेहरे पे आपको एक प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि अभी उनको जो आज का जो कैपिटलिज्म है, जिसमें हर कोई भाग रहा है और उसको ये पता नहीं उसको जाना कहाँ है, और चाहिए, वो यहाँ संतोषी लोग हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से हमारे लिए संतोष भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो म्यांमार में अभी हम लोगों ने गोपियो शुरू किया था लास्ट ईयर नवंबर में। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, और अभी हम और आने वाले समय में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, और अपने जो ICCR के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, वो भी म्यांमार पधार रहे हैं। और अभी म्यांमार गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, एक इंडिया सेंटर बनाया है, जो कि वहाँ रेगुलर योगा क्लास चलती है और इंडियन डांसेस सिखाए जाते हैं। तो और हमारा एम्बेसी भी हम लोगों के लिए बहुत सहयोग करता है। और हम लोगों ने एज ए गोपियो, जो क्योंकि म्यांमार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतवासी हैं, बट उनके पास जो OCI कार्ड नहीं है, हम लोग उनका भी मदद करते हैं। और आप लोगों ने मुझे बोलने का समय दिया, ये देखते हुए मैं अपना वक्तव्य जस्ट 3 मिनट में खत्म करता हूं, और आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं आप लोग एक बार म्यांमार जरूर पधारिए। और म्यांमार में 100 साल से ज्यादा पुराना जैन मंदिर भी है, जो कि दुनिया में भारत के बाहर सबसे पुराना जैन मंदिर है, और यहाँ वेजिटेरियन खाना भी मिल सकता है। तो आप लोग पधारिए, और आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या इस जोन से तो कोई शिखा जी कोई रह तो नहीं गए? सब हो गए सर। शांतिलाल जी नहीं दिखाई, धन्यवाद। हो गया सर। जो सब शांति करके हम इस जोन 1 में जितने भी 5 सत्र हुए हैं उसका समापन कर रहे हैं। और संक्षेप में एक 2-2 मिनट में हम ये वास्तव में
बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे पास समय कम रहा। हम लोग अगर हम चाहते तो इस सत्र को और जून 1 को 2 से 3 घंटा और बढ़ा सकते थे। तो मैं आप सभी जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स रहे हैं, यहाँ पर शिखा जी दिख रही हैं, विवेक जी हैं, उनसे पहले संध्या जी थी और सुनीता जी थी और संजीव भाकरे जी थे, अनिल जी थे, गणेश चंद जी थे, सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ के जो साथी हैं निरंजन जी, रमनदीप जी, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया सब लोगों को समन्वय करने में। मैं एक छोटी सी कविता की एक पंक्तियों के साथ, कई कविताएं सुनने को मिली, बड़ी अच्छी थी वसुधैव कुटुंबकम को लेकर, तो मैं अपनी बात रखता हूँ। प्रवासियों पर लिखी मेरी कविता है, वो नींद कहाँ है पुस्तक में से, कि घर भारत ना जा सकते हो, घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। घर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत बस एक देश नहीं है, भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो हंसता है। इतने राम और इतने कृष्ण अब की पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि उसकी धारा कैसे ना गंगा कहलाए। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम्हें कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। अब दुनिया एक ग्राम है, यही अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान जगह बाहों में भर, जिस भारत को ढूंढ रहे हो, 7 समंदर पार कहाँ है। तुम हो जहाँ भारत भी वहाँ है, तुम हो जहाँ भारत भी वहाँ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और मैं नारायण जी से के लिए टिप्पणी के लिए जी, ये भारत जहाँ वहाँ है, आज इन्होंने इसको महाभारत बना दिया है। और महाभारत में एक प्रसंग होता है कि सूर्यास्त होने को रोक दिया गया था, 6 महीने को रोक दिया है। और यहाँ का कार्यक्रम अच्छा हुआ कि हमारे फिजी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे मॉरिशस के विदेश मंत्री, हमारे प्रवासी भारतीय विभाग के सचिव, अतिरिक्त सचिव, तो अतिरिक्त अनेकों गण्यमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि भविष्य में यह कार्यक्रम अच्छा चलेगा और 1 जून के लिए ही 24 घंटे रखे जाएंगे। धन्यवाद। और एक बात और कर दूं कि जिन लोगों ने तो यहाँ अपना भाषण संक्षिप्त दिया है, उनसे हम अनुरोध करेंगे पत्र लिखकर भी इंचार्ज से कि वो अपने पूरे वक्तव्य को हमारे पास भेजें, उसे पुस्तिकाकार रूप में यादस्वी प्रकाशित करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद संध्या सिंह जी का नाम मुझे ध्यान नहीं छूट गया हो तो क्षमा। संध्या जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस जून 1 के समापन के लिए मैं आदरणीय श्याम जी से निवेदन कर। कुछ ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा ही समय आगे बढ़ा है। ये जो घड़ी की सुई है वो बड़ी क्रूर है, कारण अपने यहाँ इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम कहते हैं। समय तो वो पहले हमारे ऋषि मुनि कौन से समय से चलते थे, वो जब शुरू करते थे तो सबको पता था कि ये प्रारंभ हो गया, उसका अंत नहीं है। और आज यही आभास हुआ, अनुभव हुआ कि इसको हम जैसा चलाएंगे चला सकते हैं। 24 घंटे तो ऐसे ही हमने कह दिया। हम सूर्योदय और सूर्यास्त की बात की तो बहुत अच्छे। आप सबका स्पिरिट जो है, द स्पिरिट यू rather the inflow that you have seen across the 7.5 hours is unique, cannot be compared, incomparable है। So हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे भवन की तरफ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे भवन के बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, से जुड़ने को तैयार है, कुछ देर तक से निकल गए। उनसे सबसे पहले पुनः विनंती है कि फिर से जुड़िए और कार्यक्रम आगे चलाइए। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। परांडे साहब आपको बहुत बधाई, अद्भुत कार्यक्रम रहा। अनिल जी, नारायण कुमार जी और आपको मैं तो हम तो अभिभूत हैं जी इस कार्यक्रम से। जी मैं अमित जी को बुला रहा हूँ और नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मित्रों,
जब हमारे गिरमिटिया मजदूर खेत में जाते थे तो समय से जाते थे, और वापस होने के समय घड़ी की सुई को बढ़ा दी जाती थी, और जब 8 बजता था तो कहते थे 6 बज रहा है। इसी संदर्भ में तो आज का समय मान। जी, हम स्मिता जी को आमंत्रित कर रहे हैं। जोन 2 की जो कार्यक्रम है, जो सत्र है, उसका संयोजन करेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित है स्मिता जी, अमित जी। आपका परिचय कराते हैं। सभी को नमस्कार। जोन 2 का प्रारंभ है, तो यहाँ एशिया का पश्चिमी हिस्सा, जिसमें अरेबिया रीजन भी है, ईस्ट अफ्रीका भी है, सेंट्रल एशिया भी है। तो इस कार्यक्रम से जो जो जुड़े हुए हैं वो सब एक बार अपनी आइडेंटिटी ठीक कर ले उस पर, और पैनलिस्ट जहां जहां लिखा गया है वो खुद का नाम डाल ले। पैनलिस्ट बदलकर, और कभी कभी ये शांतिलाल शर्मा जी आए हुए हैं, वो एक जरा तो बग है, तो इसलिए खुद का नाम फिर से रिनेम कर ले। सभी से प्रार्थना है कि जो जुड़े हुए हैं वो अपना नाम ठीक कर ले, तो आपकी ये ठीक बनेगी। इसका कंडक्शन है स्मिता जी से करा रहे हैं। स्मिता जी बंगलुरु से पीएचडी की हुई है डायस्पोरा विषय पर। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में थी, और अभी हाँ वहाँ नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में स्कॉलर है। तो उनसे मैं विनती करता हूँ कि इस कार्यक्रम की प्रारंभ करें, इस सेशन का प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। मैं आज सबका इस जोन 2 में स्वागत करती हूँ, और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और बहुत अच्छी बातें जी बहुत अच्छी तरीके से हमने सभी हमारे भारतीय जो बाहर में बसे हुए हैं उनके अनुभव सुने, और सब बहुत इंजॉय भी किया। तो मैं बस शुरुआत करना चाहूंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम शुरू से ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम, बाकी चीजें हमारे जीवन में आती हैं और जाती हैं, लेकिन ना कोई अपनी माता को भूल पाता है, ना ही कोई मातृभूमि को भूल पाता है, और किसी न किसी तरीके से एक जुड़ाव बना ही रहता है। चाहे हम जीवन के किसी भी स्टेज पे हों, चाहे हम अपने जीवन के किसी भी आयाम पे हों, लेकिन हम हमेशा अपनी माँ और अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते हैं। तो भारतीय डायस्पोरा की बात हो रही है, इंडियन डायस्पोरा की, जो कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा है, और इसने ये गौरव हासिल किया है कि अब वर्तमान समय में भारतीय डायस्पोरा सबसे बड़ा डायस्पोरा बन गया है। और न कि ये सिर्फ सबसे बड़ा डायस्पोरा है, बल्कि सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड भी है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट शायद ही कोई सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट कंट्री रही होगी जहाँ की भारतीय मौजूद नहीं है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा
एसेट है, अचीवमेंट है, गर्व की बात है। और शायद यही एक बहुत विशेषता है कि हम आज ये कार्यक्रम के बारे में सोच पा रहे हैं कि 24 घंटे का एक कार्यक्रम हो जहाँ पे हम हर क्षेत्र, हर जगह के भारतीय डायस्पोरा से जुड़ सकें। और यही एक चीज है। और जहां भी भारतीय डायस्पोरा भी जहां पर भी रहे हैं, वो जहां पर भी निवास कर रहे हैं, उन्होंने अपने साथ एक भारतीयता को जीवित रखा है। उन्होंने अपने साथ एक छोटा भारत बना कर रखा है। हर जगह हम सुनते हैं बड़े बड़े देशों में लिटिल इंडिया, स्मॉल इंडिया, तो ये एक भारतीयता है जो वो अपने साथ लेके गए हैं, यहाँ के कल्चर, यहाँ की परंपराओं को, और अपने साथ जीवित रखा है। और हमसे, भारत से हमेशा से वो सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं। कुछ समय में भी, उन काल में भी जब हम पॉलिसी लेवल पे उनसे नहीं जुड़ पाए थे, सरकारी तौर पे उनसे नहीं जुड़ पाए थे, तब भी भारतीय डायस्पोरा हमसे हमेशा जुड़ा रहा। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम आज हम ये कंडक्ट करा पा रहे हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले हम एक गीत से करना चाहेंगे, और मैं अपनी टेक्निकल टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो गीत पहले सुनाया जाए। और थैंक यू, प्लीज।
कैसे जाते हैं, उसे वहाँ विजयादशमी पे भी और अन्य पूजाओं में भी उसका वहाँ पे उपयोग किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है और ये जो एक अवधारणा है कि हम सभी एक हैं, हमारा पूरी सृष्टि को माने तो हम एक परिवार के हैं। तो प्रवासी भारतीयों ने जहां जाकर जो भी किया, पर हमारे यहाँ तो ये भी कह सकते हैं कि भारत से जो लोग यहाँ नेपाल आके बसते हैं उन्हें प्रवासी भी नहीं माना जाता। ये आप इससे एक बात समझें कि वो एक ही धरती के माने जाते हैं, उनमें इतनी साम्यता है। हमारे नेपाल में एक देवघाट है, हरिहर क्षेत्र जिनको कहा जाता है, वहां पे जब वाल्मीकि की चर्चा होती है, रामायण को रचने की बात होती है, तो हमारे आदि कवि वाल्मीकि को वहीं से माना जाता है। दूसरी बात मैं कहूँ कि अभी अयोध्या में राम मंदिर की जो अवधारणा रखी गई, राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण हो रहा है, तो कुछ दिन पहले ये भी चर्चा में आया कि नेपाल से शालिग्राम शिला गई और राम का वहां पे जो राम की मूर्ति बनेगी वो उससे बनेगी। बाद में जो भी उनमें कठिनाई आए, लेकिन उसको लोगों ने जिस तरह देखा, हमने आपने सबने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे जिस तरह से वहां की जनता, यहाँ की जनता उसको शिरोधार्य कर रही थी, ये एक संस्कृति होने का सुख प्रदान करता है। हमारे त्योहार हैं, हमारी परंपराएं हैं, और अभी तो जो उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा होती है वो हमारे नेपाल में भी शुरू हो चुका है। तो ये संस्कृति का जो विस्तार है, ये दिन प्रतिदिन, भले ही कभी कुछ खटपट हो जाए, लेकिन इससे आस्था और विश्वास से हम अलग नहीं हो सकते। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो ये पिंडदान की परंपरा है, वह भी यहाँ के लोग गया जाते हैं, वहां मृतात्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। तो इस मुद्दे पे मैं चूंकि नेपाल से हूँ और नेपाल को मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ नेपाल का, तो मैं ये कहूँ कि ये दो देश अपनी परंपराओं में, अपनी संस्कृति में, अपने इतिहास में, चाहे वो रामायण काल हो या महाभारत काल हो, महाभारत की चर्चा होती है तो विराट की चर्चा होती है, वो भी यहीं पे है। तो इस तरह से देखें कि हमारी जड़ें बिल्कुल गहरी हैं, बहुत जुड़ी हुई हैं, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। और ये एक पहचान पूरे विश्व को जाता रहा हमेशा कि नेपाल और भारत की एक खुली सीमा हमारे धरोहर को साझा करती है, हमारी संस्कृति का निर्वाह करती है, हम उस परंपराओं को एक साथ जीते हैं। बहुत हद तक मैं ये कहूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का एक माना हुआ पर्व है छठ, जो आज नेपाल में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कल तक ये तराई में था, लेकिन अभी पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो रहा है। तो एक वैश्विक परिदृश्य में मैं ये मानूं कि हमारी संस्कृति का जो विस्तार है, सनातन धर्म की जो अवधारणा है, उसे हम दोनों देश मिलके जीते हैं। और यह एक विश्व में संदेश भी देता है कि जो सही होता है उसका विस्तार होता है। और विश्व के परिदृश्य में आज जिस तरह सनातन धर्म की व्याख्या की जा रही है, वो भी हमें सुख देता है। मैं आप लोगों ने मुझे समय दिया इसके लिए, और मैं देख रही हूँ कि 1.5-2 घंटे हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूंगी और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी मुझे ये अवसर देने के लिए। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। मैं जिन लोगों के नाम के आगे पैनलिस्ट लिखा है, मैं उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो अपना नाम रीनेम कर लें, इससे हमारी टीम को आइडेंटिफाई करने में सहूलियत होगी, इजी होगा। तो आप लोग प्लीज अपना नाम लिख लें वहां पर। और अब मैं दूसरे नंबर पे बुलाना चाहूंगी श्री सत्येंद्र दाहिया जी को। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद स्मिता। से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दें जी ब्रीफ में। जरूर और जरूर। धन्यवाद स्मिता जी। मेरा नाम सत्येंद्र दहिया है और मैं भारतीय दूतावास काठमांडू में पिछले लगभग 2 वर्षों से कल्चरल अटैचे के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं हिंदी मीडिया और संस्कृति का काम देख रहा हूँ। और श्वेता जी मुझसे पहले बोल चुकी हैं, उन्होंने लगभग सभी सहयोग करती हैं हर प्रकार के कार्यों में। मैं सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में श्वेता जी बोल चुकी हैं, तो उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तय है कि नेपाल और भारत के आम लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा जोड़ती है, जिसे हम पीपल टू पीपल कनेक्ट कहते हैं, वो है हमारी अटूट धार्मिक आस्था और हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत। और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और मुझे लगता है कि
तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने तरह से, अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी प्रक्रियाओं के तहत काम करते हैं, लेकिन जो चीज जो हमेशा किसी भी विवाद से दूर रहती है और जो हमेशा लोगों के दिलों को छूती है, वो होता है साहित्य, संस्कृति, भाषा। और इसी आधार पर, चूंकि दोनों देशों की इतनी पुरानी समानताएं हैं, हमारी इतनी जड़ें हमारी इतनी गहरी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, ओपन बॉर्डर्स हैं, आना जाना लोगों का कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरीके से अनेक ऐसे लोग हैं भारत के जो लगभग 15 से 20 साल पहले भारत से नेपाल आए। नेपाल के लगभग सभी स्थानों पर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में काठमांडू में रहते हैं। उनमें हमारे राजस्थान के मारवाड़ी समुदाय के हमारे बहुत सारे भाई काठमांडू में रहते हैं, जो अपने व्यावसायिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं। और पिछले 20 साल से वो सब लोग उन्होंने अपना यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पे शुरू किया हुआ है और नेपाल सरकार की अर्थव्यवस्था में उसको मजबूती देने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2 महत्वपूर्ण संगठन जो भारतीयों के नेपाल में हैं इस समय, एक है इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल और एक है इंडियन यूथ एसोसिएशन ऑफ नेपाल। और ये दोनों ही संगठन इसमें बड़ी संख्या में जितने भी भारतीय नेपाल में रह रहे हैं उनका एक महत्वपूर्ण संगठन है। और मुझे याद आता है कि जब कोविड काल का बड़ा कठिन समय था, उस दौरान इन दोनों संगठनों ने नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को वापस उनके घर तक पहुंचाने में बहुत ही उम्दा काम किया था। और इसी तरीके से जब भी हमारा कोई भी त्योहार आता है, कोई भी हमारी महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, क्योंकि दोनों देशों के सभी त्योहार समान हैं, तो दोनों ही देशों के लोग जब इकट्ठे मिलजुल कर जब लगभग सभी त्योहार और उत्सव और बहुत ही धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो वो चीज देखते ही बनती है। और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं किसी और 2 देशों के बीच में पाया जाता हो। इसके अलावा बस एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो नेपाल की जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको न सिर्फ बचाने के लिए बल्कि उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, विशेषकर 2015 में जब नेपाल में एक विनाशकारी भूकंप आया था, तो हम सब जानते हैं कि नेपाल में बड़ी संख्या में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं और पूरी दुनिया के लोग वहां पे आते हैं उसे देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेपाल के लोगों के बीच में अपनी इस सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोकर रखने की जो भावना है वो बहुत सराहनीय है। तो इसी दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है कि इंटैक नाम का एक संगठन है जो भारत सरकार का प्रतिष्ठित संगठन है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। उसने ये बीड़ा उठाया है कि 2015 के भूकंप के बाद जिन जिन महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचा था उसको रिनोवेट किया जाए, उसका रिनोवेशन किया जाए, रेस्टोरेशन किया जाए। और भारत की एक स्पेशल टीम वहां पर पिछले 2-3 सालों से काम कर रही है और जिसने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं अब तक, जितने भी उन्होंने काम किए हैं, और उनके काम चल ही रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है कि इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन समय की सीमा का ख्याल रखते हुए और मैं धन्यवाद देता हूँ विशेषकर आयोजकों को इतना एक वृहत आयोजन करना और इस सफलता के साथ करना, इस सार्थकता के साथ करना। मैं अपनी तरफ से नेपाल के सभी भारतीयों की तरफ से, नेपाल के हमारे भाई और बहनों की तरफ से इस कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता की कामना करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के फॉरेन अफेयर्स कमेटी की। सर, आपके पास 4 मिनट्स है अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। मेरा नाम मार्कंडे राय है। मैं अभी कोलंबस ओहायो यूएसए से बोल रहा हूं। मैं सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम पर ये अखंड पाठ रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद को साधुवाद देता हूं और इस प्रयास की भूरी भूरी सराहना करता हूं। हमको लगता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम जो आज स्लोगन था आज के पहले,
ये चरितार्थ हो रहा है कि कैसे हम, एक और श्लोक आता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भारत जो G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसमें C20 में वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दिया गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, की पृथ्वी एक है, माता हमारी भूमि हमारी माता है और हम उसके सबके पुत्र संतान हैं। इसका शायद नेपाल ही और एशिया में नहीं बल्कि विश्व में ये चर्चा का विषय हो गया है। आज इसको हम कैसे कार्यान्वित करें, इस अखंड पाठ के बाद उस पर सोचना है कि एक्शन क्या हो, कैसे पूरे विश्व को एक परिवार बना सकता है। क्योंकि कहा गया कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लोगों को उदार चरित कैसे बनाया जाए। इसी के संदर्भ में हमने अप्रैल में एक वसुधैव कुटुंबकम विजन फॉर एडवांसिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड पीस, लोगों के कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मैं 2-3 साल से चर्चा कर रहा हूँ। श्री रविशंकर से भी मेरी चर्चा हुई थी और हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही मेरिडियन में 11, 12, 13 अप्रैल को कराया और मैं उस कॉन्फ्रेंस को एक आंदोलन के रूप में लिया। वसुधैव कुटुंबकम को एक मूवमेंट बनाना है, एक आंदोलन बनाना है कि विश्व में। अभी मैं फ्रेडरिक्सबर्ग में था और वहां पर जब गया तो सीधे मैं एक योगा के क्लास में गया, मैं देखा कि लोग योगा कर रहे हैं, मुझे बड़ा गर्वान्वित हुआ। वो महिला जो करा रही थी वो भारत से प्रशिक्षित थी और गुरु को याद कर रही थी भारत के। तो हम उसी तरह से मंगोलिया 1 महीना पहले थे, मंगोलिया में भी मैंने देखा कि भारत की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। भारत कैसे विश्व एक परिवार को कर रहा है। भारत में जब हम एक सपना देखते हैं, अगर भारत वो सपना पूरे विश्व में अगर फैलाता है तो वो सपना वास्तविकता में बदल जाएगा। आज विश्व को स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजरते हुए देख करके लगता है कि हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना होगा। स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं गिव लव एंड सर्विस, देना सीखें, प्यार करना सीखें और सेवा करना सीखें। मैं इसी संदर्भ में अभी वाशिंगटन डीसी से लौटा हूं और वहां पर मैंने देखा कि ग्लोबल पीस फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल, मैं धन्यवाद दूंगा श्याम परांडे जी का, सेवा इंटरनेशनल जो प्रेम कुमार जी जो काम कर रहे हैं इस देश में भारतीय मूल के लोगों के साथ, भारतीय संस्कृति को बढ़ाना, भारतीय परंपराओं को सबसे अवगत कराना, योगा को बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना, नशा मुक्ति कराना। तो हमको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम पूरे विश्व में करना है। जैसे कि भारत का एक यूनिक कल्चर है, हम जब पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं तो वैसे में हमको लगता है कि इंडिया का जो पुराना इतिहास है कि इंडिया इज क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन रेस, उसको हम लोग पूरे मानव समाज को आगे बढ़ाना है और पूरा बचाना है। ग्रेट सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपनी अच्छाइयों से और लोगों को भी अभिभूत करना। इसके लिए हमको लगता है कि कुछ लेक्चर कार्यक्रम करने चाहिए पूरे विश्व में और रिसर्च और एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस कराया अप्रैल में, उससे दिल्ली डिक्लेरेशन एक्शन प्लान आया। उस एक्शन प्लान में अंतर्राष्ट्रीय परिषद सहयोगी था और उस सहयोग को हम लोग पूरे एशिया पैसिफिक से लेकर के पूरे विश्व में कैसे फैला सकते हैं कि हम लोग कह सकें कि हम लोग एक हैं, मानवता एक ट्राइब है। और जो कहते हैं कि एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, गॉड इज वन, वी आर वन फैमिली ऑफ गॉड। जो कि गुरु नानक ने भी कहा कि एक नूर ते सब जग बढ़िया, मैंने एक ही ज्योति है और आप दीपो भव की बात जो बुद्धा ने कहा, हम लोग खुद तो प्रकाशित हों भारत में, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकें, ऐसा मेरा सुझाव है। आज वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और आईसीटी का जो बोलबाला है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड है, उसमें हम लोग को एक न्यू टाइप का दुनिया बनाना है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात हो और पूरा विश्व समझे कि हम एक परिवार के एक दूसरे से के लिए जीना सीखें। यही हमारी संकल्पना होगी, यही मेरी प्रार्थना होगी। और इस अखंड पाठ से एक्शन प्लान कुछ बने जो कि आगे लागू किया सके। ये C20 केवल कंसल्टेशन के बाद, भारत के अध्यक्षता के बाद खत्म नहीं हो जाना चाहिए, चाहे वो ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो, ये मूवमेंट चलना चाहिए। इसलिए एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए जो कि इन चीजों को, जो कि आज
सुझाव आ रहे हैं हर जगह से, चाहे वो नेपाल से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, चाइना से, विभिन्न देशों से, उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सके, उसके लिए एक बॉडी बननी चाहिए, एक फोरम बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक अधिकारी को, श्री दीपक अधिकारी जी, आपका स्वागत है। दीपक अधिकारी जी, अगर आप पैनल में हैं तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद दीपक जी नहीं है, पैनल में नहीं जुड़ पाए हैं, तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिस चंदा चौधरी जी को, क्योंकि काफी सारे नाम अभी भी एज अ पैनलिस्ट दिखा रहे हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल हो रही है कि कौन प्रेजेंट है पैनल में और कौन नहीं है। चंदा जी, आप हैं क्या पैनल में? हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएंगे, जो कि रोमानिया से हैं, डॉक्टर अलेक्जेंड्रू जैम्फिर। मैं आशा करती हूँ कि ये सही नाम मैंने लिया है। मिस्टर डॉक्टर अलेक्जेंड्रू, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम। Hello everybody. I hope you can hear me. I am Alexandru Zamfir. I am originally from Romania. I am an assistant at the University of Bucharest, where I teach Romani language. First of all, I am very grateful for your invitation, and I thank you so much for the invitation. In this context, I will tell a few things about the Roma community, especially in Romania, but also worldwide. So now it's a fact that the Roma community comes from India, and now this is an indisputable fact, mainly to the scientific proof that we have from the few centuries ago. And here the linguistic aspect play a determinant role. And as I heard, even though I don't understand Hindi entirely, but I understood some words, because Roma language relates very much with Hindi and with Sanskrit, because Roma language it has both regarding the lexic, but mostly the structure is very similar to the languages in India. So linguistics play an essential role in proving that Roma people comes from India. And also some declarations were very important for us, for the Roma community. And I will mention here, of course, the declaration of the great Indira Gandhi, who called the Roma people the lost sons of India. So that was a very powerful declaration for us, for the Roma community, in order to recognize that Roma people come from India. And of course, the recent events and institution that spoke about this connection about Roma and India. And I will mention here, of course, ASP, which we are very grateful, and mostly to the Center of Roma Studies and Culture Relations, which had several events in this order. For example, that great conference in 2018, in which I also took part, which commemorate 1 millennium since Roma people left India. So these kind of events and declarations are very important for us, for Roma community, regarding the connection between Roma and India. And I think this must be done also further in the future, because there is a need for this connection, or may I say it, reconnection of Roma with India. And I mean this both scientifically, regarding the research of Romani studies, for instance, the linguistic, the culture, the history. But I think it's also important, very important,
also personally to connect or to reconnect with India, even for a spiritual point of view, especially based on several common values that we have. Roma community and India, the people from India. And I speak to the Roma from around the world, not only from Roma, from Romania. And it was not easy always, because I will mention very shortly some short facts from the history from the Roma from Romania, for instance. And in Romania, for instance, Roma people unfortunately were slaves for more than 500 years. So it was not easy to develop from the ethnical and individual point of view. After that, I will mention also the Holocaust, in which also, unfortunately, Roma people were involved and many suffering were there. And again, they didn't have the chance to develop. So it was not easy always. But now, in the last decades, we can see that the Roma population is developing. And there are many successes that Roma community has. And also we can see a series of affirmative measures that several governments took for Roma people. And the Romanian government also have these several positive measures for Roma people. For instance, in education, because I also work as an educational expert in a foundation in Romania, and here we have some positive aspects. For example, now we can learn Romanes, the Romani language, in school and at the university, and it's a very important thing for us to learn and to speak our mother language in school, in institution, and in different places. In the end, I will add just this. So in this context of the world is one family, I think the Roma people fits very well. And also I will refer to a quote for this event. So India's diaspora acts as a cultural ambassadors, spreading Indian culture and ethos worldwide. So I think that Roma people did this after we left India, and we spread worldwide, because Roma people are everywhere, from Europe to America, Canada, and all over the world. So I think by living India 1,000 years ago, we spread these values, and I hope that this connection between Roma people and India will grow more and more. Thank you again for the invitation. I'm very grateful, and thank you again. Hello to everybody. Can you hear me, please? Hello? Yes, you are audible. I'm inviting Dr. Ilyana Kovacheva from Bulgaria. You have 5 minutes, Dr. Ilyana. Yeah. Yeah, thank you. I'm really very proud today to participate in such important meeting where Indian people from all over the world are thinking about Bharatan. I'm very proud that I make the reconnection after 40 years, disconnecting this relationship between Roma people from Europe and India with the conference in 2000, which I held from 8 April till 13 in Delhi. The previous speakers, he mentioned it about some moments of important about this diaspora, Roma and Indians.
But I could say additionally that long time the science was keeping silent according to the origin of Roma people. A very long time in the scientific literature was manifesting the idea that the Roma people come from Egypt. Finally, through the linguistic, they proved through the language that the Roma people Dr. Liliana. We will continue forward and let's see. Now I would like to invite Mr. Umesh Mishra, who is a spiritual and social worker. Mr. Umesh Mishra, if you are there in the panel, please unmute yourself. Mr. Mishra was there.